अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली आफ्ताब सईद और मैं यहाँ पर कराची में मौजूद हूँ. इस वक्त इनॉग्रल चल रहा है T4JF का और आज के दिन का पहला इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ हुज़ैम हैदर मोटा साहब से. और सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का. ये जो टेक और वकला का जो मिलाप हुआ है, आपके ख्याल में इसके क्या नताइज निकलेंगे, मुस्बत भी और बुरे भी? ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज हमारे वहाँ जो लीगल सिस्टम काफ़ी स्लो है. इसकी वजह से एक फेमस सेइंग है कि भाई जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. टेक की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और ये तो पूरी जिस तरह लीगल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो स्कॉलर्स कह रहे हैं कि 4 से 5 साल में पूरी बदल जाएगी. तो और पाकिस्तान अगर इस किस्म की कॉन्फ्रेंस करे तो दुनिया के ट्रेंड के साथ शायद कदम ब कदम चले, वरना बहुत पीछे रह जाए. फॉर एग्जांपल मैं कोर्ट रूम वकील नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट रूम साइड पे टाइम बचता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से. दूसरी चीज़ें ये हैं कि एक्सेस टू नॉलेज, केस लॉ अगर ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और यहाँ पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो एक इशू ये है कि इस किस्म चीज़ के डेवलप करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए. वो प्लेटफॉर्म डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा. उसकी अगर फंडिंग प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ नहीं हो सकती, अगर पब्लिक सेक्टर में छोड़ दें वो भी सही नहीं है. तो इसको डेवलप करने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होने की ज़रूरत है और इस किस्म की फोरम जो है ना उस किस्म की चीज़ को इंकरेज करेंगे. बिल्कुल ठीक है. अच्छा सर मुझे ये बताइए कि क्या वकला में कैपेसिटी है, वो इस वक्त तैयार हैं इस चेंज को अडेप्ट करने के लिए? ये मुश्किल सवाल है. ज़्यादातर वकला इस पे इतना इस वक्त फोकस शायद ना हो. काफ़ी लोग हैं लेकिन इसके अगर लीगल टेक एफिशिएंटली बढ़े पाकिस्तान में तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो सर्विसेज हैं ये टेक प्रोवाइड करे और वो लॉयर्स को रिप्लेस करे. तो एक एप्रीहेंशन ये भी है कि लॉयर्स की नीड शायद कम हो जाए. तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वकला इसको सपोर्ट करें. आई मीन पीपल विल हैव टू बी ब्रॉड माइंडेड टू सपोर्ट दिस. सो आई थिंक इसको अगर इंस्टीट्यूशनली बढ़ाना है तो एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट से देखना होगा जिसमें पब्लिक सेक्टर थोड़ा सपोर्ट करे. और ये सिर्फ वकला पे छोड़ देना कि वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इसको करे, ना उनके पास रिसोर्सेज है ना उनके पास टाइम है ये करने का, और उनका एक इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है. सर आखिरी सवाल, मुझे अंदाजा है कि अभी तो बहुत अर्ली है, सही मानों में शुरू भी नहीं हुआ इवेंट, लेकिन अभी तक आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त इवेंट है. जो आपका इनिशिएटिव है और इसकी खास बहुत सख्त ज़रूरत है अवेयरनेस की. यानी कि यहाँ काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं और हमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत है लीगल टेक को डेवलप करने के लिए, वरना पाकिस्तान को नुकसान भी बहुत हो सकता है. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप इसी स्पेस में रहिएगा, हम इसी तरह बड़े बड़े वकला से आपको मिलवाते रहेंगे आज के दिन में. थैंक यू. ठीक है, थैंक यू सो मच सर.
जी, तो इस वक्त मैं हूँ सीनियर वकील जाहिद इब्राहिम साहब के साथ। थैंक यू सो मच, आप आए। शुक्रिया। और पहला सवाल, आपको एम्बियंस कैसा लगा? वुकला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, आपको लगता है, या हम किसी और साइड पे निकल गए? देखें, एक्चुअली मैं जैसे दाखिल हुआ तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई वकीलों की कॉन्फ्रेंस है। इतनी वो पैनल्स और टेक्नोलॉजी, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल कॉन्फ्रेंस से हटके थी, तो बड़ी खुशी हुई आके। तो मुझे ये बताइए कि मैं लाहौर में भी अक्सर वकला से ये पूछा, और यहाँ पर भी आपसे खास तौर पे पूछना बनता है कि वकला को जब भी मौका मिलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश लिबास पाए गए हैं। मतलब वो काले कोट से फौरन एक ट्रांजिशन आती है और आप पहचान ही नहीं सकते कि ये वकील है। इसके पीछे क्या राज है? नहीं, इसके के पीछे एक राज है कि जिस तरह स्कूल में बच्चा जब यूनिफॉर्म पहन के जाता है तो वो पूरे साल यूनिफॉर्म पहना होता है उसने, उसको जब भी गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं देखना चाहता। उसी तरह वकीलों के साथ है, क्योंकि हमारा भी उसी तरह स्केड्यूल है। सुबह 8 बजे आपने कोर्ट जाना है, बीच में 10 बजे आपकी वो चाय की ब्रेक होगी, 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उसी तरह का माहौल है, तो इसलिए जब भी मौका मिलता है कि काला कोट घर पे छोड़ दें तो छोड़ने का उसका फायदा उठाते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो वकीलों का यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल भी यहाँ की गर्मी को देखकर नहीं ऐसे लगता डिजाइन हुआ। उसकी वजह ये है कि काला कोट, फिर अक्सर गाउन, फिर वो जाहिर है वो विग भी हो सकती है जो जाहिर है अमूमन लोग नहीं पहनते, लेकिन बहरहाल। जी, देखें, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। कराची में एक्चुअली गाउन की तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी और मुझसे अपने कई दोस्त ये बात पूछते हैं कि ये काला सूट पहन के कराची की गर्मी में आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। तो ये एक वो इश्यूज हैं जो ट्रेडिशनली चल रहे हैं, और इसमें भी इनोवेशन की ज़रूरत है ज़रूर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तो आई नो इट इज टू अर्ली टू मतलब अभी से एनीथिंग, क्योंकि अभी तो इवेंट सही मानों में स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन क्या बेहतरी है जो हम ला सकते हैं, ना सिर्फ इवेंट में बल्कि इसके अलावा भी, क्योंकि मतलब शायद सब वकला इस चेंज के लिए तैयार नहीं है कि किस तरह से टेक को अडेप्ट करना है, तो हम अपनी कैपेसिटी में कुछ कर सकते हैं उनके लिए? देखें, पहले तो जो चेंज उसमें आई थिंक पहले तो ये है कि अगर हम चीज़ों को वक्त पे शुरू कर दें तो एक पंक्चुअलिटी, जो कि किसी भी हमारे पब्लिक इवेंट में एक इशू होता है। अगर आपको 5 बजे का टाइम दिया गया है तो आप समझते हैं कि भाई दूसरे लोग 5:30 बजे तक आएंगे, तो वो आई थिंक हमने एक वो तब्दील करना है। और जहाँ तक चेंज, देखें, आपको वकीलों का इंतज़ार नहीं करना कि वकील जब तैयार हो जाएं तब हम उनके लिए चेंज लेके आएंगे। चेंज आपने, क्योंकि वकीलों को चेंज की शायद ज़रूरत ना हो, लेकिन जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, जो लिटिगेंट है, उसको चेंज की बहुत शदीद ज़रूरत है। उसको ना वकील चाहिए, उसको ना जज चाहिए, उसको अपने जो भी उसका झगड़ा है, छोटा बड़ा, उसको उसका फैसला चाहिए, और उसको ये बता दिया जाए कि ये अब ख़त्म हो गई कहानी। ये नहीं कि सालों साल आप लोगों को एक सिस्टम में घसीटें, ये बहुत बहुत नाइंसाफ़ी है। तो उस लिहाज से अगर हम टेक्नोलॉजी को, और जो आज की कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने मुनक्किद की है, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मुझे तो पहली मर्तबा उसका इल्म हो रहा है कि इनसे हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये गुड लक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शुक्रिया, थैंक यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत ज़्यादा।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इस वक्त उमर सुमरो साहब के साथ। सर, आप ये इवेंट होस्ट भी कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ भी गलत हो तो हमने आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है। well, hopefully smoothly चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपके ख्याल में क्या हमारे वकला तैयार हैं इस टेक इंटीग्रेशन के लिए, या उनकी तैयारी के लिए कुछ करना पड़ेगा? क्या सरकार करेगी, क्या प्राइवेट सेक्टर करेगा, क्या हमने कोई किरदार अदा करना है, कैसे होगा? देखिए, सवाल वजह है, हमें मेरा ख्याल है अपनी बार्स का वकार बढ़ाना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स इज, जब आप बार के नुमाइंदे बनते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितने वकील कितनी मुश्किलात में हैं। फर्स्टली टू स्टार्ट देयर प्रैक्टिस, सेकेंडली टू गेट क्लाइंट्स, और तीसरी बात टू गेट सस्टेनेबल वर्क। चौथा एक आई थिंक consequence of poor education in our law colleges, although much of that is being remedied, और वो ये है कि legal skills और formal education मैं समझता हूँ जो हमारे colleges में पढ़ाई जा रही है, it is lacking। खासतर ये जो लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्रीज बिक रही हैं at foreign currency rates, I think there is a huge gap between what should be taught and what is being taught। तो मैं समझता हूँ कि ये लीगल टेक जो है इन दोनों चीज़ों को एड्रेस कर सकती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक इंडेवर है, वकील ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म है, www.wakilonline.com। ये जो पहला मैंने आपको मरहला बताया या प्रॉब्लम्स बताए वकीलों के, कि भाई ग्रेजुएशन तो कर ली, अब काम कहाँ से आएगा? एक बार केस आ गया तो उसके बाद दूसरा तीसरा एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस ऑफ वर्क कहाँ से आएगी, एक स्ट्रीम ऑफ वर्क कहाँ से आएगी? वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, यू ओनली नीड अ लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। इट कंसिडर इट ए ऑफिस और ए मार्केट प्लेस, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। पूरे पाकिस्तान से लोग उसमें अपनी आवाम जो है क्वेरीज भेज रही है। आपको दफ्तर की जरूरत नहीं, बिजली के बिल, गैस के बिल, चाय वाला एटसेट्रा, नन ऑफ दैट। यू कैन सिट in the comfort of your home, you can sit in the library of a courtroom, of a court, and address those queries। अगर आपकी कोई क्वेरी है खुला के बारे में, या बच्चों की कस्टडी के बारे में, या किसी रिकवरी सूट के बारे में जहाँ आपकी किसी पैसे कोई आपके मार गया, तो आप उसमें एक क्वेरी भेजते हैं कि भाई मेरे कोई पैसे मार गया, मैंने कपड़े किसी को बेचे, मेरा माल ले गया और मुझे पैसे नहीं दे रहा, और मैं लाहौर से वो बंदा ईमेल भेजता है। आप कराची में उसकी क्वेरी एड्रेस करते हैं एज ए वकील, मैं भी एड्रेस करता हूँ, वो आपकी क्वेरी से ज्यादा मुतमईन होता है। एंड सो ही सेज, वेल यू नो, I'd like to engage you as a lawyer, what will your fee be? You say, भाई मेरी फीस तो 40,000 रुपए। He asks me the same question, मैं कहता हूँ भाई मेरी फी तो है 65,000। He goes with you। आपको पता है इस पायलट प्रोजेक्ट में विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एक लॉ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करता है, फिर प्रैक्टिस अपनी शुरू करता है, जिसकी नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रेजेक्टरी ये होती कि वो 7-8 साल नौकरी कर करके फिर सोचता कि मुझे कभी अपना काम मिलेगा, मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूंगा कि नहीं। ये नए ग्रेजुएट्स वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आए और एक साल में एक वकील ने 80 क्लाइंट्स बनाए। Now you multiply that by 30,000, 40,000, 60,000 rupees fees with zero overheads other than your phone bill or your data package.
ایک ہمیں وکیل ملا جس کے پاس 300 کلائنٹ تقریباً 4 سال کی پریکٹس میں, یعنی کہ 4 سال سے وہ پریکٹس کر رہا تھا, لیکن as soon as وکیل آن لائن went on, he was able to garner more work and sustain it. So this is digitization, it's transforming the platform. ہم نے جب کیا کیا تھا 8-9 سال نوکری کر کے دفتر لیا, یا تو کرائے پہ, یا والد صاحب نے بولا بھائی میں نے آپ کے لیے یہ دفتر لیا ہوا تھا, آپ اس میں جائیے کام کیجیے, یا کسی دوست کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرتے ہیں. So it's a very traditional role, it's slow and it's not always sustainable. But with this we are addressing that. دوسری میں آپ کو بات کرتا ہوں, یہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے جو کالجز ہیں یہ صحیح طرح ایجوکیشن نہیں دے رہے, خاص طور فورن ڈگریز والے. ایک ہم نے ایک پلیٹ فارم شروع کیا ہے, اٹس کالڈ پریکٹس, اینڈ اس میں انٹرویوز لیتے ہیں ہم وکیلوں سے, سینئر سم ناٹ سو سینئر, آن اے پرٹیکولر کیس. بھائی سوٹ جب فائل کرتے ہیں, دیوانی مقدمہ ہو, کیا کرنا چاہیے, آپ اس طرح بات کیجئے, ایڈریس کیجئے کیمرہ کو جس طرح آپ اپنے کسی ایسوسیٹ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, اور وہ 8 یا 10 منٹ انسٹرکشنز دیتا ہے. اب یہ جو گریجویٹ کر کے وکیل آ رہے ہیں, if they get onto this platform, they will click the link of the kind of case they want to draft, how they want to argue that case. اس کیس میں عموماً کیا پٹ فالز آئیں گے, کیا چیلنجز آئیں گے, سامنے سے کیا کاؤنٹر نیریٹو آئے گا, کس قسم کے کیسز سائٹ کرنے چاہیے. He just click onto that free of cost. ایک قسم کی وہ جو گیپ ہے نا بٹوین گریجویشن اینڈ ٹریننگ, وہ ہم برج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. سو دیز آر اسمال انڈیورز. آج ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو وینچر کیپٹلسٹ ہیں, جن کے پاس سرمایہ ہے, پیسہ ہے انویسٹرز کا, وہ پاکستان کی اتنی بڑی مارکیٹ پلیس میں انویسٹ کریں. اینڈ دیر از enough potential for them to get a return on their investment, but more importantly I think there is a lot of hope and promise for advocates of all ages to be able to use this digitization transformation to improve their practice skills and also to get more work inshallah taala. So sounds really promising. اور وہی والی چیز کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ شاید ایک انٹرنشپ ہے جو گھر بیٹھے ہو رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو wish you good luck. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. Assalamu alaikum. We are ready to start. السلام علیکم. ہم ہیں اس وقت انوگرل T4JF ایونٹ پر. میں ہوں اس وقت صلاح الدین احمد صاحب کے ساتھ. اچھا صلاح الدین, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لاہور میں بھی آئے تھے اس کے جو لانچ ہوئی تھی, تو وہاں پر کھانا پہلے سرو ہوا تھا اور ایونٹ بعد میں ہوا تھا. یہاں پہ ایونٹ پہلے ہو رہا ہے, کھانا بعد میں سرو ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیوں ہے ایسے؟ یہ کہ آپ کے ایونٹ میں لوگ شرکت کریں, کیونکہ آپ نے اپنے تجربے سے سیکھا ہوگا کہ اگر کھانا پہلے رکھ لیتے ہیں اور ایونٹ بعد میں, تو ایونٹ میں صرف جو آرگنائزرز بچتے ہیں, باقی تو سب چلے جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں اس عمل میں. تھینک یو. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے انیشیٹو سے, ٹیک کے آنے سے, جو ویسے تو سیاست ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن یہاں پر کیونکہ کچھ لوگوں کی نظر میں سیاست اتنی اچھی چیز نہیں ہے یا اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں, تو ٹیک کے انٹیگریٹ ہونے سے کیا کم از کم ان منفی پہلوؤں کو کاؤنٹر کیا جا سکے گا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں 2 انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں کہ سیاست کا ایک الگ رول ہے
ये सिस्टम की इम्प्रूवमेंट में। जहाँ तक टेक की बात है, वो तो एक नेचुरली एक वैल्यू न्यूट्रल किस्म का एक अमल है। वो टेक उसमें कोई सियासी वो आंसर नहीं है। उसमें ये है कि हमारी जो सिस्टम है उसमें नेचुरली जो हमारे तमाम जो प्रोसीजर्स हैं हमारे कोर्ट के वगैरह वो बहुत ही फरसुदा हैं। अपना कोई हमारा सिविल प्रोसीजर 1908 का है, हमारा सिविल प्रोसीजर उससे क्रिमिनल प्रोसीजर उससे भी पुराना है। तो अगर बहुत बेसिक किस्म की टेक्नोलॉजिकल इंट्रोडक्शंस इनोवेशंस हम अपने सिस्टम में इंट्रोड्यूस करें तो हमारे जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इफिशिएंट और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब छोटी सी चीज है, जिस तरह कोई इसमें कोई बड़ी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में उन्होंने सिर्फ वीडियो लिंक शुरू किया है। मैं समझता हूँ उससे लिटिगेंट्स के करोड़ों रुपए, 1-2 साल हुए हैं मगर करोड़ों रुपए लिटिगेंट्स के बच गए हैं आने जाने में। जो हर बार एडजर्नमेंट्स होती थी वकीलों की कि मैं पहुंच नहीं सका वगैरह, वो भी हट गई हैं। तो इट just the smallest things can make a very big difference. बिल्कुल ठीक। अच्छा, और आपके ख्याल में जो वकला हैं वो तैयार हैं इस चेंज के लिए, या कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगी, और क्या हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखें, जब भी कोई नई चीज आती है तो ऑब्वियसली ये इंसानी फितरत है कि एक रिलक्टेंस होती है, लोग सस्पिशियस होते हैं। नेचुरली बड़ी मुश्किलों से आपने एक कोई काम सीखा होता है, फिर कोई आके आपको डिसरप्ट कर दे, आपको कहे कि नहीं अब ऐसे करेंगे, तो एक इंसानी फितरत है, बंदा रिलक्टेंट होता है नेचुरली। और ये आप लोगों का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जब लोगों की फेमिलियरिटी होती है इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, जब लोगों को एक सामने नजर आता है कि इससे हमारी अपनी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं, हमारे काम करने का तरीकेकार ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, हमें फ्री टाइम ज्यादा मिल सकता है अगर ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं, हमारी प्रेपरेशन में हमें सहूलत हो सकती है, तो नेचुरली फिर लोग अडॉप्ट करते हैं और फिर होल हार्टेडली अडॉप्ट करते हैं। थोड़ा सा वक्त लगता है और थोड़ी फेमिलियराइजेशन की जरूरत है, और वो इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस से अचीव हो सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपके ख्याल में लाहौर वाला इवेंट ज्यादा अच्छा था या कराची वाला? अभी तक तो कराची वाला शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए मैं लाहौर वाला कहूंगा, वरना ये बात फिर मुझसे आप 8 बजे पूछिएगा। बिल्कुल ठीक है, 8 बजे हम इनको दोबारा लाइव लेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। लंबे साहब का हो गया इंटरव्यू? इंटरव्यू का हो गया। Bismillahirrahmanirrahim. I request all our distinguished guests to be seated, please.
Assalamu alaikum and a very warm welcome to the Technology for Justice Forum here in Karachi. Before we proceed further, one of the driving forces behind this forum, Ms. Sara Bilal, who can't be with us in Karachi this evening, is going to stream live from the final climes of London, and I think you will be streaming in any moment. And I'm the Executive Director of Justice Project Pakistan, a legal action non-profit that represents the most vulnerable Pakistani prisoners facing the harshest punishments at home and abroad. Thank you so much for joining us today as we come together for the third Technology for Justice Forum. Technology is rapidly transforming the practice of law across the globe. If used effectively, in Pakistan, technology would be able to solve and, bring some critical issues, bring access to justice to some critical issues in Pakistan. This year, the forum brings everyone to the table and sheds light on tech innovators committed to ensuring access to justice and strengthening the rule of law through the use of technology. It is crucial to note that technology can help bridge the gap between those who are in most need of legal help and those who can provide that help. At Justice Project Pakistan, we've been focused on increasing access to justice for Pakistani prisoners at home and abroad through launching the digital platform you'll be hearing about today, Vakil Online, that pairs lawyers from across Pakistan with families of prisoners in need of legal representation. But perhaps the part that I'm most excited about is that you might know that there are currently over 10,000 Pakistani citizens imprisoned abroad. These prisoners and these Pakistani prisoners are at the mercy of local courts without access to lawyers, impartial translators, or counselor assistance. So these Pakistanis often face the harshest of punishments because of their inability to interact with the legal system or to bring evidence in their defense or to get access to qualified lawyers. With JPP's digital platform, we will pair these poor Pakistani prisoners and their families with legal representation in the foreign country that they're imprisoned in the hopes that even when far from home and at their most vulnerable, these Pakistani prisoners are able to find the help that they need. It must be noted that this vision for digital transformation or access to justice that is being realized today could not have been possible without the support of the Federal Republic of Germany. Thank you, Ambassador Schlage, for giving wing to this vision for a digital legal Pakistan and for reposing your trust in all of us to do so. Going forward, my message to civil society would be that we hope that all civil society organizations like JPP are inspired to take advantage of the trends that are going to be highlighted at this conference today. You too can use technology to meet your purpose to solve some of the world's greatest problems. As civil society, we hold the knowledge and key to some of the most complex and pressing problems facing Pakistan today. To the investors in the room, I would say, do not count us out when you think about investing in technology that brings systemic change. Thank you very much. Thank you, Sara. I would have liked to welcome two of our very distinguished guests, but I believe they're still on their way here from the airport. The two honorable judges, one Mr. Justice Mansoor Ali Shah of the Honorable Supreme Court,
and the second, Mr. Justice Junaid Ghaffar, who is on his way on a flight from Sakhar to Karachi, as he is presently dispensing with justice in the circuit bench at Sakhar. I believe they are on their way, and they shall be addressing us in due course. I would also like to thank our distinguished panelists who have taken the time to share with us their experience, and moreover, they will also share with us their vision on the synthesis between technology and the law. और ये वो एक एरिया है जहाँ पहले कभी कोई डायलॉग एटलीस्ट इस सूबे सिंध में नहीं हुआ है, and I hope that this will herald the onset of a digital type of transformation in the way that we dispense with justice here. We have gathered this evening, as we did in Lahore some weeks ago, to bring together the driving forces behind information technology, the legal experts, both from the bench as well as the bar, and civil society, the private sector, to propel this endeavor to provide justice expeditiously and to the widest number of people. I'm going to share with you two such experiences. पहला तो एक ऐसा experience है which, although recent, but I think it holds a lot of promise, especially for the younger lawyers amongst us. As a representative of the bar, we often receive requests कि भाई हमें काम चाहिए, हमें किसी कंपनी के पैनल में आप कोई अपॉर्चुनिटी दें, आप SECP को खत लिखें, आप SECP को नोटिस भेजें कि जो बड़ी लॉ फर्म्स हैं उनके पास इतने कॉर्पोरेशंस के पैनल्स हैं जिनके उनके वो पैनल्स पे हैं, when they are restricted to only 3 corporations per law firm. To kindly look at this endeavor. What is the problem? What is the systemic problem there? मसला ये है कि जब हमारे वकील ग्रेजुएट करके आते हैं तो पहला उनका प्रॉब्लम ये होता है कि काम कैसे करें, दूसरा अगर प्यूपिलेज और काम मिल जाता है तो how long should they be there and continue working with that senior or that law firm, and तीसरा, when you go out in the marketplace to get work, how do you get it? How do you sustain it? एक रवानी काम की कहाँ से आएगी? Vakil Online is a platform, www.vakilonline.com, and the younger members in this audience and also those of us who may not want to admit but would like to look into it, please do. What is it? It is a digital platform जहाँ आवाम यानी कि public अपनी हर रोज queries भेजती है, खुला करना है typically, बच्चों की कस्टडी चाहिए, बच्चों की कस्टडी थ्रेट में है, how do I stop it? मेरे कोई पैसे ले गया, मेरा चेक डिसऑनर हो गया. These queries come onto this digital platform, and you here, those of us who are lawyers, advocates, address these queries. If your advice is preferred to my advice, and if your legal and professional fee is more competitive than mine, then on this digital platform, this person will get in touch with you, and either through a digital mechanism like Easy Paisa or traditionally through a check, or perhaps they may physically turn up at your office or at your home and pay you a legal and professional fee, and you conduct the case. Now, this is transforming the way advocates are practicing. As a pilot project, मैं आपको अपने तजुर्बे से बताऊं कि लाहौर में एक वकील थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की. In the first year of his practice, he was able to garner and sustain 80 clients. Another practitioner, जिनकी 4 साल पुरानी practice थी, जब उस platform पे उनका तजुर्बा बेहतर था, he was able to get 300 clients. The fee may not be very great, very high, but the economies were in the numbers of professional fees that he was able to charge and sustain. So Vakil Online is one such successful endeavor. आज का मकसद ये नहीं है कि we talk in highbrow technological terms, because quite frankly I'm very uneducated in that area myself. But what appeals to me and continues to hold promise is कि वकील ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए सस्टेनेबल काम लाएंगे, वो मार्केट में एक नया इक्विलिब्रियम फीस के हवाले से और काम के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से लाएंगे.
The second such endeavor, and I think those of us at the bar who have been trying to bridge the gap between college education and your formal training as wakeels. This year in the Sindh High Court Bar, we are conducting lectures and we are teaching what we would like to think is the barrister's course in Pakistan, free of cost, also online, adapted to Pakistani law. Pakistan में खासकर ये London University की degrees, it is our opinion as employers also, big rahi, but rahi. There's a gap in what you're being taught and what you should be taught. And when you come to practice law, you are not well equipped. One way would be to invite you to our lecture halls and get good practitioners, and one of our panelists was even kind enough to come on one of the occasions of these lectures and deliver a lecture. एक तो ये traditional तरीका हुआ, but there is yet another, what I would like to call a capacity building tool. And the way that works is कि जिनको हम अपने बालों के हॉल में बुलाते हैं to deliver a lecture, they instruct a fictionary and imaginary associate on, let's say, a civil suit for the recovery of money, or let's say a suit for custody, or khula. They're speaking to an imaginary associate, they're giving them instructions, they're informing them of where to find the law, what pitfalls and challenges they will find in a counter argument, and they're giving those instructions. इस तरह आप लोग उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे जिसका I think one of the panelists here and one of our young men who set it up will inform you in greater detail about that. You simply get onto that platform, you click the link that relates to your kind of suit, civil, criminal matter, and you get a lecture on your smartphone or your laptop, and you equip yourself with practical knowledge from the best practitioners. So ये एक और endeavor है. We're taking steps. They are baby steps, but they are firmly rooted in what is, I believe, the future. Today we're bringing together venture capitalists who have the funds to assist us and develop this for Pakistan. And the market is huge for them, but moreover for bar representatives and for some of the senior practitioners here and their partners from very accomplished law firms here. For them, it is also a source and some comfort to be able to get associates who are better armed and equipped with better knowledge, and they will participate in this by delivering those online lectures. I believe our bars must lead the way, and I think in Sindh, we need to have a firm foothold in the digital transformation of justice, not just in the way we bring lawyers and the awam, the public together, but also in the way we digitize, and we need to digitize the way we dispense with the machinery of justice in our courts. I'd like to end now, and before I end, I will inform you that we have in today's program 3 panels. One concerns the legal tech panel, and these will be discussions, and this will be moderated by Mr. Nihal Mustafa Qazi. The second will be a financial inclusion panel, where the moderator will be a venture capitalist of some renown, Mr. Faisal Aftab. And the third will be a policy and action panel. And that will be moderated by Mr. Ahmed Bensouda, a legal expert, and someone who is leading the way, at least in Lahore, for digitization of justice. Lastly, we will have 2 addresses. One shall be by the Honorable Mr. Justice Junaid Ghaffar of the Sindh High Court, and then the keynote address by Mr. Justice Mansoor Shah. I hope that you enjoy this evening. Thank you, and Pakistan Zindabad. Thank you, Umar. Distinguished guests, my name is Asfandyar Kasuri, and once again, on behalf of Justice Project Pakistan, I welcome you all to the inaugural event of the Technology for Justice Forum in Karachi. It is not often that one gets to make a statement in front of such an august gathering of thought leaders representing the upper judiciary,
government, the legal and tech communities, private sector investors, human rights activists, civil society, and academia, all brought together by a shared understanding that technology can help transform the legal system for the better. When Sarah Bilal and I initiated this forum back on October 1st, 2019, shortly after JPP launched its own digital legal initiative, we reached out to the few others who shared the same vision for a digital legal Pakistan. I am proud to say that many of them are with us here in this room today, notably Faisal Aftab, the CEO of Zen Capital, and Muhammad Ahmed Mansour, barrister, and arriving in just a few minutes on a flight directly from Islamabad to deliver the keynote address, the Honorable Supreme Court Justice Mansoor Ali Shah. Indeed, he is an inspiring force for those few of us who currently inhabit fledgling legal tech space. Just last month in Lahore, the forum added to its list of participants its third member of the Supreme Court, Justice Ijazul Hasan. It also added 2 senators, Ali Zafar and Waleed Iqbal, and both senators pledged to initiate policy that creates a more enabling environment for technology-based legal reforms to flourish. Today, T4JF is in Karachi. While it is a city that I spent a good part of my youth in, this is the first time I have engaged professionally with the many people here. And I must say, the enthusiasm of the people that have played a pivotal role in putting this together has exceeded expectations. Of noteworthy mention is Omar Sumro, who, despite not being the most digitally savvy lawyer himself, sees clearly the role that technology can play in enabling next generation lawyers to build successful legal practices and to strengthen the credibility of the legal community. And so he has wholeheartedly stepped out of his comfort zone and is now a proponent for tech-based legal reform. Thank you, Omar. But he isn't the only one. We are joined today in Karachi by some of the city's most notable legal practitioners, among them Mr. Hossein Mohamed Mota, Salahuddin Ahmed, Sarah Mulkani, Zahid. वेलकम बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जरनाब उमर के साथ। जरनाब, तुम पब्लिक पॉलिसी में डिग्री लेके आने के बाद वकला में कैसे एंट्री डाल दी तुमने? देखिए, मैं जब अमेरिका में था तो मेरा मकसद ये था, मेरा वहाँ गोल ये था कि मैं पॉलिटिकल कंसल्टिंग में घुसूँ, जो कि बेसिकली कैंपेन्स को गाइड करते हैं किस तरह वो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इलेक्शनियरिंग के इर्द गिर्द कोई इंडस्ट्री नहीं है। इसकी वजूहत आप में से पहले समझते हैं क्यों नहीं है, इलेक्शन कैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस फॉर पाकिस्तान एक ऐसा इदारा था जहाँ ना सिर्फ वकील थे बल्कि यहाँ पर एडवोकेसी और कम्युनिकेशंस की टीम भी थी जो कि लॉबिंग, प्रिजनर राइट्स के अराउंड लॉबिंग में काम करते हैं। तो इसलिए मेरा इस तरफ इंटरेस्ट बना और मैंने यहाँ अप्लाई किया और मैं यहाँ काम करते मुझे साल हो गया। और ये जो है T4JF का एक्सपीरियंस, हाँ जी, टेक को इंटीग्रेट किया है, ये इज इट समथिंग दैट यू वर लुकिंग फॉर? नहीं, मेरा बेसिकली काम था अराउंड प्रिजनर राइट्स, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेसिकली काम अराउंड डेथ पेनल्टी है, जो कि क्लाइंट्स डेथ पेनल्टी फेस कर रहे हैं, जो इस तरह के संगीन जराइम के अंदर कस्टडी में है, वो भी वकील ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए वो एक बहुत उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी। इसके अंदर वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं लॉयर्स को। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। लीगल टेक का हम बहुत सालों सुनते आ रहे हैं कि इट्स गोना चेंज द गेम। अभी तक हमने ऐसा होते देखा नहीं है, लेकिन इवेंट्स लाइक दिस आई फील आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। It's going to push the ball forward as far as the conversation is concerned. बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल, अगर गन पॉइंट पे कोई कहे कि ये करना है या म्यूजिक करना है तो क्या करोगे? नहीं, म्यूजिक कर लूंगा, मजा आता है। Thank you so much. Through the digital transfer of best practices from legal experts across the globe and to transform hiring practices, while Vakil Online is transforming the way in which citizens access justice. And Parksign.pk is creating legal efficiencies for businesses and citizens alike. Admittedly, there are but a few legal tech initiatives in Pakistan at the moment, but through this forum, we hope to bring you more and more as the legal tech industry grows. There are more than 100 of Karachi's brightest students and faculty members representing over 10 of the most reputable law schools in Karachi. They are in no particular order: Zabist, SM Law, Karachi University of Law, Ziauddin University, Zabul,
Federal University Faculty of Law, Denning Law School, Hamdard University, and the Millennium Law College, Karachi. These next generation lawyers are spending their Friday evening here to find out what the experts believe the future of law has in store for them. No doubt, they too will have questions of us. Through the forum, we will explore the idea that legal tech can be a game changer for Pakistan. We will explore what digital Pakistan may look like. We will discuss how to overcome structural resistance to change. And we will also discuss ways in which to speed up the growth of the legal tech industry in Pakistan. And as I mentioned earlier, what government can do to enable it. And hopefully, at the end of this day, policymakers may leave here with a better idea of how to speed up Pakistan's digital legal transformation. Legal tech sits at the intersection of social impact, economic growth, and strengthened public trust in legal institutions. I think it's fair to say we need all of this. Through T4JF, we have initiated the process of making the change we seek a reality. I thank you for your time. I give the floor back to Umar Sabro. Okay, we must now have Park Sign to address us. Where are they? The three panels we start. Can't hear me? Can you hear me now? Assalamu alaikum, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'd just like to give you a bit of background. We are a bunch of lawyers who felt that there's not enough technology in our profession. And so over a cup of coffee, we decided we're going to find what is easiest to digitize and give it a shot. And we thought the easiest one was agreements and signatures. Why do agreements take so long? And why do signatures involve paper and time? And with that mission, we started Pakistan, which for the last 18 months has been receiving a lot of traction, and I'd like to explain to you why and how. Can I get the video, please? We live in a digital world, so why do we continue to rely on paper documents that we create by hand? Why have we not moved to electronic signing? We force our customers to take multiple steps to create a contract, print on stamp paper, sign by hand, and wait for payments to be made. Your business is wasting time and losing revenue doing it the old way. The whole process should be simple, convenient, and fast. That's why we created a new way. Introducing PakSign. PakSign is the only locally hosted and tailored platform designed for Pakistan, where you can create a customized contract, send for electronic signing, and complete payments, all in the same experience. Make the move away from paper and manual Word documents, and discover the ease of digital documents and transactions using electronic signatures. PakSign enables you to do business on the go from anywhere, at any time, on any device. For the first time in Pakistan, delight your employees and customers with a simple e-signing platform. Conduct business faster and more securely with PakSign. Sign up to receive free credits for electronically signed documents on PakSign and see how easy work and doing business can be. Thank you. So I'm obviously addressing a room of lawyers. So the first question everybody asks is this even legally possible? And the answer, and I'll give the technical answer, is the Electronic Transactions Ordinance of 2002. The next major question that comes up is, yaar, Pakistan mein to hona nahi hai. Ye kis tarah chalega?
So let me end with my very brief presentation on how much we've achieved in the last 18 months. We have now got thousands of users, approximately 150 plus SMEs, 35 large corporates. One corporate already has onboarded 25 of its employees. We have approximately 45 universities, law firms, and institutional investors. We have 6 banks, including the State Bank of Pakistan, and we have 6 government authorities, including the SECP. So I think the only point of my message today is that the revolution is happening, and we'd like to call upon all young lawyers to not only take part, but add to this revolution through your own legal tech initiatives. Thank you very much. I'd now like to introduce a group of young men, Abdullah and Usman, who are responsible for law practice, which I earlier described as a capacity building platform where senior lawyers would deliver their instructions to an imaginary associate, और फिर आप लोग उसे online उससे फैज़ हासिल करके you will improve your legal skills. So let's welcome Abdullah and Usman from law practice. Hello. We are very grateful to Legal Outreach. Legal Outreach वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ. Legal Outreach team का thanks करती हूँ. At the grassroots level, we realized that practical learning experiences were given a backseat to rote learning and age-old regurgitations of the law. Therefore, we initiated our placement program where, based on factors such as areas of interest, availability of timings, and vicinity, we shortlisted law firms for candidates and got them guaranteed 1 month-long placements to learn the ropes in the field and supplement their theoretical knowledge. Individuals want excitement and engagement in learning, something that has long been amiss in our system. To that end, we started mooting for a cause across various law colleges in the country and managed to instigate important conversations such as rights of citizenship and problems that accompany stateless individuals. Conferences such as the Law and Business Conference only go to show how the size of the legal economy can only be increased by connecting our fraternity to others instead of just talking amongst ourselves. For professional lawyers, the Sindh High Court Bar Association partnered up with the Legal Outreach to launch the Continuing Legal Education Initiative. Thus far, that has been an overwhelming success, with over 3,000 participants attending over 5 weeks and another 70,000 watching our videos online over the same period. That brings me to our latest marquee offering, which we shall be presenting today, called Law Practice. Am I audible? Thank you. Yeah. Hello, am I audible? Thank you. Introducing Law Practice, an online platform that is built exclusively to train lawyers, potential and current legal practitioners on how to offer Hello. Am I audible now? I'm just going to start again. This is supposed to be a tech conference. All right. Introducing Law Practice,
an online platform that trains current and future legal practitioners on how to offer quality legal advice when it comes to capacity building as a whole, which Umar Saab mentioned today. Law firms in today's day and age are actively looking for talent that meets their standards and their thresholds. But most of them have reached the conclusion that none of the universities here in Pakistan can meet these standards. In an age of adaptive and interactive softwares, this has never been easier. For the first time in Pakistan, law firms can now leverage capacity building softwares called Law Practice to inspire millions of people by distributing actual experiences and their cases that can be accessed in 3 simple steps. The first step requires you to simply put Open Law Practice in your browser and you'll be taken to this homepage. Once you're here, the second step requires you to register or sign in using your credentials. And as a sample, we've made an ID for T4JF, this conference, and you'll be taken to a dashboard that is tailored to meet your learning needs. For the third step, if you're interested in a particular subject, a law firm, a specific skill, or any act or statute or case law whatsoever, all you need to do is attempt a case study. And what that looks like is you get your instructions, your information, your resources from gold standard practitioners already working at these prestigious law firms. All you have to do is submit your answers and try and meet the standards that have been set by these firms. Today is a day of asking ourselves important questions. To that end, I'd like to begin off by presenting a few to all the legal practitioners present here today. Do you feel that you spend too much time explaining things that you'd rather not? What really happens when an employee leaves? Do you or somebody at your firm have to train their replacement from scratch? Isn't that a boring and mundane exercise? And they still might not get it. The employee attrition rate in the legal industry is 54%, meaning 1 out of every 2 employees switches their jobs within a year of getting hired. Law Practice is a one-window solution for law firms to filter, onboard, and upskill their employees. Globally, we've seen over the past decade that customer satisfaction has increased by 200%, simply because the world has bought into the ideology of try before you buy. And it is now high time for us as legal practitioners to also change our model from hire then train to train before you hire. Now, the 2 major players in this context, those who wish to learn and those who wish to teach. On this auspicious occasion, I'd like to announce that of the 15 law universities and their students present here in audience today, 11 of them have already agreed in letter or spirit to enable their students to learn via Law Practice as a teaching tool. And insofar as the leading law practitioners are concerned, well, I'm not the one to speak on their behalf. Why don't we hear from them on what they think about this platform? From a pharmaceutical company in Canada. We've been engaged by a client who is currently in the United Kingdom with her 2 children. For this purpose, the client needs to understand how Pakistan law works. Right now, all we know is that the arbitration was held in Singapore. अब ये 3 जो हैं separate matters हैं, none of them are connected to the other. We have to prosecute them. This is a very high-profile case. We have been saddled with a responsibility. We need absolute pinpoint research. जहाँ तक मुझे याद आता है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है 2010 में की. I'll send you the client's instructions. Please go through them and prepare your response. And you have
48 hours to do so. Good luck. But lastly, remember, this isn't law school anymore. This is law practice. We thank you all for your valuable time, and we hope that you are just as excited as we are about the prospects of what law practice can become. Thank you so much. Thank you. I would now like to invite the founders, the engines behind Vakil Online that I spoke to in my opening address. Please come forward. Hello. 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 What if I told you there is a digital space where tens of thousands of Pakistani citizens have received free legal advice, where information regarding basic legal rights is being disseminated to millions monthly, and that this space was being powered by a growing community of socio-ethically inclined lawyers, that they were serving their communities and building successful commercial practices all at the same time? If I did tell you this, I'd be speaking of Vakil Online, Pakistan's most rapidly growing digital legal ecosystem, one that is transforming the way citizens access justice. That transformation is set to continue with the introduction of the new Vakil Online digital app, one that puts legal awareness and legal assistance quite literally in the palm of your hands. Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Abdul Ghani. I'm a lawyer and I'm a computer programmer by profession. I'm the Chief Technology Officer of Vakil Online. Vakil Online began as a small Facebook group in September 2020 with over 300 members only and a handful of lawyers. Today, Vakil Online exists across multiple social media platforms and has over 60,000 subscribers, including thousands of lawyers. Thank you. We have a digital reach of 3 million citizens. Now, with the addition of vakilonline.pk and our newly launched mobile apps, we have created a dedicated platform where citizens can ask their legal questions, and lawyers who can create their profiles and who are verified can respond to those questions and pair with these clients. Vakil Online is now definitely a game changer, transforming the way in which citizens interact with the law. That's right. Vakil Online is truly a game changer for women, for lawyers like me who are trying to build their practice, and for those women who require immediate or discreet legal support. It is hope for those vulnerable citizens who lack the means to protect themselves against the harsh realities of the criminal justice system. It is also a platform that gives you equal opportunity to build capacity and practice regardless of your gender or your background. In effect, Vakil Online has empowered the next generation lawyers. One amongst them, our very own youngest member of the team, Vishal Shakir. Thank you. In 2020, my father passed away. May his soul rest in peace. It was the most devastating loss of my life, as it has put me in immense pressure to be more financially successful. Being the eldest one, I had to sustain the family. I joined Vakil Online community when it began. I started researching on family law queries, and within a year, I had researched and answered over 200 queries encompassing family law, criminal law, cyber harassment, and many other issues. The more queries I answered, the more people started reaching out to me, and more cases I started getting. To this day, I can proudly say that I've taken nearly 100 clients from Vakil Online, both paid and pro bono, and the list continues to grow. I've done this on my own, and with Vakil Online, for all the aspiring lawyers present here, so can you.
Vishal, thank you. Vishal and many other next generation lawyers are already benefiting from Vakil Online. But the real beneficiaries of Vakil Online are the citizens of Pakistan, who going forward, as I said earlier, are going to have the law right in the palm of their hands. Thank you, everyone. We have a small video for you guys. अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम चाची जान, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम। आज फिर मारा है उसने तुम्हें? नहीं, ये तो बस ऐसे ही काम करते करते। कब तक पर्दे डालती रहोगी? छोड़ दो ऐसे खराब आदमी को। कैसे छोड़ दे? अकेली बच्ची कहाँ जाएगी? कहाँ अकेली हूँ चाची जान? 2 बच्चे हैं मेरे और वो मुझे कस्टडी कभी नहीं देगा। हाँ बेटा, बच्चों के लिए सब सहना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फौरन तलाक लो उससे। तलाक पर ठप्पा लगवा ले। नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। मशवरे तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर इंसाफ चाहिए तो सिर्फ वकील की मदद से मिलेगा। घरेलू तशद्दुद, तलाक या बच्चों की कस्टडी, मामला कोई भी हो, अपने हक को पहचानो। वकील ऑनलाइन पे जाओ और प्रोफेशनल लीगल एडवाइस हासिल करो, क्योंकि अब कानून हमारे हाथ में है। वकील ऑनलाइन, वकील करो। वकील ऑनलाइन, वकील करो। We'll end on a note, क्योंकि आज के बाद कानून आपके हाथ में है। Thank you everyone. Thank you to this young team, and to me as a representative of the bar, I think this is perhaps the most exciting platform where wakeels don't need the traditional office and they can respond to queries on that platform and earn their legal and professional fee depending on the quality of their advice as well as the timeliness with which they dispense with their opinions and advice. I'd like to welcome Mr. Murtaza Wahab. Mr. Murtaza Wahab is a barrister and he started practicing in the Sindh High Court, and he has now gone to the more difficult area of politics, and we are fortunate to have him as the advisor on law to the Chief Minister of Sindh, to the government of Sindh, and I'd like to take this opportunity to thank him not just for being here, but for those wakeels who do not know, we've been working with him for the last year and a half on health insurance for lawyers. And by virtue of his efforts, every year in the annual Sindh budget, a certain portion will be allocated to every wakeel who is registered and a paid-up member of the Sindh Bar Council for an amount of up to 250,000 rupees in some 1,000 hospitals across Pakistan. And he's going to be one of the distinguished guests in our panels this evening. So let's commence with the panels. The first panel will be the financial inclusion panel, और इस panel में हमारे moderator एक venture capitalist Mr. Faisal Aftab होंगे. And for those wakeels who are here, who are not in the know as I was not, these are the people who will fund and propel what we are trying to achieve in this digital platform. And the market in Pakistan is huge. And when we have in our policy and action platform advisors of the government, we bring them here so that there is a synthesis between the government and the venture capitalists who have the funds, and so that they can come on one platform and assist us. So over to you, Faisal Aftab.
Thank you, everyone. It's a pleasure to be here. So I've got an esteemed panel here, which I'd like to introduce. And as I call your name, please come on the stage as well. So we've got Johara, who needs no introduction. She is a founder of Catalyst Lab and also 021 Disrupt. Then we've got Nouri Kayal from Tej Financial. She's one of the leading fintechs in Pakistan. And then we've got Mr. Atir Tahir, who is currently with MasterCard, but soon to be running one of the largest payment platforms in Pakistan. So I'd like to start this panel off by introducing the crowd to a profound change that is happening and why technology suddenly is become in the center point of the world today. We're living in a time very similar to 1914 to 1945, between World War I and II, where you had the confluence of two major events happening, which was the rising empire, the United States, challenging an existing empire, the United Kingdom, along with the industrial age disrupting the agrarian age, which was primarily composed of the landed class, the princely states, the feudals, and monarchies. Post-World War II, we ended up with the new barons of the industrial age that were the industrialists, most of the companies that we know today, among the Fortune 500s and their predecessors. The same process started in the year 2000, where the technology and information age started disrupting the industrial age. And in 2020, we have finally attained the exponential stage of technology adoption. So the primary change that's happening here is that we're moving from a commodity-based monetary system to a digital-based monetary system, which is going to have profound effects on all of us. The very fundamental nature of every business, credit scoring mechanisms, how everyone interacts is going to be based on data. Data is the new oil. So I would say that every single person in this room over the coming decade will have at least 500 to 600 data points on them based on the digital footprint that they leave throughout their digital lives. The younger population, the millennials and Gen Zers, are going to face this, are even going to have more significant data points right from a young age. The reason why all this is important from a legal tech point of view is that AI is dependent on data as fuel to become more and more powerful with each coming year. I'll give you an example of how AI is training itself. The cost of training AI is reducing by 60% a year. So by the year 2030, AI will be creating other AI, which will disrupt most jobs in this room, along with probably in the industrial world, whether it's accounting, law, doctors, because anything that is logic-based can be done by AI with more efficiency. And so it's very important, this conference today, to create awareness in the room. And with that, I'd like to start asking questions from the panel. So I'll start off with Johara. One of the main things that I think with technology that we can accomplish is allowing disempowered individuals and people that are not necessarily included because of the current formats of systems. As we start to digitize courts, for example, in the US, a lot of motions can be submitted online, and then depositions as well as actual court appearances can be done via Zoom. So eventually, Pakistan, the same steps will play out, whether it takes 2 years, 3 years, or 4 years. How do you feel that will impact women? And we've seen this happen in health tech as well. So we'd love to get your point on this. Thank you very much, Faisal. Yes, absolutely. I think technology is one of the things that has been extremely handy in terms of empowering women, because women have multiple roles to play in society. In the health tech industry, we've seen that a lot of doctors, women doctors who were not able to practice simply because they could not just abandon what they were doing in the community and for their families and
practice medicine throughout the day. So the fact that now they can use technology to listen to their patients, to give advice, to collaborate with other medical practitioners, also to maybe have some health assistance, somebody who can then check blood pressures and temperatures and things like that, because sometimes all of that cannot be done remotely. That helps, I think. That has helped the health tech sector to grow. And although we haven't grown to the extent that we should in this country, we've seen how we've handled COVID, and I think the government overall has played a major role to make sure that people are able to use technology to do a lot during the 2 years that all of us were restricted from meeting face to face. So similarly, I think in the legal space, there are a lot of women who have studied law, but we don't see that number of women practicing law for several reasons. I think if you've been to the High Court or the provincial courts, I have had opportunity to do that. It's a scary place, in my opinion, because perhaps they are not treated with the kind of respect I feel that they deserve. They feel they don't belong, and you have to be really strong in order to be there. I mean, I come from a male-dominated industry myself, which is the technology industry, and I remember when I first started meeting up with other people in my industry, I was the one woman in a room full of 100 men. And no matter how strong you may feel you are, you feel awkward. You feel, do I really belong? The conversations are very different. And you are made to feel as if, you are sort of not as superior as the men who are practicing law. And we know, all of us know that that's not true. Anything that women want to do, they do well. They make sure that maybe they sort of prepare themselves twice as much because they lack that confidence that is necessary for them to face, the kind of things that they have to do on a day-to-day basis. So by having technology access and being able to give advice online, so I was just watching the video of Vakil online, I think it's great. They will be able to give advice, they will be able to take on clients, they will be able to generate revenue for themselves, and actually then start hiring and making sure that there is a broader group of women who are practicing law together with them. We've seen this happen in the food industry, we've seen this happen with entrepreneurs who first started working from home and then had all the logistics and everything taken care of by technology. And now you see a lot of businesses that have grown, that are able to employ other people. And we know that in a country like Pakistan, where not everybody can get a job, you need to create jobs. This is just going to be wonderful. Thank you. Atir, you're a part of a pretty major payments platform, and you're soon to join one of the largest payment platforms in Pakistan. I think one of the main components of Vakil Online and similar platforms is going to be exchange of value and how people pay each other on these platforms. As we learned that they're going to exchange services from a lawyer and a client point of view, how do you see the role of payment platforms facilitating this particular field in general? So, look, first of all, I apologize. My voice is pretty hoarse. I was at the expo entertaining a few clients. So if I lose my voice in the middle, I hope you weren't singing at you. Is that? I said, I hope you weren't singing. I'm not going to talk about that. But look, financial inclusion, it's not just limited to legal services. And inclusion for us is needs. And when we talk about payments, if the primary function is to provide people access to services and not just exchange of value, then a platform like Vakil Online or ParkSign or others would have to have this payment embedded. And that's where we are pretty much today, where when we look at the world, people don't necessarily go out to pay for something. They want something done, and the payment has to happen as it should be embedded.
And that's where I see platforms playing a role, where they would make the ability to pay and the ability to receive money so seamless that somebody can just log into a queue online, have a conversation, and the payment happens in the end. Where it's important is that, when a person is not satisfied with the service, how do they ensure that they're getting value for money? And that's why platforms like Wakil Online need to establish certain principles and certain guidelines by which the service providers need to be held accountable. And so I don't expect payment to be an impediment per se, but what I expect is the original access to financial services to be able to make that payment as a key impediment. That's what we sort of need to work on. When we look at Pakistan, we have we have 220 million people, 130 million adults, and only 20% have a bank account. And they still struggle to find ways to be able to get access to financial services. And if you go back to the example that Wakil Online quoted in their video, a person who is domestically abused and who's not empowered most likely does not have access to financial services as freely either. So how do we ensure that a platform is able to provide him that service? Maybe she doesn't have the 500 rupees an hour to pay her, or maybe she doesn't have any money saved up. So for her to be able to borrow immediately as she's logging on to Wakil Online and as she's making that, getting that service, we don't want money to be that impediment. The money should always be there, whether borrowed or through their own savings. It's about integrating it seamlessly into the delivery of a system and not making, if you go to a bank for a loan, for example, it will take 10 days at least to get that loan approved. And if she needs help immediately, where her life is in danger or her kids are in danger, money should not be that impediment to get that help. Same as with healthcare, same as with education, same as with energy inclusion, same as with food security. And justice is just one of the things that when we talk about inclusion, it's one of the ends that we talk about. Because giving somebody money is just a means. Giving them that service and giving them the ability to live another day and protect themselves and protect their kids is what we should be focused on. And that's why the idea is that get this thought about whether I can afford it or not out of the system. It should always be focus on that. Excellent. So, Noreen, since we're talking about fintech in the form of lending, I fought a case recently in the Sindh High Court, and so I realized that it can financially drain very quickly. Luckily, I've had quite a bit of savings to take it on, but a lot of success in a case comes down to who has more money, and ultimately you can keep funding if you lawyers dependent on that. So, from your platform's point of view, how can you play a role in terms of actually assessing creditworthiness of a borrower that needs money for a case potentially? Is that something that will play into fintech at some point, especially from the lending point of view? I'm actually going to pick up on what Matthew was just mentioning. I think सबसे important चीज़ यहाँ ये है that while we're talking about credit, which is actually the next level of financial service that I can provide. Prior to that is actually opening up. And 10 days, I still feel is a very optimistic number. I should actually ask a female, individual to come here on stage and ask her or him what their process has been through that. For female, it's much tougher. You actually require a male counterpart, or even someone who actually can, show you some form of income to be able to. So when we talk about platforms like ourselves for doing digital lending, it's important to understand what are the missing links when it comes to justice altogether. And we're talking about democratizing financial inclusion here.
You can't look at it in parts. It has to be in whole. You know, I feel justice, while the parts make the whole, it's also important to understand what those parts entail. So one is the customer side, the other is the financial institution side. On the customer side, you know, the biggest issue why institutions, traditional institutions aren't serving them, and we're talking about credit now, either they don't have credible data, they don't have a credit history at those their phone because they don't even have a bank account to begin with, and you know, they don't have collaterals. And institutions would only lend to them if they had all of this. Now, in the absence of data, institutions don't have risk-taking tools that actually would help them understand whether or not a customer is well able or even willing. And I think the latter, which is willingness, is the tougher area to analyze because you usually don't have data on it. So what we do is, in order to democratize inclusion and access to credit, we are basing our analysis on the single most prevalent piece of infrastructure, which is a smartphone. And you know that is something that everyone, almost most of the people, like 80% of the population at least has access to. And as you know, at the start of the panel mentioned, the data points that are available through it, the smartphone actually gives you an entire footprint, whether it's you know your geographic footprint, your financial footprint, your social demographic, or even behavioral footprint. We have actually developed algorithms which are based on data science to analyze behavior. Now that's input. The data is the input. How you actually understand that data is it's the work of technology. And you know, as you said, yes, the cost of technology, the cost of AI is going down with time, but AI is literally garbage in, garbage out. What you feed into it, it'll only spit out results according to it. That's the same with credit. So you know, over time, what we've seen is the single biggest challenge with credit is actually defaults. And you know, we've had this conversation with multiple people saying, या ये तो default कर जाएगा to begin with इसको access ही ना I think the challenge with us as a society is complacency. If there is a problem, we need to learn to challenge and overcome it rather than deter from it. And that's exactly what we're trying to do in providing credit. And so, you know, we've actually seen how we've actually managed to bring down defaults from when we started from 50% to now under 3%. Now, when you talk about, of course, you know, it's not only applicable to lawyers, but anyone who does not have access to finance, they can just come download an app, provide access to their data, which right now is only limited to smartphones. But as we talk about open banking, access to more sources of data, and of course, responsible usage of that data. And then, you know, you provide credit to them based on how they've actually interacted with their journeys. So some quick data points for everyone in the room. Another reason why everything is accelerating so rapidly in Pakistan is that when you look at this region around us, India, other comparable markets, India, Southeast Asia, MENA, unlike everybody launched 3G and 4G in 2006 and 2011. And 3G and 4G data connectivity is very important for smartphone adoption because in frontier market countries like Pakistan, affordability of laptops and desktops is just really not there because of the price sensitivity. So it's really these 10, 15, 20,000 mobile phones that tend to create adoption. Pakistan, today, when you fast forward, we actually did the auction in 2015, 13 for the license, and true adoption started in 14 and 15. When you look at Pakistan after that, I mean, literally it's about 750,000 smartphone connections a month are coming online. We are now we were about at roughly 15 to 18 million active internet users in 2015. That number sits at roughly around 75 to 76 million active users with about 100 million overall data users. That's actually bigger than the size of Egypt, just our data users. So we're a pretty big economy, very powerful economy in terms of the tech world, and I think you're going to see more and more adoption in Pakistan, more and more capital continue to flow. And so the reason why I bring that up is that
this is not going to, the velocity, the tech moves at a 15x velocity to brick and mortar. So as the pace of disruption is going to be the equivalent of the last 30 years, compressed in effectively 7 to 10 years. So this is right around the corner. And I think no matter what we're doing, it is going to touch us at some point. With that, I'd like to give parting thoughts to each one of you, just to share with the audience how you feel the next 3 to 5 years are going to play out for Pakistan in general, the digital front, and potentially to different fields, even legal tech. So I think with the increased usage of technology, I think we're still not there. Maybe we are looking at data for Karachi, Lahore, Islamabad, and maybe Faisalabad, some parts of Hyderabad, but we have a large country where technology adoption still has to happen. And I believe that smartphone usage will only increase when you have faster bandwidth. I was talking to someone in Jamshoro and the bandwidth was not sufficient for us to have a proper conversation. So I think we need to make sure that the bandwidth is faster, that smartphones are cheaper, and that people are educated on the use of digital technology. So platforms like legal tech, anything to do with legal tech, are important because I think a lot of us need to also be educated on what the law means and how we can access law, how we can, if we're facing a particular problem, what does it mean? Who can we reach out to? How does the law tackle those things? Simple things like when my parents passed away and I had to get the documentation done for the property that they left behind, it was so difficult. Finding a lawyer, making sure that the lawyer was not taking me for a ride. Finally, I was lucky enough because I had I'm sorry to say this, there are a lot of lawyers in this room, but if we don't know you personally, we don't know. And I was lucky enough to have a friend who was a lawyer, and although she did not deal in cases such as these, she introduced me to someone. But even then, it took forever for the transfer of the property to happen. And with my siblings being in different parts of the world, it was even more difficult. So I think, property, especially women and also men, when they have problems such as these, if the solutions are available on अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मैं इस वक्त स्टार स्ट्रक हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद पंसोटा, क्या कुछ नहीं करते और वकील ऑनलाइन का फेस हैं, और मेरे साथ हैं जिब्रान नासिर, बहुत बड़े वकील, उतने ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट। तो एक तो थैंक यू सो मच आप दोनों के टाइम का। पंसोटा साहब, मेरे ख्याल में संजीदा गुफ्तगू से शुरू करेंगे, और वो ये कि तो आपगन से शुरू करना चाहिए। नहीं, मुझे लगा कि शायद मैंने गैर संजीदा करनी है, इसलिए इन्होंने टर्न्स कर दिया। सर ओके। तो आप जाहिर है इनॉग्रल इवेंट लाहौर में भी थे जब T4JF का हुआ, उसमें खाना पहले था और इवेंट बाद में था। आज इवेंट पहले और खाना बाद में है। यही सबसे बड़ी गैर संजीदगी है। ये जो है ना जी बात, इस बात से मुझे बहुत ज्यादा बड़ा शदीद एतराज है और मैं टेक्नोलॉजी पे इसका एहतजाज रजिस्टर कर रहा हूँ। अच्छा, अब जिस कॉन्फ्रेंस के हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए लाहौर में हमने कॉन्फ्रेंस की, हमने उसका आगाज किया, और आज हमने यहाँ पर ही कॉन्फ्रेंस की और इसका आगाज कराची से हुआ। पाकिस्तान के 3 बड़े शहर, वैसे मेरे नजदीक तो तमाम शहर बड़े हैं, लेकिन इन शहरों से जहाँ से मूवमेंट्स हर चीज चलती है, तो आज एक बहुत ही खुशाइन बात है कि आप देख रहे हैं कि ऑडियंस जो है दे आर इन नंबर्स, और लोग पीछे खड़े हैं, बल्कि कुर्सियां कम है क्योंकि आपने जरा पैसे कम खर्चे हैं तो कुर्सियां थोड़ी सी कम है। लेकिन जो अच्छी बात है, बिकॉज मैं ऑडियंस में फिर के देख रहा हूँ, पीपल आर वांटिंग टू नो अबाउट टेक्नोलॉजी, दे वांट कि टेक्नोलॉजी आए। और टेक्नोलॉजी की जो सबसे खूबसूरत चीज है, जो मैं समझता हूँ कि एक हमारे दीन से भी मुताबिकत रखती है और हमारे आइन से भी, वो ये चीज है इक्वालिटी फॉर ऑल। कि अगर आपके हाथ में ये फोन है, जिब्रान साहब के पास ये फोन है, मेरे पास फोन है, अगर हम तीनों बात करते हैं, जिसकी बात सबसे मुनासिब है वो दुनिया अप्रिशिएट करेगी, बिकॉज बैरियर्स नहीं है सोशल मीडिया पे या टेक्नोलॉजी पे। पहले क्या था, चूज किया जाता था कि इस आदमी को प्रमोट करना है, इस आदमी को मीडिया में भिजवाना है, ये बात वकील करेगा। सो मेरे नजदीक इसकी सबसे खूबसूरत चीज जो है वो है नो बैरियर्स, अवाम फैसला करेगी, इक्वालिटी फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक। अच्छा जिब्रान, एक बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है कि अगर कोई वकील शलवार कमीज पहनना शुरू कर दे तो इसका मतलब है उसका वजन बढ़ रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है?
نہیں یہ بالکل سچ بات ہے, یہ بات تو میں روز اول سے کہہ رہا ہوں, مگر میری بطور وکیل شلوار قمیض پہننے کی جو وجہ بطور وکیل ہے وہ یہ کہ ہماری عدالت کے اندر, اور تھوڑا سا اگری کریں گے, واحد چیز جو ڈی کالونائزڈ ہے وہ ایک شیروانی اور ایک شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ ہے. باقی مائی لارڈ سے لے کے ختم شد تک سب کچھ انگریزوں کا دیا ہوا ہے, تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے. بالکل ہاں, مگر جو پڑھ رہا ہے وہ وزن الگ سے ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم یہ انیشیٹو تو ہم نے شروع کر دی ہے, اور وہ ظاہر ہے یہ سوال پنسوٹا صاحب سے نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کہ وہ تو اس انیشیٹو کا ایک حصہ ہے, لیکن آپ کے خیال میں اس انیشیٹو مطلب جو وکلا برادری ہے ہماری وہ تیار ہے اس کے لیے, اس چینج کو اڈیپٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے میں باقی وکلا برادری کو انکریج کرنے کے لیے یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ مجھے بھی اس انیشیٹو کا حصہ بنیں, سمجھیں. ہمارے یہاں پہلے ایک چیز تھی, یہ ایک ایلین تھی, یہ پتلی سی چیز کیا ہے, اس کے بٹن کیسے دبتے نہیں آتے تھے. اب ہر نسل کو دادا جان سے لے کے 3 سال کا بچہ جانتا ہے, تو میڈیم سے آپ جو ہیں وہ فیملیرائز ہو گئے. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تمام جگہوں پہ آ گئی. آپ نے اس پہ زمین خریدی, آپ نے اس پہ گاڑی بیچی, آپ اس پہ اپنی رائڈ بک کراتے ہیں, آپ اپنے اس پہ کھانا منگاتے ہیں, اسی کے اوپر آپ رشتے بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے اوپر بہت سی جگہوں کے اوپر آن لائن ووٹنگ بھی ہوتی ہے تنظیموں میں. تو جب اس سے اتنی ایکسیسیبلٹی آ گئی, اور اب اس کے اوپر اگر وہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جی ہم اگر وکیل کے پاس جائیں گے تو وہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں پہ ہم سیکنڈ اوپینین کس سے لیں. ڈاکٹرز کے بارے میں فارچونیٹلی اچھی بات ہے کہ اتنا ہم نہیں ڈرتے ڈاکٹر کے پاس جانے پہ, وہ کوئی مشورہ دے رہا ہے پھر بھی اعتماد کر لیتے ہیں. مگر وکیلوں کے حوالے سے میرے خیال میں تھوڑی بہت ڈیمونائزیشن آف پروفیشن بھی کی گئی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہمارے فیٹرنیٹی کے اپنے لوگوں کا ہو, مگر بہت سارے لوگ سب کے دل سے نیک نیت سے کام کر رہے ہیں اور پرو بونو بھی کام کر رہے ہیں. تو ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ آپ کو ایک انٹیمیڈیٹنگ انوائرمنٹ سے کورٹ نہیں جانا, کچہری نہیں جانا, بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ گھر میں بیٹھے ایکسیس کر سکتے ہیں اور سوال بھیج سکتے ہیں, جس سوال کو ملٹیپل وکیل جواب دیں, اور آپ خود اس میں سینس بنا سکیں کہ یار مجھے مختلف رائے مل رہی ہیں, اور پھر اگر 5-6 رائے آتی ہیں تو اس میں آپ میجورٹی رائے کا بھی ویو لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایکسیسیبلٹی کی جو بات ہے, اور کل ہم جب ملے تھے تو میں نے وہی بات کی تھی کہ چھوٹے شہر سے بڑے شہر, شہر سارے امپورٹنٹ ہیں, بالکل صحیح کہا انہوں نے, چھوٹے شہر سے بڑے شہر نوکری لینے آئے یہ اچھی معقول بات ہے, انصاف لینے آنا پڑے یہ بہت بےہودہ بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا پنسوٹا صاحب, یہ جو آپ نے ایونٹ کروایا ہے, یہ جو ٹیک اور گلیمر, اگر ہمارے وکلا بیرا روی کا شکار ہو گئے تو پھر؟ سر اس کے لیے ہم نے آپ کو ہائر ہمارا یور آن بورڈ, کیونکہ آپ بیرا روی کا شکار ہونے سے بہت ساری چیزوں کو روک لیتے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. اچھا جہاں تک بات ہے یہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کا, اس کو سینسٹائز کرنے کا, دیکھیں پاکستان میں جس طرح ہر جگہ کلٹس ہیں, ہمارے محکمے میں بھی کلٹس ہیں, اور جبران کی تو میں اس بات کو بہت عزت کرتا ہوں کہ جہاں وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بولتا ہے, وہ ہمارے اس پروفیشن کے بارے میں بولتا ہے, اور اس کے دیکھا دیکھی میں بھی تھوڑی سی پک پکڑ گیا ہوں. دیکھیں یہاں پر بھی آپ کے ایسے پریشر گروپس بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ who will be averse to the idea کہ ٹیکنالوجی آئے. Why? میرا ہمیشہ سے کبھی یقین ہے پاکستان میں صرف 2 سے 3% وکلا ہے جو کما رہے ہیں, which is very unfortunate. کیوں کما رہے ہیں وہ کہنے, اچھی بات ہے, اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ اس لائق بہت ہیں یا ان کے پاس ریسورسز ہیں, یا نو نو نو, اٹ از بیکاز کہ آپ کی جو کیپٹلسٹ ورلڈ کی کانسنٹریشن ویلتھ ہے وہ ان 3% میں. وکیل آن لائن کا مقصد ہے کہ ان 3% سے چھین کے لے کے, ہم یہ نہیں کہ نئی جابس کریٹ کریں یا نیا کام لے کے پہلے تو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو. میرے جو یہاں پر بھائی بہنیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اتنا کام نہیں جتنا کہ کسی دوسرے کے پاس ہے, وہ بھی اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں. بات یہ ہوتی ہے علی صاحب, جب آپ کو کوئی بڑا کیس ملے, میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, بھی آف لیٹ ایک کیس کیا ہے, اس پہ موقع ملا کرنے کا, یہ پی ایس ایل والا, لوگوں کا خیال ہوگا کہ جی وکیل ہی بڑا زبردست ہے, ویئرز میں پچھلے 21 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں. سو آپ کو یہ کیسز پہ بڑا بناتے ہیں, وہ کیس ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے, اور بہت بہت لوگوں کو اپرچونٹی ملنی چاہیے. تو اس کو ہم اس لیے سینسٹائز کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی شوڈ گو ٹو دا گراس روٹ, اور وہاں سے پھر لوگ جو ہیں وہ اوپر اٹھیں, اور کوئی پھر وہ کمپٹیشن نہ ہو, جو محنت کرے وہ آگے نکلے. اچھا جبران, میں نے سنا ہے کہ ججز کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں, کیا وکلا کو بھی ہوتی ہیں؟ نہیں, وکلا تو نارمل روٹین میں بھی چھٹی لے لیتے ہیں نا. یہ جو انہوں نے ایک بات کی نا کہ 2 سے 3 لوگوں کے پاس سارا کام اور پیسہ ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہے, اس مونوپلی کی وجہ سے کیا ہے کہ وکلا کوالٹی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے. دے آر ٹیکنگ آن مچ مور ورک لوڈ دین دے کین ہینڈل. آپ کے ایک دن میں کال لسٹ میں آپ اس کو اپنی تعریف سمجھتے ہیں کہ جی 10 کیس آئے ہیں میرے ایک دن میں کال لسٹ میں روز, مگر اگر ان 10 میں سے 8 میں آپ پیش نہیں ہو سکتے اور آپ ایڈجرمنٹ لے رہے ہیں, اور ایڈجرمنٹ کے اوپر پھر آپ کا یہ بھی ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے بار کا کہ جی بینچ جو ہے وہ اس کے اوپر کاسٹ نہیں لگا سکتی, وہ آپ کو کسی طریقے سے ڈسپلن نہیں کر سکتی, تو ایک تھوڑا سا مزاج بن جاتا ہے. اب جو سیکنڈ ایئر وکیل ہے نا, جو آپ کہتے ہیں ٹاپ 3% میں نہیں آتے,
उनके पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो ये शिकायत लेके आते हैं कि जी, और वो शिकायत ये नहीं कि क्वालिटी के ऊपर बुराई कर रहे हैं, बट वो कह रहे हैं कि जी वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ये टाइम देना, ये टेंशन देना, ये भी पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। अच्छा, एक तो ये पार्ट हो गई। दूसरे एंड के ऊपर मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हमारे जो लॉ कॉलेजेस हैं, अच्छे मोतबर लॉ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है। एक है कि जी आप एकेडमिकली लॉयर पढ़ गए हैं, मैं भी बायोलॉजी का चैप्टर बन के नहीं कह सकता ना कि मैं सर्जन बन गया हूँ। एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है एमबीबीएस में, 3rd ईयर में आपको वार्ड्स में ले जाते हैं, तमाम वार्ड्स कराते हैं। हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग जो है ना, वो एक बस भर के आती है बच्चों की सफेद और काले कपड़ों के अंदर, वो पूरा दिन एक हाई कोर्ट में बैठती है और फिर चली जाती है वापस, और ये उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई। बेसिक ड्राफ्टिंग करना, बेसिक एप्लीकेशन फाइल करना, खासतौर पे अगर आप क्रिमिनल लिटिगेशन में, तो क्रिमिनल लिटिगेशन तो है ही अबाउट क्रिएटिविटी, क्योंकि सीआरपीसी की इतनी प्रोविजंस है जो अक्सर लोग यूज भी नहीं करते और भूले बैठे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल मुझे इजाजत दे, और उसके लिए हम जैसे लोगों को जो बड़े बोल रहे हैं, वक्त निकालना होगा कि स्टूडेंट्स वो किसी भी शहर में पाकिस्तान के हों, हमने सीखा है और ट्रायल एंड एरर से सीखा है, जजेस के सामने शर्मिंदा होके डांट खा के सीखा है कि भाई बेहतर तैयार करके लाओ केस, हम उनको ये मुहैया कर सके चीजें, ताकि उनमें वो कॉन्फिडेंस भी आए, और ना सिर्फ लिखने का बल्कि बोलने का भी, आर्टिकुलेशन का भी और ओरेटरी का भी। तो ये जो कनेक्टिविटी है जो जमीनी रास्ते खत्म कर रही है, जो जोग्राफिकल डिस्टेंसेस को जो है वो क्या कहते हैं, उसकी कोई वर्थ नहीं रही है। आप जैकोबाद में बैठे हो, आप कराची में बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म के जरिए या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखें, और अगर वो डिजाइन ऐसे हुआ है कि एक्सपर्टीज और इंटरमीडिएट लेवल के लोग या बिल्कुल जो फ्रेश हैं वो मिले, और साथ में क्लाइंट्स को वैरायटी मिले, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइस ब्रैकेट, तो नथिंग बेटर देन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी से मुझे वो भी ख्याल आया कि वो मतलब जाहिर है बहुत सी वजूहात होंगी, लेकिन फिर भी ये जो पंजाब में तो कम से कम है, बाकी जगहों पे मुझे पता नहीं कि अब 35 साल से ऊपर का बंदा वकील नहीं बन सकता या पढ़ नहीं सकता, तो ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है, मतलब एक बंदा पढ़ना चाहता है। अच्छा, वैसे मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ऐसी कोई बंदिश मेरे भी नहीं ऐसी है। बंदिश शाम के टाइम बड़े बुजुर्ग आदमी, मतलब मैंने आपकी उम्र के बहुत सारे लोगों को वकालत करते देखा है, और वो लेट शुरू किया उन्होंने, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज है। अब शायद कोई ऐसी नई आ गई हो, बट एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, बल्कि बहुत सारे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अपनी रिटायरमेंट के नजदीक पार्ट टाइम वकालत कर लेते हैं और उसके बाद वकालत शुरू कर देते हैं। ये इस प्रोफेशन की खूबसूरती है। दूसरा, इसमें कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। खुदा ना खास्ता आप हमेशा ये सुनते हैं कि वकील साहब को हार्ट अटैक हुआ, गिर गए या कुछ ऐसे हुआ। वकील इज ऑलवेज ऑन हिज टोज। प्रॉब्लम इस प्रोफेशन की ये है कि हमने इसकी एथिक्स एरोड कर दी, हमने इसके अंदर लोगों को मौके देना एरोड कर दिए। पर जब आप किसी आदमी को इररिलेवेंट कर देंगे सिस्टम में, तो वो जाके लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा। मेरा तो एतराज उन सीनियर्स से है जो कि उनको रोकते नहीं है, जो कि अपने गेन्स के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। बाद में आपने कभी सुना है उस गरीब आदमी को कुछ मिला जो उधर जाके लड़ाई झगड़े कर रहा है? अगर आप उसको 10,000 25,000 का केस दे देंगे, वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा। मैं तो इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग यकीन रखता हूँ, एटलीस्ट लाहौर की हद तक जितनी मेरी वकालत है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी की बात की है ना, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये जो ई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आप अपेयर होते हैं, बेल है, बेल के मुल्जिम है, डकैती का मुल्जिम है, आप उसे कहते हैं यार मेरा इस्लामाबाद आने जाने का खर्चा 50,000 रुपये पर ट्रिप, तो तुम मुझे एंगेज कर लो। बाद में 10 डेट्स के लिए उस बेचारे का कपड़ा हो जाता है। अब होता ये कि हमारे वकला अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं हमने जाना इस्लामाबाद ही है, क्योंकि वो जाने के मजे और आने के मजे भी हैं, आप साथ हो, मरी बंदा निकल जाए। सो ये चीजें भी अब खत्म हो रही हैं। सो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, it is I think very helpful as far as dispensing justice is concerned. So technology to sir is the next level game. अच्छा, ये वैसे ना एक्चुअली एक डिबेट है कि क्या टेक्नोलॉजी मुआशरे को मुतशद्दिद बना रही है, या टेक्नोलॉजी के आने से लोगों के रवैये में मुस्बत चेंज आएगा। देखिए, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं ना, दीन भी कर सकते हैं, दुनिया भी कर सकते हैं, और दीन के अंदर भी सारी बातें, दुनिया में भी सारी बातें, तो वो इंसान की अपनी पर है। पर जब आप एक बंदे को पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो माश कमाने के हवाले से हो, या वो एक्सेस टू जस्टिस के हवाले से हो, या वो एक एम्पावर्ड शहरी बनने के हवाले से हो, तो वो ऑफ कोर्स मस्बत चीजों की तरफ जाएगा बजाय ऐसे कि मनफी चीजों की तरफ जाए। और एक्सेस टू जस्टिस या रूल ऑफ लॉ जो हम कहते हैं, हमारे आइन का किसी भी माशरे के कायम रहने का फंडामेंटल एक प्रिंसिपल है। तो टेक्नोलॉजी अगर वहां पे इस्तेमाल हो रही है, जो काम दर हकीकत में यहाँ पे कहना पड़ेगा ये हुकूमत के करने का है, ये बार काउंसिल के करने का था, जिसको प्राइवेट लोग आके एक ओनरशिप दे रहे हैं, होपफुली इंस्पायर कर सके हमारी बार काउंसिल्स को और हमारी जुडिशरी को और हुकूमत को। तो क्या ये बात होगी? थैंक यू सो मच। अभी मैं दोनों से ऑटोग्राफ लेके इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा, साथ ही रहिए, आपको बार बार बहुत सारे दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। More near the LexisNexis level. We need standardization of documents. We need a lot of,
documents to be spewed out using AI, etc. And the list goes on, and how to integrate, the continuing education methods. Now, this is not feasible commercially. I do not think this thing is commercially feasible. You don't want to give it only to the public sector, so it needs some sort of a public-private partnership. And it's absolutely imperative that this sort of a platform is developed in a collaborative manner. Otherwise, we'll be left, far behind. And I'm just going a little bit granular because there are investors here, etc. And there are two ways to do it. One is that with the help of Justice for Pakistan, government can prepare an RFP. All right, this is the product that we want to do, and these are the incentives I'm going to give. But the public sector, the private sector can also do its own what is called an unsolicited bid. Now, why I'm going into this, because unless there is something that at a big scale, very quickly we will left far behind. So, so we can put an unsolicited bid, and the government still has to procure, follow its procurement policies, but it does give you an edge, it does give you a right of first refusal. वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त जहांरा के साथ. बहुत ही अजीब सा कॉम्बो अब सुनने में लगता है, लेकिन शुक्र है कि अब नॉर्म्स बदलते जा रहे हैं. खातून और टेक जायंट, लीडिंग टेक वुमेन पाकिस्तान में, वुकला को जो इंटीग्रेट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ, आपके ख्याल में क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे जहन में रहने चाहिए? देखिए, चैलेंजेस तो हर चीज़ में होते हैं, और आपने देखा कि हेल्थ केयर में भी जब इंटीग्रेट किया टेक्नोलॉजी के साथ, तो कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ी, और जैसे जैसे वो स्केल होता है, जैसे जैसे बढ़ाते हैं आप, तो फिर आपको पता चलता है कि इसको किस तरह फिक्स किया जाए. तो उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. लीगल जो लॉ सेक्टर है उसका इंटीग्रेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जैसे हर वर्टिकल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है, तो अगर लीगल फील्ड उसमें नहीं शामिल होगा, तो हर एरिया में आपको पता है कि लॉ की ज़रूरत होती है. तो लॉयर्स, लॉज, एक्सेस टू लीगल कंटेंट, ये सब बहुत ज़रूरी हो जाएगा. अब बल्कि हो गया है. तो इसलिए जब इस कॉन्फ्रेंस में मैं आई और मुझे पता चला कि इस पे डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इट्स अबाउट टाइम, होना चाहिए. हालांकि मैंने कुछ लॉयर्स के साथ काम भी किया है जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है. और मैं स्टार्टअप्स के साथ काम करती हूँ जो नए फाउंडर्स हैं, नई कंपनीज सेटअप करते हैं, उनको भी लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, और उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं. अब हम लोग कुछ लॉयर्स को जानते हैं तो हम उनको एंगेज कर देते हैं, मगर कितनों की मदद हम कर सकेंगे. तो इस तरह बेसिक जो मैसेज हैं उनको एक्सेस लॉ का मिलना थ्रू स्मार्टफोन बहुत ज़रूरी है, और जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको तो मुख्तलिफ स्टेजेस पे और इतनी महंगी लीगल असिस्टेंस ना हो, अफोर्डेबल हो, तो वो भी उनको भी ज़रूरत होती है. तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है. अच्छा, ये जब भी टेक किसी चीज़ में आता है, तो वो जो एक एक्सेसिबिलिटी उस अपने साथ लेके आता है, हर बंदे को एक्सेस मिल जाती है, उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आती है. जी बिल्कुल. और वो जो उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, उनको एक धचका भी लगता है. तो और वो जो उस वक्त के बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग होते हैं, वो पावरफुल भी बहुत होते हैं. तो सिर्फ इसी बिजनेस को लेकर नहीं है, इसी इनिशिएटिव को लेकर नहीं, वैसे भी आप जो टेक में इस तरह से नई एक चीज लेके आ रहे होते हैं, उनको आपका क्या मशवरा होता है? देखें, जैसे आप आएंगे और इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी, आपकी कोई भी बिजनेस हो, आप देखें खवातीन हैं जो होम कुक फूड बेच रही हैं. अच्छा, शुरू में उनको बहुत मुश्किल है कि वो आपको कैसे एक्सेस करें, कैसे आपको बताएं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, क्या कॉस्ट है, किस तरह डिलीवरी होगी, ये सब. जब उनके सामने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजी हुई, तो एक तो वो अपने को मार्केट कर सकती हैं घर पे बैठ के, दूसरे वो एक्सेस कर सकती हैं कस्टमर्स को, तीसरे वो लॉजिस्टिक हेल्प भी मांग सकती हैं, कोलैबोरेट कर सकती हैं किसी और के साथ जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो. तो ये सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी एरिया में आप ये काम कर रहे हो, हेल्थ केयर हो, फूड सर्विसेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, कोई भी काम हो,
अगर टेक्नोलॉजी की मदद से आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो व्हाई नॉट. और ये है कि जैसे जैसे ये ज़्यादा कॉमन हो जाएगा प्राइस भी नीचे आएगी, इसलिए कि सिर्फ वो सीनियर टेक्नोलॉजी प्रैक्टिशनर्स या सीनियर लॉयर्स या सीनियर डॉक्टर्स को नहीं एक्सेस होगा, बल्कि जो नए लोग आ रहे हैं वो कहेंगे अच्छा हमें जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं ये सर्विस और ये हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे. और जैसे जैसे वो प्रैक्टिकली वो किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ से दूसरों को पता चलेगा. सोशल मीडिया पे आप देखें लोग बहुत ग्रुप्स पे ये कहते हैं कि हमने फलां को इस्तेमाल किया, उसकी वजह से हमें ये पता चला कि इतना मुश्किल नहीं है किसी के लिए एक्सेस करना, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो. तो मेरे ख्याल में कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे सस्ती होगी, कनेक्टिविटी जैसे जैसे सस्ती होगी, इसलिए अभी भी हमारे यहाँ इनके इश्यूज हैं. ये सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक तो महदूद नहीं होना चाहिए ना. और अब भी नहीं है, कुछ हैदराबाद में है मगर पूरे हैदराबाद में नहीं है, सखर में, मुख्तलिफ जगहों में, सिंध में भी, और फिर अक्रॉस द कंट्री आप देखें बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे ये नहीं अवेलेबल है. और फिर आप रूरल एरियाज को देखें. जब आप इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो सिर्फ औरतों की बात नहीं होती, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो आप ये देखें कि एवरी पर्सन जो आपके मुल्क में है, जो अगर कोई छोटा से छोटा फोन, अब सस्ते फोन आने शुरू हो गए हैं, इवन स्मार्टफोन, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो शेयर्ड यूसेज कर रहे हो, तो उनको हर तरह की सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए. तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ये कर सकता है, मगर कुछ लॉज हैं जो इन प्लेस अब आने शुरू हुए हैं जो प्रोटेक्ट करेंगे उनके डेटा को. अगर कोई मिसयूज कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन होगी. ये भी हो रहा है. और फिर हमें एजुकेट करना होगा कि देखें ये टेक्नोलॉजी का यूज इस तरह किया जाता है. आखिरी सवाल, और वो ये कि क्या आपको महसूस होता है कि अभी भी जो हमारी सरकार है या रियासत है वो थ्रेटेंड महसूस करती है टेक्नोलॉजी को लेकर, या अब एक्सेप्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है? देखिए मेरे ख्याल में हमारी रियासत को ये पता चल गया है कि टेक्नोलॉजी के बगैर इस मुल्क की प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है. और अगर हम टेक्नोलॉजी या डिजिटाइजेशन जो है वाइड स्प्रेड करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप होगी. मगर हाँ, डरते भी हैं. डरते इसलिए हैं कि पहले सिर्फ अखबारों और टेलीविज़न चैनल्स पे लोग अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करते थे. अब आप सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई पॉलिटिशियन ने कोई बात की हो या गवर्नमेंट की कोई सर्विस काम नहीं कर रही हो तो आप जाके वहाँ कह सकते हैं और फिर और लोग भी आ जाते हैं. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अपने आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, तो मैंने ट्विटर पे जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जाके शिकायत की कि भाई इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए. फौरन मेरे पास, मे बी बिकॉज मैं टेक में नोन हूँ, नादरा के चेयरमैन ने किसी को कहा कि इनको फ़ोन करके इनका प्रॉब्लम सॉल्व करें. मुझे इंटरेस्ट ये नहीं थी कि सिर्फ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो, मगर वो प्रोसेस सॉल्व होने की वजह से बहुत से और लोगों को फ़ायदा हुआ. और फिर बहुत से लोगों ने उस पर कहा कि हमारे साथ भी ये हुआ है और हम भी ये चाहते हैं कि हमें मालूम हो कि हम इसको किस तरह सॉल्व करें. तो इस तरह ज़रा कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं. तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट नोज के पावर ऑफ टेक क्या है. डरते भी हैं, थोड़ा बहुत घबराते हैं थोड़ा उससे, मगर ये है कि उनको पता है कि इसको एक्सेप्ट करना होगा और ये पावरफुल भी हो सकता है मुल्क के लिए, मुल्क के डेवलपमेंट के लिए. तो इसलिए जो होशियार हैं गवर्नमेंट में लोग वो एनकरेज कर रहे हैं डिजिटाइजेशन, और खुद भी गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी जितनी डिजिटाइज हो रही हैं. अब मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई किया, मैंने आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया, इसी तरह और भी चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं. तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी जिसमें आपके कोई मिडल मैन नहीं होगा. अगर है भी तो वो आपसे कुछ छुपा नहीं सकेगा. तो ट्रांसपेरेंसी जैसे आपने कहा बहुत ऑब्वियस हो जाएगी. Thank you so much. Not at all. Thank you. Thank you. Areas of speciality, etc. And benches can be constituted, cases can be fixed through algorithms. So it just makes the whole system fairer and more transparent. When it comes to technology interacting with the activity of lawyers and law firms, I think one thing that all of us would want is technology that improves. We've discussed AI here. Technology that improves, the research-based stuff,
I agree, Pakistan law site is very, very basic. We need better research. Then, drafting, etc., formats, suggestions that come. If you're filing a particular kind of case, a specific performance case, there should be automatically the program should tell you, oh, have you put in this prayer? Have you done this? Have you pleaded this? These kind of things, they're very simple things, but they could really improve the quality of the output that comes from law firms. Then, speaking for myself, we need a better system for, hiring talent. We can't just depend on word of mouth, asking somebody, Assalamualaikum, I'm back this time with Mohammad Abdul Ghani. गनी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है. गनी जो कोर टीम थी वकील ऑनलाइन की, जो ये सारा कॉन्सेप्ट था, उसका मतलब फाउंडर्स में से है. उसके अलावा जो ये ऐप जिसको हम आज लॉन्च कर रहे हैं, वो ऐप बनाने में सबसे की रोल गनी का है. तो गनी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू डन फॉर दिस. लेकिन एक मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है कि तुम बहरहाल वकील भी हो. अच्छा, होता ये है कि जब टेक की इंटीग्रेशन होगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी. जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, हर बंदे के पास आ जाएगा. अच्छा, इससे ना एक खास किस्म की ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिसका नुकसान वकीलों को होगा, एटलीस्ट इनिशियली. बाद में चाहे फायदा हो जाए. तो वो जो हेट एक आनी है तुम्हारी तरफ, उसके लिए तुम तैयार हो अपनी कम्युनिटी से? मेरे ख्याल में कि देखें, नुकसान कम ही होगा, ज़्यादा एक्चुअली मुझे जो नज़र आता है कि वो फ़ायदा ही होगा वकीलों का. क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी जितने वकील हैं, और बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो अपनी आउटरीच नहीं कर सक रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर सक रहे हैं, या सोचें उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती कि वो अपनी वेबसाइट्स भी बनवाएं, फिर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करवाएं. तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है, और वो हमने सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए नहीं बनाया, वो बेसिकली सारे वकीलों के लिए है. तो उसके अंदर आएँ और उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, और जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे उनको क्लाइंट्स मिलेंगे, और उनकी अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग होगी. तो जो इसमें कुछ लोग हों ऐसे जो आएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं सुनना चाहता हूँ कि वो आएंगे तो किस आर्ग्यूमेंट से आएंगे. तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि जिस दिन आएंगे तो बेसिकली उनको मैं आपके साथ ही बिठाऊंगा, तो आप उनके साथ सही जस्टिस कर सकेंगे. अच्छा, मुझे एक और चीज ये बताओ कि ये इवेंट्स इस तरह से करवाने का, इतनी बत्तियां लगा के, और बल्कि इतनी बत्तियां भी नहीं, बड़ा वो वाइट और ब्लू और बड़ा एक माहौल बनाया है, ये किसका आइडिया था? देखिए जी, ये तो अगर देखा जाए तो इसकी रूट पे तो वो ब्रांडिंग बैठती है, और आपको पता है कि येलो और ब्लू थोड़ा वकील ऑनलाइन की ब्रांडिंग है. लेकिन ऑब्वियसली एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, एक एनर्जी ऑफ डिजिटाइजेशन हम दे रहे हैं. इसलिए आप देख रहे हैं कि SMDs लगी हुई हैं बहुत सारी, और ये इवन दो ये हमारा मीडिया बॉक्स भी आपने बड़ा जबरदस्त किस्म का सर सेटअप करवाया है, और सारी चीजें. तो दिस इज एक्चुअली टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट जहाँ लोग मोटिवेटेड फील करें कि यार हो गई है डिजिटाइजेशन, तो इतनी बत्तियां और इतनी स्क्रीनें लगी हुई हैं. अच्छा, आखिर में आओ बुराइयां करें, फंदी के साथ काम करना कितना मुश्किल है? फंदी के साथ काम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है. फंदी बहुत अच्छे इंसान है, और उनके साथ ही मिलके बेसिकली हमने, और दिन रात 3 बजे भी वो मुझे कॉल कर देंगे और हम बात करते रहे, और हमने वकील ऑनलाइन के विजन को परफेक्ट किया है, और यही इसी तरीके से आगे चल रहे हैं हम लोग. और रमला भी ठीक ही है? रमला बिल्कुल ठीक है, उसने तो मुझे बिल्कुल कभी भी नहीं तंग किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम अभी you've done an impressive body of work on human rights issues. How do you think tech can provide a solution for access to justice, as well as to the quality of justice for our society's marginalized groups? Thank you, Mihar. So I think some of the ways in which tech can help access to justice, as Claudia highlighted those. But I think, we're just hopefully coming out of a pandemic. And I think that has some very important lessons for the use of tech in the legal space.
We can draw these lessons from what happened in the rest of the world, how the legal industry there adapted to the challenges of the pandemic compared to how we dealt with the challenges here in Pakistan. So after the pandemic, we kind of realized that it's maybe not as hard as we imagined for a lot of our work to go online. And for many of us, obviously not everybody, to be able to access Zoom software and so on, and be able to see people and interact with people using the internet over video link. And while you're based in Karachi? I am based in Karachi, ji, so I was trained abroad, but my professional life and career has been in Karachi. And you're from Lahore. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस वक्त बैरिस्टर यूसरा गिलानी के साथ. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मुझे ये बताएं कि इससे पहले कि हम टेक और वकला की इंटीग्रेशन पे आए, वकील जो बाहर से ट्रेन होते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस यहाँ आके करते हैं, उनको कितना बड़ा धचका मिलता है? Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. Thank you for inviting me. Firstly, बताएं मैं उर्दू में बात करूं या अंग्रेजी में? उर्दू अंग्रेजी जैसे आप comfortable हो. Okay, ठीक है. अंग्रेजी में मैं ज़्यादा comfortable हूँ, मगर I will go with Urdu as much as I can. I think it's an interesting question. ये सवाल मैं अभी consider कर रही थी अपने nephew के लिए जो कि college जा रहे हैं. सिर्फ LLB या law पढ़ने के लिए नहीं. I think generally अगर आप आपको इधर ही काम करना है तो आपका अंडरग्रेड अगर पाकिस्तान में ही हो तो आई थिंक आपको एक एडवांटेज होता है. तो मैंने लंदन से किया था और फिर मैंने एक ब्रीफ पीरियड के लिए वहाँ 6 महीने के लिए एक मिनी प्यूपलेज किया था, विच इज़ लाइक अ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉयर्स. फिर मैं वापस आ गई हूँ. तो एक किस्म का आई थिंक थोड़ा वक्त लगता है अगर आपने यहाँ नहीं LLB की हो तो if you have not done it here to adjust. So yeah. हाँ, लेकिन कम से कम वो मसला नहीं होता होगा, क्योंकि मैं जब से वकील ऑनलाइन के साथ मुंसलिक हूँ, मैं अब सुन रहा हूँ कि यहाँ पर लॉ कॉलेजेस के कुछ के काफ़ी मसाइल हैं और वहाँ से जब एक ग्रेजुएट निकलता है तो उसको अमूमन दरख्वास्त लिखनी नहीं आती, वो उसको ट्रेनिंग पर सीखनी पड़ती है. तो शायद जो बाहर से पढ़ के आ रहा है उसके साथ कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि आई थिंक जब आप लॉ स्कूल ग्रेजुएट करके जब आपने अगर बार भी किया हो जो मैंने किया है, आप जब जॉब में जाते हैं तो वो एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस होता है. आप समझ लें कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हर जियोग्राफी हर सेक्टर का अपना एक प्रैक्टिस होता है. लॉ में ज़्यादातर कस्टम प्रैक्टिस, स्पेशली डीलिंग विद रेगुलेटर्स एंड legal departments, etc. You need to know the language of the law here. So you start at zero in any case. अच्छा, एक और चीज़ ये कि बाहर भी ख़वातीन के लिए थोड़ा सा टफ है परस्यू करना लॉ मर्दों के मुकाबले में. यहाँ पर तो डेफिनेटली है. बाहर है कि नहीं है? I don't think so. I think I mean मैंने तो 2002 में मैं ग्रेजुएट हुई, तो मेरा काफ़ी पहले मेरी ग्रेजुएशन हुई है. और उस टाइम पे भी एज सच औरतों मर्द के लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं था लेडीज़ के लिए. There was no I didn't feel that. Here there was, but I'll tell you, it's interesting because that disadvantage here can also be used as an advantage in many ways. So many of the lawyers here will kind of favor and help ladies for many reasons. There's a lot of chivalry here as well, as there is discrimination and all of that, but there's also that. So I think it balances out, not in the courts. That's why I chose not to go to court. Though I'm a barrister, I did my corporate law, career was in law firms and in banks and SECP and State Bank, and this environment is still a lot more conducive to ladies. It's not as much. It's still a struggle. You have to tailor yourself to be a little more, acceptable in the society, because of there aren't that many ladies. So, right? Achha, do you think that this platform or the initiative like these can help women take up law and as in pursue law or
खास तौर पे टेक अप क्रिमिनल लॉ at any given time? I'm yet to understand fully what Tech for Justice Foundation or Forum is going to do. So I just got here. But from what I understand, I think, and I can imagine what this is being tailored towards, technology will exponentially help women get part of the legal, in the litigation space. Because जो मैंने आपको जिक्र किया था ना अर्लियर कि मैं नहीं गई कोर्ट, इसी वजह से जो डिस्कम्फर्ट्स औरतों को फेस करनी होती हैं कोर्ट में, वो सबको करनी होती है. जैसे कहते हैं हॉस्पिटल्स और कोर्ट से अल्लाह बचाए सबको. But really, the women do face a slightly bigger challenge. So this would definitely help them. Absolutely. Thank you so much. Thank you. English lawyers from very diverse practice areas. So I'd like to start with you, Hossein Saab. What are your insights on this? As far as low-hanging fruits are concerned, I think that we need to work on improving the online search engines because this is quite established all over the world with LexisNexis and digitization of documents. I do believe that a lot more work is required on the AI field, but that's the immediate low-hanging fruit that we really need improvement on. But as I said earlier, we need to think beyond just low-hanging fruit. I'm sorry, because we're going to be left far behind. There's so much happening at such fast scales that we need to think of something big. And even though that may not be fully commercially viable, but we need to get into a public-private partnership structure to make that happen. And yes, it's good to go low-hanging fruit, but there's no time for that. I think digitizing the court records, I think that's something that can be done fairly easily. As lawyers, you're constantly struggling to have the complete file as it exists in the court record. And in addition to that, I think anything that can be done to make sure that judges spend less time on administrative issues and instead on actual adjudication. And that again ties into digitization. Sorry. I think I alluded to it earlier, where I think trying to bring the high courts and the lower courts at a point where video recording of hearings and video and holding evidence over video becomes more of a common practice. I think that is an important one, and I think electronic. वेलकम बैक. मैं हूं इस वक्त शहाब सर्की साहब के साथ. सर, आप लाहौर से आ रहे हैं या आप कराची में ही थे? नहीं, प्रेसिडेंट्स एंड हाई कोर्ट बार. हाँ, लेकिन आप शायद लाहौर थे और आप जी लाहौर गया था मैं. थैंक यू सो मच, आपने मिस नहीं किया इसको. नहीं मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे. आपको कैसा लग रहा है एम्बियंस? इट्स वेरी गुड. मैं आपको बताऊं, देयर इज अ जनरेशन गैप एक्चुअली. टेक्नोलॉजी में भी है, एज में भी है. सीनियर लॉयर्स और जूनियर लॉयर्स हैं, दे आर very good with the technology. It's very easy for them. हम जैसे लोगों को थोड़ा सा ये जरूरत है इन चीजों की. हम इंस्पायर भी होते हैं and we become happy as well, क्योंकि इसमें फायदा इतना होता है उनका भी और and we learn also. So I think it is a win-win situation. It's very good and these conferences should happen on a regular basis. बिल्कुल ठीक. अच्छा, आपके ख्याल में जो सारी कम्युनिटी है वो इसको वेलकम करेगी विद आर्म्स वाइड ओपन, या कोई थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकती है? There will be a natural resistance. If you've read Alvin Toffler, he was a futurist and a sociologist. 1970 में उन्होंने एक बुक डाली थी फ्यूचर शॉक के नाम से, which is कि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएं तो how do you absorb it? Any human being absorbs it. इसीलिए मतलब जो यंगस्टर्स हैं वो उसको फॉलो जल्दी कर लेते हैं. जितने सीनियर होते जाएंगे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आएगी. मिसाल है, जुडिशियल लेवल पे आएगी. सीनियर जजेस बैठे हुए हैं इन देयर 50s और इन देयर 60s. वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस, नॉट बिकॉज दे डोंट वांट इट, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट एज वेल एज द यंगस्टर्स डू. तो वो अगर गैप पूरा कर दें तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी रेजिस्टेंस. बिल्कुल ठीक है सर. आखिरी सवाल वो ये कि जब टेक आती है तो टेक अपने साथ एक खास किस्म की एक्सेसिबिलिटी लेके आती है. लोगों के घर
ہاتھ تک چیز چلی جاتی ہے. اچھا وہ جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ ایک خاص قسم کی ٹرانسپیرنسی لے کے آتی ہے. تو وہ جو ہے وہ جو اس وقت کے جو لیڈنگ جو بھی لائرز یا پریکٹیشنرز ہوں گے ان کو شاید وہ تنگ کرے گی. آئی گیٹ یور اینگل, لیکن تنگ کرنا نہیں چاہیے. صرف ایک سائیکولوجیکل ایک ان کا ہوگا کہ ہمیں شاید اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا, یا شاید ایک سائیکولوجیکل فیئر ہوگا. اگر اس کو ایڈریس کر دیا جائے تو آپ اوپن آرمس والی جو آپ نے بات کی, آئی تھنک دیٹ وڈ بی پاسبل. سر تھینک یو سو مچ فار یور تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. Copy or whatever. So these are little things that could easily be sorted out. Third, final thing, it always used to amuse me in court, and it still does to some extent. There's sometimes you go to a court and let's say at 10 o'clock, you see that the court has already gone through its entire list. And then you go to another court, next door, and you see that out of the 40 cases that they have on their docket for that day, at 10 o'clock, they're still at number 2. So, I was thinking, there could be an exchange. It could be an electronic system that tells you, well, so-and-so court is stuck in such and such case. It's still at number 2. So why don't we transfer the last 10 cases of its, of that docket to another court? It could be done at, half time. It just make the judges, their time, it would be more efficiently utilized. It might punish also the more efficient judges, but that's a different argument. But I don't think little things like these are really low-hanging fruit that could be easily achieved. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, round of applause for thank you. I'd like to take this opportunity to welcome two of our distinguished guests, Mr. Justice Mansoor Ali Shah Sahab from the Honorable Supreme Court of Pakistan, and Mr. Justice Junaid Ghaffar, who is also flown in from Sakhar, Honorable Judge of the High Court of Sindh. We now move on to our final panel, اور یہ پینل ہے پالیسی اینڈ ایکشن کا, جس میں پالیسی میکرز بھی ہوں گے, اینڈ اس کے ماڈریٹر ہیں احمد پنسوٹا صاحب. تو احمد صاحب, کین یو کائنڈلی ٹیک یور سیٹ اینڈ اسٹارٹ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think except my first line I'll try and speak in Urdu because بہت زیادہ انگریزی میں باتیں ہم نے سنی, اور اب میں انگریزی سے اردو کی جو ٹرانزیشن ہے اس میں اردش کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا جو میسج ہے that can reach across to 170,000 lawyers in Pakistan plus ان لوگوں تک بھی جو اس چیز کو سننا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ پینل جو ہے جی, یہ پالیسی کا پینل ہے, اور اس سلسلے میں اپنا جو میرے فرسٹ گیسٹ ہیں جناب مرتضیٰ وہاب صاحب, I will invite him to the stage. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی نذیر احمد جو IG پریزنس ہیں, ان کو اسٹیج پر دعوت دوں گا, اور شہاب سرکی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ہیں. سر پلیز. ویلکم بیک. میں ہوں اس وقت سارا ملکانی کے ساتھ, اور سارا ابھی پینل سے نیچے آئی ہے تو فوری طور پر میں نے ان کو پکڑ لیا ہے. آپ مجھے پلیز بتائیں کہ جو کانورسیشن آپ سوچ کے آئی تھی کہ جس طرح کی کانورسیشن ہوگی ویسی ہی تھی, اس سے بہتر تھی یا اس سے خراب تھی؟ اس سے شاید بہتر ہی تھی. زبردست. اٹ واز اے ویری سبسٹنٹیو کانورزیشن, اور اس میں جو ہم ایز لائرز جو ہم ڈے ٹو ڈے مسائل ہم دیکھتے ہیں اور جو ہم آبسٹیکلس فیس کرتے ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے زیادہ آسان ہو جائیں گے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پینلسٹ نے ریکمنڈیشنز بھی دیے کہ کس طرح آسانی سے ٹیکنالوجی یہاں پر اڈیپٹ کی جا سکتی ہے ہمارے کورٹس میں اور ہماری لا فرمز میں. تو آئی تھنک کہ بہت پروڈکٹیو ڈسکشن تھا.
اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, وہی والی بات, اس میں حقیقت بالکل نہیں ہوگی, لیکن پرسیپشن یہ بن گیا ہوا ہے کہ جو سائل کے لیے اچھا ہے وہ وکیل کے لیے اچھا نہیں ہے, اور جو وکیل کے لیے اچھا ہے وہ سائل کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس طرح کی چیز جب ہم ڈیموکریٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں, ایکسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس سے خوف زدہ ہوگا کہ یہ کسی دوسرے کو مزید پاورفل کرنے کے لیے؟ آئی تھنک ایک خوف شاید یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا خوف یہ بھی ہے کہ اگر ہم بہت ایک کام کرنے کا ہم اگر ایک سسٹم کے اگر ہم عادی ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کو بدلنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں شاید یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر کچھ چیزیں بدلیں تو شاید ہم صحیح سے اڈیپٹ نہ کر پائیں, اور اسی خوف کی وجہ سے شاید ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ خوف ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں پتہ کہ ہماری جو ینگ لوگوں کی پاپولیشن ہے, انڈر 30 پاپولیشن ہے, وہ اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ینگ لائرز نکل رہے ہیں, کلائنٹس کی بھی عمریں جوان ہو رہی ہیں, اور ان کو ٹیکنالوجی سے کوئی ڈر نہیں ہے. تو ہمیں اڈیپٹ کرنا آئی تھنک ضروری ہے. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اے ٹیئر کے ملک جو ہوتے ہیں یہاں پر بھی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لا پرسیو کرنے میں, یا یہ صرف ہم جیسے ممالک کے مسئلے؟ نہیں, جہاں تک مجھے پتا ہے اور میں نے ایک اور ملک میں بھی پریکٹس کیا ہے, تو آئی تھنک کہ خواتین کے خلاف ڈسکرمنیشن تو اور ممالک میں بھی ہوتا ہے. اٹس اے گلوبل ایشو آئی تھنک, لیکن کچھ ہمارے جو معاشرے ہیں جو شاید زیادہ پیٹریارکل ہیں, یا جہاں پر ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک اسفیئر میں عورتیں کم باہر آ رہی ہیں, تو وہاں پر شاید زیادہ مشکل ہو رہا ہے. لیکن میں ٹرینڈز کو بہتری کی طرف ہی دیکھ رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ کہ مور اینڈ مور ویمن لائرز آر پریکٹسنگ, اور خاص طور پہ جو ہمارے جو لا اسکولس ہیں اس میں تو فیمیل اسٹوڈنٹس کی اب تعداد بہت زیادہ ہے. سو آئی ایم ہوپ فل دیٹ دا بیلنس از گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. اچھا, اور آپ کے خیال میں اس طرح کے انیشیٹو سے اس میں کوئی ہیلپ ہوگی؟ نمبر ایک سوال. اور نمبر دو سوال, آپ کو لگتا ہے کہ ان قریب انشاءاللہ خواتین کو ہم کرمنل لا بھی پریکٹس کرتے دیکھیں گے؟ ضرور. کرمنل لا تو میں کافی خواتین لائرس کو جانتی ہوں, میں خود کرمنل لا پریکٹس کرتی ہوں, تو آئی تھنک ابھی کر رہی ہیں, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ اور بھی اور زیادہ عورتیں کریں گی کرمنل لا پریکٹس. اور جہاں تک ٹیکنالوجی کا, آئی تھنک خاص طور پہ جو ویمن لٹیگنٹس ہیں ان کا شاید ٹیکنالوجی سے ان کو کافی مدد ملے گی, کیونکہ ابھی بھی جو ہمارا جو پروسیس ہے کہ ہم کو فزیکلی کورٹس جانا پڑ رہا ہے فار ایوری تھنگ, وہ ابھی بھی کافی مشکل ہے سب کے لیے, لیکن خاص طور پہ عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی جب وہ کیسز میں انوالو ہوتے ہیں. تو اگر ہم ٹیکنالوجی کو اڈیپٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہتری ہی ہوگی. Obviously دیکھیں ٹیکنالوجی کی ناٹ سالو دا فنڈامنٹل جسٹس پرابلمس ان دس کنٹری, اور ہمیں بھی شاید ہمارے ڈسکشن بھی یہ تھا کہ جو فنڈامنٹل پرابلمس ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, ٹیکنالوجی ان کا حل نہیں کر سکتی, لیکن آئی تھنک ابھی جو صورتحال ہے اس میں بہتری تو لا سکتی ہے. بہت زیادہ شکریہ آپ کا. آپ نے بزی نہیں رہنا آج, کیونکہ ابھی اس کے بعد اور بہت سی شخصیات ہیں جن کو ہم اس باکس میں بٹھائیں گے. چھوٹے چھوٹے اصول تھے, بٹ میں سمجھتا ہوں اٹ ول گو اے لانگ وے ان امپروونگ آور کرمنل جسٹس سسٹم. پہلی چیز ویڈیو لنک بیسڈ ٹرائل ہونا چاہیے اینٹی ٹیررزم کیسز کا. A witness should not be identified with his own name, اس کو pseudonym کے ساتھ کرنا چاہیے, اور ان کیس اس کا اگر آئیڈینٹیفیکیشن لیک ہو جاتی ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن چینج کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں ہے, تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن چینج کے رائٹ کو بھی اسٹیچوٹری فوٹنگ پہ ڈالا گیا. اور تیسرا جو اس کا پارٹ تھا وہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے, کہ ابھی ہمارے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کرمنل کی نہیں ہوتی, وہ وٹنس کی ہوتی ہے, کہ ایکچولی جو کرمنل ہے وہ وٹنس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں تم میرے خلاف گواہی دو گی, آئی ول سی ٹو اٹ. تو ہم نے 2018 میں وہ قانون پاس کرایا, پریزیڈنٹ صاحب نے سینڈ دے دی. جو انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے, آج ہم 2022 اپریل میں ایک کیس اس امینڈمنٹ پر مبنی پورے پاکستان میں نہیں ہوا. اینڈ آئی سے دس ود اے لاٹ آف ریگریٹ کہ میں خود یہاں پہ لا ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہوں, کہ ایون صوبہ سندھ کے اندر ہم وہ نہیں کر پائے, حالانکہ جو ہماری نہیں. میں ہوں اس وقت مہار صاحب کے ساتھ, پارٹنر ہے ریا, اور آگے بہت مشکل ہے لا فرم کے. معذرت
कैसा लगा आपको इवेंट, और आप क्या लाहौर वाले इनॉग्रेशन पर भी थे या ये आज पहली दफा आपने? नहीं, ये मेरा पहला मौका था टेक्नोलॉजी फॉर जस्टिस फोरम में पार्टिसिपेट करने का। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जैसे पैनलिस्ट ने कहा था, ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस इंटरसेक्शन पे बैठता है कि यू हैव the law, you have technology, and then you have the wider public. So you have members from each of those segments here. You've got policymakers, you've got lawyers, and you've got judges. So ये बड़ा अच्छा initiative है, and there's a lot of catching up जो पाकिस्तान को करनी है. और I think with the pace at which things are happening generally in the tech startup space, I think this is an area where those tech entrepreneurs will start looking at कि जी यहाँ पे भी कुछ हम करें जो which will have that social impact, but will also be profitable for them. मैं आपको इसलिए पूछा था कि आप लाहौर वाले इवेंट पे थे या नहीं, क्योंकि वहाँ पे खाना पहले था और इवेंट बाद में था. यहाँ पे हमारे साथ हाथ हो गया है, अब हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है कि इस्लामाबाद में दोबारा से हम लाहौर मॉडल में चले जाएं. सर, प्रोवाइडेड अगर लोग खाना खा के चले नहीं जाए तो फिर बिल्कुल ऐसे ही होगा. आई थिंक यहाँ पे शायद उनको ये होगा कि फ्राइडे भी है, खाना भी पहले दे दें, शायद लोग भी चले जाएंगे. अच्छा, तो मुझे एक और चीज ये बताइए कि यहाँ पर ना बिल्कुल ये गलत होगा, लेकिन एक परसेप्शन इस तरह से है कि जो साइल के लिए बेहतर है वो वकील के लिए नहीं है, और जो वकील के लिए बेहतर है वो साइल के लिए नहीं है. तो ये जब हम बात करते हैं टेक इंटीग्रेशन की, तो एक खास किस्म की एक्सेसिबिलिटी लेके आता है, वो डेमोक्रेटाइजेशन हो जाती है. तो वो एक हल्का तो ऐसा होगा वकला का जो इसको रेजिस्ट करेगा. वो बेशक सर, बेशक एक हल्का होगा जो रेजिस्ट करेगा. देखिए, हम थोड़ा जरा पीछे जाएं. कुछ वकला थे जिन्होंने ये फैसला कर दिया था कि जी ईमेल पे तो कभी हमें देखना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, हम चिट्ठियां लिखेंगे और चिट्ठियां आएंगी. आहिस्ते आहिस्ते जो साइल जो आजकल के हैं, ईमेल तो हर कोई इस्तेमाल करता है, तो जी वो ईमेल पे अगर आप नहीं क्या कहते हैं उस पे अपने आप को अडेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी जगह नहीं रहेगी. तो उससे पहले हम चले जाएं तो टाइपराइटर्स और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक होती थी. तो ये कोई ऐसा नया इनकलाब नहीं आया जो हमने पहले फेस नहीं किया हो, ये उसी का ही एक तसलसल है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, इसके अलावा मतलब जो क्या कहते हैं, यहाँ पर तो अभी तक वही डिबेट तय नहीं हो पा रही कि एक केस चल रहा है तो उसके अंदर क्या कुछ सबूत हैं जो कि पेश किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर. इसके अलावा क्या मतलब शायद अभी रिसेंटली ये फैसला हुआ है कि अब बंदा जो है वो जूम पे अपेयर हो सकता है अदालत में. तो अभी तो हम वहीं उतना पीछे हैं. अब हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि साहिल को जो लॉयर है वो घर बैठे बैठे बगैर उसके चैम्बर में आए मिल जाएगा. तो हम थोड़ा सा कुछ ज्यादा बड़ी छलांग तो नहीं लगाने लगे अपने हिसाब से? देखें, आप ये सोचें कि अभी जो कोविड का जो वबा आई थी उसके अंदर यहाँ क्या हुआ. सिर्फ हाई कोर्ट समेत काफी कुछ माह ऐसे थे, 4-6 महीने, जहाँ पे सिर्फ हेवियस कॉर्पस या इंतहाई अर्जेंसी वाली पिटिशंस लग रही थी और कुछ नहीं लग रहा था. हमारे हमसाए मुल्क में जनरली जो लोगों की तालीम की और वैसे भी फाइनेंशियल माली खुशहाली वो ज्यादा कंपैरेबल है. आपको चाहिए क्या? आपको ये चाहिए कि एक बंदा हो या खातून हो जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सके. कितने आपको मिसाल मिलते हैं जो लोग जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी है वो स्मार्टफोन बड़ा बेहतर चला सकते हैं एजुकेटेड लोगों से. तो बेसिकली आपको क्या है, ये कॉन्फ्रेंसिंग है, ये जी आपके सामने आ गए, उसके जरा तौर तरीके हैं, वो आपने कैसे करनी है. बाकी रही ई फाइलिंग. ई फाइलिंग देखें, आपके पास पूरे पाकिस्तान में हर किसी के पास नादरा का एक आइडेंटिफिकेशन है, उसके जरिए आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है. उस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट आपको फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इसमें आपको कोई बड़ी ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई आपने कहते हैं बड़े ज्यादा मीलों दूर जाना भी पड़ेगा. जो आपके पास एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना. अच्छा, आखिरी सवाल, आपके ख्याल में हुकूमत क्या इस तरह के इनिशिएटिव को वेलकम करेगी या रेजिस्ट करेगी? मैं तो समझता हूँ सर, देखें जो हमारी बातचीत यहाँ हुई है, हुकूमत जो है वो अपने आप को दुनिया में हुकूमत का बदल रहा है.
एक होता था पुराना तस्वर कि हुकूमत वो ये हाकिम हैं आपके और आप पे हुकूमत करते हैं और आप उनके ताबेदार हैं। दूसरा जो नया तस्वर है, और दुनिया में जो भी चीज होती है वो हमारे मुल्क से दूर नहीं रहती, थोड़े 2-4 साल बाद आए मगर आ जाती है। तो दूसरा नया तस्वर जो ये है हुकूमत का भी और आपके जस्टिस सिस्टम का भी, कि ये एक एज ए सर्विस है आपका, और जब आपकी सर्विस होती है तो सर्विस में कस्टमर जो है वो सेंट्रल होता है, उनका क्या एक्सपीरियंस है और उनको सबसे आसानी के साथ सबसे कम कॉस्ट पे आपने कैसे डिलीवर करने हैं। तो आपके सवाल पे वापस उसका जवाब देते हुए मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ज़ाहिर है एक फर्ज बनेगा कि जहां जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो किसी न किसी वजह से वायबल नहीं है, वो वायबिलिटी गैप को सपोर्ट करे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बीच में ऑफ हो गए क्या? नहीं तो बात ने उन टाइप के बुकला के लिए क्या किया है, और बाकी आपके जो टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में भी हमें बताइए। थैंक यू अहमद। ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट T4JF जिन्होंने ये बेहतरीन प्रोग्राम किया। आई एम वेरी इंस्पायर्ड, मे बी बिकॉज इट्स द जनरेशन गैप। वो यंगस्टर्स आर क्विक टू कैच ऑन विद द टेक्नोलॉजी, जितने सीनियर होते जाते हैं दे फेस अ बिट ऑफ अ रेजिस्टेंस। आई विल आंसर योर थिंग। मैं पहले मुर्तजा की बात कर लूं। व्हाट वी आर मिसिंग इज, हम जो मिस करते हैं चीज, मैंने 1970 की बुक एल्विन टॉफलर की फ्यूचर शॉक के नाम से that I read in my father's library maybe in the 90s, तो उसमें ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, ये जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवरलोड या उससे एक रेजिस्टेंस नेचुरल है, एंड द ओल्डर यू आर द मोर रेजिस्टेंस यू विल हैव। तो अगर आप इस इशू को अगर हम साथ में T4J के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है, इफ वी कन्वे इट टू देम, जैसे जजेस हैं, जज हजरात बहुत कम है। शाह साहब बैठे हुए हैं, आई थिंक ही इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो मैं देख रहा हूँ उस सिनेरियो में, वरना ज्यादातर जजेस का भी होता है दे हैव नेचुरल रेजिस्टेंस, दे डोंट वांट टू रेजिस्ट, लेकिन उनका एक नेचुरल होता है कि दिस इज समथिंग न्यू फॉर देम, हाउ कैन दे ट्रस्ट इट। तो वो अगर उनकी फीलिंग अगर उस आप थ्रेशोल्ड को ब्रेक कर ले तो आई थिंक ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी भी उसमें आ जाएगी। दूसरी बात आपने जैसे कि ऑब्वियसली वी आर अवेयर कि there are a limited number of percentage, there's a very small percentage जिनके पास बहुत ज़्यादा cases हैं, and these cases ये नहीं कि वो बांट दें दूसरों में, बल्कि others should also have an equal opportunity, उनको भी cases मिले। ये जो इतने सारे youngsters आ रहे हैं, they are our future, ये इन पे हमें invest करना है, इनको हमने promote करना है। What we have started, Umar and myself have started is a continuing legal education program, and we've taken the assistance of legal outreach. उन्होंने technologically हमें assist किया है, और इससे I think Usman और Abdullah was telling me कि there are more than 30-40,000 lawyers या जो वो lectures सुनते हैं, जो luminaries हैं हमारी legal field के, उनके lectures सुनते हैं। तो the first step is to get them educated and get them aware of the first hand experiences जो सीनियर लॉयर्स या जो 3-4% है वो लेते हैं, एंड प्लस शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यू सी लॉ इज समटाइम्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, अगर वो पर्सनल इनपुट देंगे, अपने पर्सनल एग्जांपल्स देंगे, केस एग्जांपल्स देंगे, तो लोग मोटिवेट भी होंगे एंड दे विल कम टुवर्ड्स दैट। तो व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज वंडरफुल। ऑब्वियसली जैसे काजी साहब ने भी कहा 90% लोग जाते हैं विदाउट हियरिंग वापस आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, मे बी 10% डिस्पोजल के बजाय मे बी 20% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, विच इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट के इम्प्रूवमेंट होगी। बट अगेन टू थिंग्स, वन वी हैव टू गेट दीज थिंग्स इनटू द माइंड्स ऑफ द जजेस एंड द सीनियर्स पर्टिकुलरली, कि दिस टेक्नोलॉजी ये किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगी, न सिर्फ आपको, आपके प्रोफेशन को। देखिए इसमें इंडिविजुअल फायदा अगर आप सिर्फ सोचेंगे, सो दैट्स वेरी सेल्फिश। You have to see the benefit of the entire legal fraternity and the judicial system. उसका फायदा आपने सबको बताना है। Everybody works towards that, जिस तरह लोग कर रहे हैं आजकल, and I'm very happy to, again I say very happy to see this conference. इस टाइप की चीजें होती रहेंगी, acceptability भी आती रहेगी और improvement भी आती रहेगी, and I'm sure if हर कोई नेक नियति से चले तो मेरे हिसाब से जो है I am willing to play my part. I know मुर्तजा अब्बासी साहब
everybody here who's sitting, they want to play their part. So let us reach out and convince people, not only through technology, but telling them thoda sa psychologically bhi karke, कि put that into their minds, कि this, because people are naturally resistant to change, or the older you get, the more resistant to change you get. So that barrier has to be crossed. Agar I believe कि अगर वो cross हो जाए, तो this technology is wonderful. Justice system में चूंकि इतना बैकलॉग है, इस वजह से इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, कि डिस्पोजल प्रॉपर जो है सही तरीके से होगा अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे. I just tell you an incident I had the other day. I was before a court. I was quoting some law which was not easily available. I had taken another copy, मैंने कहा बेंच को भी दूंगा, तो जज साहब ने कहा ठीक है हमारे पास है. I was surprised कि उनके पास कैसे है. उन्होंने फौरन अपना iPad निकाला, यूं किया, उनके पास वो iPad पे आ गया. So see, technology helps. ये आपकी बड़ी दुरुस्त बात है कि रेजिस्टेंस जो है, मैं बल्कि हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस पर मैंने एक छोटा सा वाकया सुनाया था कि लाहौर हाई कोर्ट में ही आईपैड से मैंने साइट की प्रोविजन, तो जज साहब ने कहा पहले आईपैड को बंद करो, अपनी फाइल बंद करो, तैयारी कर गया. सो पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स है, बट देन देयर आर जजेस जो कि बहुत प्रमोट करते हैं, बिकॉज़ उसमें देखिए टेक्नोलॉजी में साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तो एक ही जगह सब कुछ समा जाता है, दूसरा जो पेपर वेस्टेज है हमारे प्रोफेशन से लिंक, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट वी नीड टू टेक अप. फाइलों की फाइलें जो वेस्ट हो रही हैं चीजें, सो इस तरह टेक्नोलॉजी हमें बड़ा हेल्प कर सकती है. जो दो बातें की आई थिंक गवर्नमेंट की और पुलिस की जो आपस में रिलेटेड थी, आपने एक जुडिशरी की बात की कि वहां से प्रिजनर्स बहुत सारे वापस आते हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, उनकी सिक्योरिटी का मसला भी है, लेकिन साथ साथ इस चीज में भी आपने समझते एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनमें से मेजॉरिटी जो जजमेंट्स हैं अटेंड जिस वजह से होती हैं कि प्रोसिक्यूशन साइड से कोई नहीं है, हमारे बुकला की साइड से कोई नहीं है, मुलजिम तो बेचारा हर दफा होता है टू द एक्सटेंट के एंड में उसको मार भी दिया जाता है जिसका आपने जिक्र किया. तो इस पर कोई पॉलिसी बनाई जाए कि हमारे प्रिजनर्स भी सेफ हों और वो प्रिजन में ही हो, किसी तरह उनकी हाजिरी वहां पर मार्क हो जाए, सुबह एक आदमी डिप्यूट हो जाए जो जाके उनकी हाजिरी मार्क कर ले. इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट और अगर पुलिस करके आई थिंक आई लेट मुफ्ती साहब चलिए आप इस बात से बड़ी मेहरबानी. जवाब साहब का करने का किताब है कि रेजिस्टेंस बहुत है टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नेचुरल है. इवन जब रेडियो आया था या उससे पहले जब प्रिंटिंग प्रेस आया था, तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको रेजिस्टेंस मिलना ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है. हमारा काम ये है कि उस पर ज़रूर उस पर किसी भी तरह इनकरेज करें और बल्कि कंपेल करें कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. जब तक यूज़ नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं हो सकता. दूसरी बात ये है कि इसकी पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है कि मैं एज अ प्रिजन ऑफिसर में चाहूँगा कि इतने लोग जाएं जितने लोग ज़रूरी हैं काम, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम. जिस तरह कोविड में एक मौका था, आई थिंक गवर्नमेंट कुड हैव पास्ड अ लॉ और समथिंग या कोई एसओपीज के प्रिजनर्स को एक आदमी कोर्ट से अपॉइंट कर लीजिए, जज साहब की मुशावरत कर लीजिए इसको कि वो जाए उनकी हाजिरी मार्क कर ले कि वो जेल में मौजूद है कि नहीं है, हो सकता है जेल में ना हो कि दफा, तो उसका कोई तरीकाकार नहीं. To be honest, कोविड ठीक था, बड़ी ग्रेव सिचुएशन हो गई थी. I went to the Chief Justice, Sindh High Court. I requested him on behalf of government कि अगर आपने कैदियों को अदालत की तरफ कोविड के दिनों में लेके गए, and if someone gets the virus, तो सबके सब जेल को इन्फेक्ट कर देंगे, पूरा क्वारंटीन जोन बन जाएगा. बट अगेन उस तरह की रिसेप्टिवनेस नहीं आती बाहर, बिकॉज जजेस भी सोचते हैं कि हमें अपनी अदालत को चलाना है, हमें अपना इंसाफ फराहम करना है, तो हम किसी बीमारी की वजह से या पेंडेमिक की वजह से अपने इंसाफ के प्रोसेस को तो नहीं रोक सकते. और इसलिए मैं समझता हूँ जिद्दत कहाँ आने की ज़रूरत है. जो कई साहब बता रहे थे कि हमारे जेलों में 80% लोग हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स. अब हमने जो कानून का उसूल है वो अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, बट हमारे मुल्क में ओवर द इयर्स अनफॉर्चुनेटली जो ताकतवर है उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह किया कि उसने कमज़ोर को किसी जाली मुकदमे में डाला, पुलिस को इस्तेमाल किया और उसको जेल भिजवा दिया गया. अदालत में जब बेल मूव करते हैं तो अदालत वकील साहब को कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, जब तक चालान नहीं आएगा, आई विल नॉट हियर द बेल एप्लीकेशन. नतीजा ये होता है कि आपकी जेल जो है वो कैदियों से भर जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं. तो क्यों ना इसको हम लेट्स निप इट इन द बड कि लेजिस्लेटर्स को, पॉलिसी मेकर्स को कोर्ट की जानिब से ऐसी जजमेंट्स आई हुई है कि अ मैन इज एक्चुअली प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी.
आसिफ सईद कोसा साहब की जजमेंट्स हैं जो कि इवन दहशतगर्दी के मुकदमों में इस तरह की ऑब्जर्वेशन, इस तरह का डेटा उन्होंने ले डाउन किया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जैसे शाह सरकी साहब कह रहे थे कि हम तमाम इदारों को मिलकर बैठकर इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। उसमें मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी, इम्प्रोवाइजेशन और थोड़ा एंटी स्टेटस को माइंडसेट के कुछ जिद्दत लाने की कोशिश करें तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे। जिस तरह की जजमेंट्स की बात की तो वंस अगेन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी भी रिसेंटली जज सब यहाँ मौजूद है, उनकी एक जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट टेस्ट बेल्स के एक आदमी का सिर्फ अटेंडेंस इंश्योर करना जो वो पर्पस है, बाकी साथ को जेल के पीछे रखने की। तो इस किस्म की चीजें अगर अदालतें भी और पॉलिसी मेकिंग में भी चीजें सामने आ जाए तो शायद आई थिंक इसमें बेहतरी आ सकती है। मेरा शाह साहब आपसे फाइनल क्वेश्चन ये है कि लॉयर्स के लिए अवेलेबिलिटी जो नेक्सस की बात की, पाकिस्तान लॉ साइटेस्ट की चीजें हमारे यहाँ बार में ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी तो है, तो क्या ये फ्री अवेलेबिलिटी हो सकती है कि कोई भी वकील आए उसको फ्री एक्सेस करे और उसका जो दूसरा एक एस्पेक्ट जो मैं आप समझता हूँ कि जुडिशरी से आपको जरूर रेज करना चाहिए कि वंस अगेन दैट रिलेट्स टू पेपर वेस्टेज कि हम इतनी जजमेंट्स की कॉपीज क्यों देते हैं जब हम जजेस की अदालतों में किताबें लिखी हुई देखते हैं लेकिन हम फिर भी उस कॉपी देने पर मजबूर हैं, तो कैन वी सेव दैट एज वेल। तो इस टाइप की आपकी ज़हन में कोई साजिश है? देखिए जो सेकंड वाली साजिश का आपने जिक्र किया वो तो जजेस के हाथ में है कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कॉपीज या वो अगर सॉफ्ट कॉपीज एक्सेप्ट करते हैं, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द जजेस। जहाँ तक पहला आपका सवाल है, हमारे पास पूरा एक्सेस है, हमारे पास लाइब्रेरी भी है जिसमें एक्सेस है, कंप्यूटर्स भी हैं जिसपे एक्सेस है, हमारे सारे मेंबर्स को फ्री एक्सेस है, जो वो पढ़े सारा वो स्कैन करें, जो उनके मतलब की समझ में आए दे कैन टेक अ प्रिंट आउट, तो वो हमारा एक्सेस है। वो कीप ऑन बिल्डिंग दैट, उसी कंटिन्यूअस रिसोर्स बिल्डिंग की जरूरत है। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो ये नहीं है कि कोई चीज आपने रख लिया वो चीज पड़ी रहेगी, इट मूव्स ऑन, टेक्नोलॉजी मूव्स ऑन विद अ ग्रेट स्पीड, तो यू हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। हमें कंप्यूटर्स भी अपने जो है अपडेट करने पड़ते हैं, हमें फैसिलिटीज अपडेट करनी पड़ती है, नो कांस्टेंट बेसिस, सो वी आर डूइंग दैट। ऑब्वियसली वी आर लिमिटेड बाय रिसोर्सेज, लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है दैट इज आल्सो हियर, इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले में, और ये करते हैं कोऑपरेट अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध हाई कोर्ट बार से उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे इश्यूज में, तो आई बिलीव ये गवर्नमेंट भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। हम डोनर्स भी ढूंढ रहे हैं और डोनर्स भी हमें मिले हैं, एंड वी आर डूइंग दैट। जो आपका सवाल था एक्सेस है लॉयर्स का, वी आर ट्राइंग टू गिव देम ऑल द एक्सेस जो कि किसी भी एक सीजन लॉयर को हो, एक यंग लॉयर को भी वही रिसोर्सेज का एक्सेस होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिफोर आई टेक द क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम obviously the audience, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा अपना रिसेंट पिंडी हाई कोर्ट बार का एक्सपीरियंस है, एक जजमेंट की कॉपी तकरीबन 750 रुपए की पेपर्स पे पड़ी। सो इमेजिन कि अगर जज साहब मुझे 3-4 कह देते तो मैं माजरत कर देता हूं उस दिन। तो सवाल ये उसको अगर थोड़ा सा सब्सिडाइज कर दिया जाए ताकि, बिकॉज़ आई एम श्योर हर वकील इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये बेसिक एक सजेशन थी। So now the house is open. If there is anybody from the audience who wants to ask any questions, कोई सवालात हैं हमारे मौजूद मेहमानों से, जी आप बताइए, अपना नाम बता दीजिए और सवाल बता दीजिए। Do you have a mic? Okay, you can give them. I moved to Karachi in 2015. Before that, I think पीछे से माइक आ रहा है। जी मैम। Thank you for giving me an opportunity, and it is indeed a forum which is actually in need of time. और मुझे जो इनिशिएटिव्स पर्टिकुलरली हमें देखे यहाँ पर वकील ऑनलाइन और ये सारे इनिशिएटिव्स, दीज आर द नीड ऑफ टाइम। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि अब पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात हो रही है, रिफॉर्म्स के हवाले से बात हो रही है, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि जो इतनी पेंडिंग लिटिगेशन है, यस lawyers and judges, they do play a part, but what I'm thinking कि ये cases जहाँ से originate होते हैं, for instance through my informal discussions जो मैंने judges या lawyers से की, तो हमारे land record system वो इतना खराब है कि वहाँ से एक civil dispute start होता है, खानदानी दुश्मनी होती है, murders होते हैं। For instance अगर even banking को आप देख लीजिए, mortgage market बनाना चाह रहे हैं, fintech की बात हो रही है, तो वो रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इनिशिएटिव्स जो हमने देखे, फॉर इंस्टेंस लॉयर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए, लॉयर्स के बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, बट एट द सेम टाइम इस टेक्नोलॉजी का हमारे लीगल सिस्टम की रिफॉर्म के लिए अगर यूटिलाइजेशन हो और ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, तो इसके बारे में हमारे पास हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं। So I would like to ask a question. So do we have any such initiative,
or in pipeline, or would they like to launch any such initiative? I will direct this question to Murtaza Saab because it relates to government policy making. अगर आप मैं गवर्नमेंट के बिहार पे कह सकता हूँ कि जैसे काली साहब कहते हैं पॉलिसी जो है वो इवॉल्व होती है, तो अच्छे मुआशरे जो चीज़ों को एड्रेस करना चाहते हैं वो हमेशा इंटरेक्शन के साथ, एंगेजमेंट के साथ चीज़ों को ठीक बनाते हैं। तो उस एंगेजमेंट के साथ जहाँ सोसाइटी समझती है कि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर पॉलिसी लाने की जरूरत है, आई विल बी हैप्पी डिजिटाइज करने के लिए। अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी गवर्नमेंट अकेले ये चीज़ कर नहीं सकती है। द इनिशिएटिव हैज टू स्टेम फ्रॉम द कोर्ट, it has to emanate from the court, and if it does, the government will be more than happy to assist the court. Any other questions? Yes, sir. जी, डॉक्टर अंजन हुसैन बुखारी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले जो ई फाइलिंग है, ईमेल का एड्रेस एक देहात में फेसबुक लड़की और लड़का इस्तेमाल कर सकता है, तो हमारे लॉयर्स को भी सब कुछ पता है और फैक्ट शीट्स ई फाइलिंग का कल्चर हमारे यहाँ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे कितने रिटायर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सीनियर लॉयर्स हैं, जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो इसका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं, उनकी ऑनलाइन कंडोलेंस हो सकती है। तो मेहरबानी फरमाकर ये इतना बहुत टाइम वेस्ट होता है कि दो बातें, ई फाइलिंग कंपल्सरी कर दे। तो इंग्लैंड के सिविल प्रोसीजर रूल्स में 2001 में उन्होंने किया था, और साथ में ये कहा था जो इंटरनल रिलीफ है आप अपना नंबर बताएं और जस्ट से दिस इज हियर अर्जेंसी एंड सेक्रेटरी इज गोइंग टू ग्रांट यू स्टे ऑर्डर। थैंक यू। Which secretary are you referring to? I hope not the Secretary Bar Association. Okay. मेरा ख्याल है कि आपने सजेशन तो बहुत बड़ी अच्छी दे दी और बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि उसको मजीद बेहतर करें, लेकिन मैं चाहूँगा शहाब साहब इस पर आपको एक कॉमेंट दे दें। एक हम चीज डिस्कस कर रहे हैं हम अपनी बार एसोसिएशन में इस वक्त, बिकॉज देयर आर सम कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ कोई सिस्टम है जैसे फिल्टर्स लगे होते हैं एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ अ केस, तो वहां पे कोई एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर बैठा होता है, बिकॉज आई बिलीव कि द कोर्ट्स आर क्लॉग्ड विद फ्रिवलेस मैटर्स एज वेल। मेरे हिसाब से 30-40% फ्रिवलेस मैटर्स हैं व्हिच आर टेकिंग अप द टाइम ऑफ द कोर्ट। अगर एट द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन इनिशिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर केस अगर वो फिल्टर आउट हो जाए, तो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर बैठा हो वो कोर्ट में जाए ना, ऑन द फेस ऑफ इट काफी सारी चीजें जो है आपको पता चलेगा, आप उसके चेक्स रख सकते हैं, आप उसके पूरी चेकलिस्ट बना सकते हैं। अगर उधर ही से वो केस 30-40% फारिग हो जाते हैं तो कोर्ट्स का बर्डन वैसे ही उतने कई 100 केसेस से कम हो जाता है। तो दैट वी आर डिस्कसिंग, विल डिस्कस विद द चीफ जस्टिस एज वेल एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं आई 100% एंडोर्स फ्रिवलेस लिटिगेशन की वजह से एक जज साहब के पास अगर दिन में 70-80 केसेस लगे हैं तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जज साहब वो केसेस को सुन सकें, और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि अगले 2-3 सालों में उन केसेस को खत्म किया जाए, बिकॉज वी आर और वी बिकम अ वेरी लिटिगस नेशन, तो बढ़ते जाएंगे केसेस। तो उसमें फ्रिवलेस लिटिगेशन का दरवाजा बंद करने के लिए एग्जेम्पलरी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कानून में है, उसको एनफोर्स करने की जरूरत है। सिमिलरली एडजर्नमेंट, अगेन एडजर्नमेंट के मामले पे इफ आई रिप्रेजेंट द बार इट विल बी अ प्रॉब्लम, बट अगेन कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट जो है वो किसी एक वकील पे, किसी क्लाइंट पे नहीं आता, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे या ओवरऑल जस्टिस सिस्टम के ऊपर आते हैं, जो कि हम सब के लिए हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम उसको एड्रेस करें। जी, any other questions? Yeah, we'll just take 2 more and then take final question was quite clear. जी, आप बताइए। Assalamualaikum sir, my name is Rawal Rahman and I'm a student of 3rd year from SM Law College. मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो 2019 SC 396 की जजमेंट के बाद काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर आए थे। पहला सवाल मेरा ये है कि जो उसके अंदर 100 स्टूडेंट्स का बार रखा गया, जजमेंट के अंदर ऑलरेडी क्लियर है कि राइट टू जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जस्टिस फराहम की जाए, उसका मतलब ये भी है कि जस्टिस के बारे में तालीम भी हासिल की जाए। तो सर जो 100 स्टूडेंट्स का उस पर बार रखा गया था, उसका जब हमने क्वेश्चन किया कि क्यों रखा गया, तो उसने कहा कि वकीलों की तादाद बहुत बढ़ गई है इसलिए हमने उस पर बार रखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि रूल ऑफ लॉ, हम जब यूएन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, दे गिव यू अ टेस्ट लाइक अ लिटमस पेपर कि किसी भी स्टेट की सॉवरेनिटी आपने चेक करनी हो तो सबसे पहले आप उसका रूल ऑफ लॉ चेक करें। देयर आर सम 7 एलिमेंट्स, यू हैव टू चेक फर्स्ट वन व्हिच इज रूल ऑफ लॉ।
تو رول آف لا تبھی پریویل ہوگا جب آپ کی لیگل ایجوکیشن اور ریفارمس زیادہ بڑھ جائیں گی. تو سر جو 100 اسٹوڈنٹس کا بارڈ تھا, کسی بھی کالج میں صرف 100 اسٹوڈنٹس کا بارڈ ہے, باقی سر جو اسٹوڈنٹس یا جو گریجویٹس یا جو ریٹائرڈ آفیسر لیگل ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو سر ان کا رائٹ ٹو جسٹس کہاں گیا؟ سب سے پہلا میرا کوشچن یہ, ہاں ٹھیک ہے اگر وکیلوں کی تعداد بڑھی ہے, اٹس دی ریسپانسبلٹی آف دی بار ٹو میک کمپیٹنٹ ایگزامس وین دے آر گوئنگ ٹو گرانٹ اے لائسنس ٹو اے لائر. دوسری بات یہ کہ سر جو کافی سارے پرانے انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ایس ایم لا کالج اٹ ہیز گیون 4 چیف جسٹسز ٹو پاکستان اینڈ ایکچولی مینی ادر جسٹسز ان دی ویریس ہائی کورٹس آف دی سیم پنجاب, بلوچستان اینڈ کے. تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کالج کا. سی ایم تقریباً 4 سی ایم اس کالج سے ہیں. تو اب اس کالج کو 1940 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا, لیکن ابھی تک یہ ایک ایفیلیٹڈ کالج ہے. تو ایسے کالجز کو جیسے چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ ہم 32 ڈسٹرکٹس کے اندر یونیورسٹیز بنائیں گے, تو سر ایسے کالجز کو ایٹ لیسٹ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس تو ہونا چاہیے تاکہ لیگل ایجوکیشن کا بھی فروغ ہو, اور جس طریقے سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں تو اس میں بھی اسی طریقے سے پبلک ایٹ لارج اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک آپ کا پہلا سوال تو شہاب صاحب بہتر آگے کر سکتے اس کا آنسر دے سکتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. سر انہوں نے بیسکلی کہا ہے کہ جو وکلا کی انٹیک ہے جو کہ ایٹ لیسٹ 100 کے بعد باقیوں میں جو رائٹ ہے, رائٹ ٹو جسٹس تو وہ بھی ہے, تو اس کو کیوں بلاک کیا جا رہا ہے؟ آپ بار لیول پر بلاک کریں اور ان کے لائسنسز کو ریگولیٹ کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ آنریبل سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, ہم باؤنڈ ہیں اس سے. بہت ڈیٹیلڈ ہیئرنگ اس پہ ہوئی تھی, اگر آپ وہ ججمنٹ پڑھیں تو اٹ ٹوک اے لاٹ آف ٹائم, اور اس پہ سارے ایسپیکٹس, پاکستان بار کاؤنسل بھی تھی اس میں, سندھ بار کاؤنسل بھی آئی بلیو تھی, ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا, ججز ساری وہ بینچ بیٹھی ہوئی تھی, سارے ایسپیکٹ کنسیڈر کر کے انہوں نے فی الحال یہ بنایا. ایون ادروائز اٹ از این ایولیوشنری پروسیس. ٹھیک ہے ججمنٹ آگے جا کے, لیکن فی الحال اس وقت کی ضرورت تھی, میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال تو یہ کیا جائے. آگے پھر دیکھیں اٹس ناٹ لائف ٹائم نہیں ہے یہ کہ یہ صرف 100 ہی ہو کے, کچھ کے 50 بھی ہیں ڈپینڈنگ اپون دا کالجز. یہ بھی انہوں نے کیا کہ جو کالجز بنیں گے ان کی فیسلٹیز دیکھیں, یہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ جو کالجز بنیں گے ان میں کیا کیا فیکلٹی ہوگی, وہ ویٹ ہوگی ایچ ای سی سے, پاکستان بار کاؤنسل اس کی نو آبجیکشن دے گا. لائبریری ہونی چاہیے, فزیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے. پہلے بس وہ کاغذ پہ جو ہے کالج انکارپوریٹ ہوتا تھا, پھر وہ بس وہ پاس کر دیتے تھے اور وہ ہو جاتے تھے. تو اٹ کین چینج, اگر وہ ضرورت پڑی تو آئی ایم شیور کہ وہ سپریم کورٹ بھی جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرے گی اگر کوئی اپلیکیشن ایسی گئی. لیکن فی الحال تو یہ ہے. سیکنڈلی ہوتا کیا ہے کہ جب لا اسٹوڈنٹ گریجویٹ کر کے پھر جب ٹیسٹ آپ مشکل رکھتے ہیں, بار کاؤنسل میں انٹری ٹیسٹ رکھتے ہیں, پھر وہ چیز نکالتے ہیں کہ ہم نے 5 سال پڑھا ہے, اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, اب آپ ہم نے سارا پڑھ لیا, اب آپ دوبارہ ہم سے ٹیسٹ دے رہے ہیں. پھر وہ ریزسٹنس ہوتی ہے اس کی. صلاح الدین صاحب بیٹھے ہوئے, آئی تھنک ہی ریزڈ دس وائس اینڈ رائٹلی سو. انہوں نے کچھ سال پہلے صلاح الدین نے when he was a member of Sindh Bar Council اس کو کرنے کی کوشش کی تھی کہ ٹیسٹ مشکل ہو, اس پہ پھر ریزسٹنس بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو there cannot be a perfect thing, تھوڑا سا I believe کہ بیلنس کرنا پڑے گا. فی الحال تو یہی برداشت کریں, آگے چل کے جو ہے تھوڑا سا. چلو تھینک یو سر. اور آپ کے آئی ایم ناٹ اے پینلسٹ بٹ آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ اگر آپ نے انگلش مووی ہے کیچ می اف یو کین, اس میں بڑا اچھا دیا انہوں نے. ہمارے یہاں پرابلم میرے نزدیک یہ ہے کہ انٹیک بہت آسان ہے آفٹر دی یونیورسٹیز, اینی بڈی کین بیکم لائر. اس میں وہ آدمی ہر جگہ فراڈ کرتا ہے, تو اس سے وہ تفتیش میں پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈڈ یو مینیج ٹو پاس دی اسٹینفورڈ بار ایگزامینیشن, کہتے ہیں دیٹ واز دی اونلی ٹائم آئی اسٹڈیڈ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں, یہ میں جسٹ ایک آنسر کرنا چاہ رہا تھا. سر فائنل کوسچن اینڈ دین وی ول کال آف دس پینل سر, وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین legal tech innovators such as Vakil Online and many others in the field, how can all three of you help them? Government, or let's say government take offshoot aa jayegi, or Vukla ko aap represent kar rahe, how can you help all of them? ہم سب مل کے ہیلپ کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں جتنے بھی یہاں پینلسٹ ہیں اور جتنے گزرے ہیں, آئی تھنک ان کا انٹینشن یہی ہے کہ مل کے اس کو کریں. اینڈ آئی تھنک میں اپنی بات پہ وہ وہی کہوں گا کہ ایکسیپٹیبلٹی اس کی جو ہے ایک طریقے سے لائرس کو اور ججز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس میں فائدہ ہے اور آپ کا کیا فائدہ ہے اور کمیونٹی کا کیا فائدہ ہے, فریٹرنیٹی کا کیا فائدہ ہے. اگر یہ سب ہم مل کے کریں تو آئی تھنک یہ ساری ریزرویشنز بھی جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اگر آل اسٹیک ہولڈرز آر آن بورڈ. سر ایک کوئک کامنٹ فرام یو سر. میرا یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم سلو صحیح لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم نے کافی کام کر لیا ہے آلریڈی, اور انشاءاللہ جو
بڑا سا کام ہے وہ بھی پورا صحیح ہو جائے گا. مثال کے طور پہ جو ویڈیو ٹرائل کی بات کر رہا ہوں تو ہماری 24 ضلعوں میں ویڈیو ٹرائل روم بنے ہوئے ہیں with all equipment. تو جب بھی کوئی شروع کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتی ہے. صاحب آپ سے یہی ٹیکنالوجی نیچرلی ہیلپس اور اس طرح کے ایونٹس جو کہ بار کو گورنمنٹ کو بینچ کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں, آئی تھنک وہ جو ریزسٹنس ہے اس کو چینج کرنے میں اس طرح کے ایونٹس کین ڈیفینیٹلی پلے اے رول. تھینک یو ویری مچ جی. پینل نے سب لوگوں نے ٹائم دیا اور مرتضیٰ صاحب کے تو اگلے 2 دن بہت مصروف ہیں تو ان کو تو ہم زیادہ دیر تنگ بھی نہیں کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو ویری مچ. And our distinguished panelists. Earlier, we had made 2 presentations. One of them was of Vakil Online, جہاں ہم نے خاص طور اپنے جوان وکیلوں کو بتایا تھا کہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے وکیل آن لائن. ہمیشہ وکیلوں کے لیے کام ملنے کا اور اس کی سسٹینیبلٹی کا ایک کانسٹنٹ پیرینیل مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے جو 2 ڈسٹنگوشڈ گیسٹ, دی 2 آنریبل ججز مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب اینڈ مسٹر جسٹس جنید غفار صاحب نے وہ presentations of وکیل آن لائن نہیں دیکھ سکے because of the traffic jam and the flight delays. And the second one that we wanted to show them was of the instructions given by wakils on a digital platform to an imaginary associate by way of instructing wakils کہ بھائی آپ اس کو دیکھیے اور سمجھیے کہ قانون میں انسٹرکشنز کس طرح دی جاتی ہیں اور کہاں آپ کو لا دیکھنا چاہیے. Both these pilot projects have been very successful, in particular Vakil Online, جہاں 1 سال کا گریجویٹ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم میں جا کے فری آف کاسٹ جب queries address کرتا ہے, wide ranging queries, they get clients from this digital marketplace, albeit at a much lesser professional fee, but nonetheless we found a lawyer with 1 year of post qualification with 80 clients and another lawyer with almost 4 years of post qualification experience with about 300 clients. So this is something that is transforming the digital space for all of you wakeels. Thank you. ویلکم بیک. میں ہوں اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب کے ساتھ. مرتضیٰ وہاب صاحب یہاں پہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اب تو صرف پروونشل کو نہیں, اب تو فیڈرل والے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں. تو سر جو سب سے بنیادی سوال, ٹیک کے ساتھ انٹیگریشن ہو رہی ہے ایک پوری کمیونٹی کی, ہماری ریاست اس کو ویلکم کرے گی یا ریزسٹ کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں ریاست کو ویلکم کرنا چاہیے اور دونوں ہاتھ کھول کے ویلکم کرنا چاہیے, بیکاز ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسائل کا حل تلاش کر سکیں تو اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہوگا, اس کو اپنانا ہوگا, اور جتنی جلدی ہم کریں گے میں سمجھتا ہوں اتنا آسان ہم لوگوں کے لیے ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن ہم نے یہ بہرحال دیکھا ہے کہ جب ٹیک کی بات ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کی ایکسیسیبلٹی کی بات ہوتی ہے, ڈیموکریٹائزیشن ہوتی ہے, لوگوں کے ہاتھ میں ایک چیز آ جاتی ہے, تو حکومتیں اکثر اس سے تاریخی طور پہ گھبراتی رہی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ایسا نہیں ہوگا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے, بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو بھی گورنمنٹ ہے اگر وہ عوامی حکومت ہے تو عوام کی فلاح اس کا پیراماؤنٹ انٹرسٹ ہونا چاہیے. تو نیچرلی کوئی بھی چیز جو کہ لوگوں کو انفارمیشن کی فراہمی میں آسانی کر سکے تو اس کو تو اپنانا چاہیے. اب وہ دن نہیں رہے جب آپ صبح اٹھ کے اخبار پہ خبر چیک کریں, اب تو آپ کو منٹ بائی منٹ, چاہے ٹیلی ویژن چینل ہو, چاہے ریڈیو ہو, چاہے آپ کے فون ہو, اس کے ذریعے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. تو جو لوگ جن نے اپنے آپ کو آج تک لیٹ سے وہ اخبار کے سسٹم کے ساتھ جوڑا ہوا تھا تو they would have to wait for 24 hours to get access to information. لیکن جن لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اپنایا, جدت کو اپنایا, ان کو وہ انسٹنٹینیسلی انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اس سے بہتر جسٹیفیکیشن ہو نہیں سکتی. بٹ انفارچونیٹلی جب آپ بائی دا ٹائم آپ حکومت میں پہنچتے ہیں آپ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں شاید آپ کو جدت
ये टेक्नोलॉजी उस तरीके से समझ नहीं आती हो जिसकी वजह से शायद उसको अडाप्ट करने में इतना आपको डिफिकल्टी हो। बट जैसा कहते हैं नौजवानों का मुस्तकबिल है, नौजवान क़यादत आएगी तो वो इन चीज़ों को समझेगी और चीज़ों को समझ कर वे आसानी से आवाम के लिए कर पाएगी। अच्छा, अभी आपका पैनल था, आप पैनल से उतर के जा रहे थे, मैंने आपको रास्ते में पकड़ लिया यहाँ के लिए, तो आप खाना खाए बगैर जा रहे थे? मैं खाना खाए बगैर जा रहा हूँ। तो ये, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि हम एक आवाज बुलंद करें इस चीज के लिए कि जिस तरह वो बिग फैट इंडियन वेडिंग होती है कि खाना हर वक्त खुला होता है, आप कभी भी खा सकते हो, ये इवेंट के एंड पे जो खाना खोलना है ये भी मेरा ख्याल है कि आवाम से ज्यादती है। ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की कि इसको भी शायद कोई पुराना कॉन्सेप्ट है कि आखिर में खाना होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आप वो रनिंग डिनर या रनिंग लंच होगा तो आसानी होती है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो रश उतना नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन बिकॉज हम लोग एज ए नेशन शायद स्टेटस को ओरिएंटेड है, जो चीज़ चल रही है मेरे अब्बा ने की थी, मेरे दादा ने की थी, तो मैं भी वही करूँगा। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना ज़रूरी है, बट कहते हैं ना कि इम्प्रोवाइज़ करना इतना आसान नहीं होता बिकॉज ट्रेडिशन को छोड़ना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप जैसे लोगों को अपना किरदार अदा करने की चाहिए जिनका एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस है, मीडिया पर इन्फ्लुएंस है। जब आप उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे तो मैं समझता हूँ एक आम आदमी जिस तरह सियासतदान की बात सुनेगा, लीडर की बात सुनेगा, उसी तरीके से आप जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं लोगों को कायल करने में, लोगों को समझाने में। आपने देखा कि आज हुकूमत के साथ हमारा दो चीजों पे इत्तेफाक हो गया, टेक्नोलॉजी पे भी और ओपन लंच और डिनर पे। डन जी डन। सर थैंक यू सो मच। प्लेजर। It requires you, based on your interest, as a legal or judicial aspirant, to attempt a case study that has been made under the instructions and the guidance of the top legal aspirants and the practitioners working in this fraternity. You have before you a timer under which you need to attempt this case study. There is a background information on your task, and then the directions that you get are directly from one of the leading partners at a law firm or one of the judges serving the judiciary. The second step that you see is the instructions before you, in which you are told in a very clear manner as to what you are required to do. The third step is where you have resources made available to you, the statutes and the common law, which are clickable and lead you to a certain website where these PDF files are made available. And the final step requires you to ensure that you give your best submission to us based upon which the model standards that have been set by the practitioners in these law firms and the judiciary are actually met and you are scored based on that criteria. With that, I announce that we are launching law practice before you today. Thank you, and we hope that you are just as excited to learn and teach through this platform. This is the platform of Vakil Online. Please. What if I told you there is a digital space where tens of thousands of Pakistani citizens have received free legal advice, where information regarding basic legal rights is being disseminated to millions monthly, and that this space was being powered by a growing community of socio-ethically inclined lawyers, that they were serving their communities and building successful commercial practices all at the same time? If I did tell you this, I'd be speaking of Vakil Online, Pakistan's most rapidly growing digital legal ecosystem, one that is transforming the way citizens access justice. That transformation is set to continue with the introduction of the new Vakil Online digital app, one that puts legal awareness and legal assistance quite literally in the palm of your hands. Assalamu alaikum. First of all, we are honored to present again in front of the honorable judges. So I'll quickly explain what Vakil Online is. Vakil Online started as a small Facebook group of 300 members and a handful of lawyers. But as today,
as I speak. Vakil Online exists across multiple social media platforms, and we have over 60,000 members, including thousands of lawyers. Now, इस पूरी प्रोसेस में हमने एक इशू देखा, वो ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने बहुत सारे गैप्स देखे, लॉयर्स की रिक्वेस्ट है कि हमारा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए. So then we launched vakilonline.pk and the Vakil Online mobile apps for Android and iOS, which is a dedicated platform where lawyers can build their profiles and connect with each other, where citizens of Pakistan come and ask their questions, and they preserve their identities, anonymous hoti hai, and that's how lawyers are answering their questions and paying. So Vakil Online is a potential game changer, and it is transforming the way in which citizens interact with the law. That's right. Vakil Online is truly a game changer for women, for lawyers like me who are trying to build their practice, and for those women who require immediate or discreet legal support. It is hope for those vulnerable citizens that lack the means to protect themselves against the harsh realities of the criminal justice system. Vakil Online is a platform that gives you equal opportunity to build capacity and practice regardless of your gender or your background. In effect, Vakil Online has empowered the next generation lawyers. One amongst them, our very own youngest team member, Vishal Shakir. Thank you, Romla. I would again like to share my journey on Vakil Online community. My father passed away in 2020. It was the very devastating loss for me because I need to be more successful financially. So I joined Vakil Online community when it began. I started researching on family law queries and different types of queries, and within a year, I had researched and answered over 200 queries encompassing family law, criminal law, civil matters, and many more. More queries I answered, more people started reaching out to me, and more popular I became on the platform itself. To this date, I can proudly say that I've taken nearly 100 clients, both paid and pro bono, and the list continues to grow. If I can do this on my own, with Vakil Online, all the young aspiring lawyers, so can you. Vishal and many other lawyers from the next generation are already benefiting from Vakil Online. But the real beneficiaries of Vakil Online are the citizens of Pakistan who, from going forward, will have access to law right in the palm of their hands. Thank you, everyone. We have a short video. अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, अस्सलाम वालेकुम चाची जान, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम। आज फिर मारा है उसने तुम्हें? नहीं, ये तो बस ऐसे ही काम करते करते। कब तक पर्दे डालती रहोगी? छोड़ दो ऐसे खराब आदमी को। कैसे छोड़ दे? अकेली बच्ची कहाँ जाएगी? कहाँ अकेली हूँ चाची जान? 2 बच्चे हैं मेरे, और वो मुझे कस्टडी कभी नहीं देगा। हाँ बेटा, बच्चों के लिए सब सहना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। फौरन तलाक लो उससे। तलाक का ठप्पा लगवा ले। नहीं बेटा, ऐसी गलती कभी मत करना। मशवरे तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन अगर इंसाफ चाहिए तो सिर्फ वकील की मदद से मिलेगा। घरेलू तशद्दुद, तलाक या बच्चों की कस्टडी, मामला कोई भी हो, अपने हक को पहचान। वकील ऑनलाइन पे जाओ और प्रोफेशनल लीगल एडवाइस हासिल करो, क्योंकि अब कानून हमारे हाथ में है। वकील ऑनलाइन, वकील करो। वकील ऑनलाइन, वकील करो। Thank you everyone, and we always end on this note, क्योंकि आज के बाद कानून आपके हाथ में है। Thank you. Thank you. I would now like to invite Mr. Justice Junaid Ghaffar to address us. I'm sorry, sir. There's just one more presentation. My apologies. The last presentation. I'm sorry.
do we continue to rely on paper documents that we create by hand? We live in a digital world, so why do we continue to rely on paper documents that we create by hand? Why have we not moved to electronic signing? We force our customers to take multiple steps to create a contract, print on stamp paper, sign by hand, and wait for payments to be made. Your business is wasting time and losing revenue doing it the old way. The whole process should be simple, convenient, and fast. That's why we created a new way. Introducing PockSign. PockSign is the only locally hosted and tailored platform designed for Pakistan, where you can create a customized contract, send for electronic signing, and complete payments, all in the same experience. Make the move away from paper and manual Word documents, and discover the ease of digital documents and transactions using electronic signatures. PockSign enables you to do business on the go from anywhere, at any time, on any device. For the first time in Pakistan, delight your employees and customers with a simple e-signing platform. Conduct business faster and more securely with PockSign. Sign up to receive free credits for electronically signed documents on PockSign and see how easy work and doing business can be. Thank you. Honorable judges, my name is Barrister Altaf Qureshi. I practice in Pakistan and in England. I am looking to digitize Pakistan's legal system, not just with respect to business contracts and signing, but also within the courts. Through my colleagues in the Wukla Baradari, as well as Ijaz Evner Associates, where I practice, I believe there are two tangible ways that PockSign can be utilized immediately for effect. The first is that all signing that takes place at the courts, which currently take place manually with a thumbprint in a particular room, can be undertaken remotely through PockSign. Now, if I just elaborate, there are concerns. People assume that there'll be forgeries. People assume there'll be fraud. Well, the fraud element has already been addressed through the integration with Nada Verisis. And the forgery is what is the beauty behind electronic signatures. Electronic signatures is not the image of a document. Electronic signatures is a mathematical algorithm that locks every page and every image. So if someone tampers with a document in any way, only PockSign or a system like PockSign can identify it as a forged document. It is literally not possible in an offline manner. The second tangible effect we can bring right now is the digitization of court documents. And I'd like to give you an example from the market in which PockSign operates currently in Pakistan. PockSign currently has thousands of users, ranging across 6 banks, including the State Bank, 6 government agencies, including the SECP. We also have 35 major corporates, almost 150 SMEs. This is all in the last 18 months or so. One of the things that we've identified with a particular bank, very large bank, is that they have an archive of physical documents dating to pre-partition, all housed in a residential tower based in Southern. They have 3 individuals whose job is to retrieve documents as and when required by the remaining bank. Even though the bank is exceptionally advanced in many other respects, it is unable to digitize these thousands of documents. We have been asked, as a precursor to automation, automation means making it easy to make a document. They have asked for the archiving of digitized documents. And we have created a software that forms part of the PockSign experience, where documents are uploaded in bulk, examined, and as a result, indexed. Now, the application of this within the courts is very simple. It means
that all stakeholders in the court system are not dealing with paper, ever-growing paper, movement, copying, submission, withdrawal, it will all be digital. And consequently, all advocates will have access to a portal, all judges and benches will have access to the same portal, all administrative wings of the courts will have access to the same portal. It will not only bring efficiency, it will also improve environmental damage caused by a significant amount of paper. And it is the only way, as far as I can see, having seen other legal systems around the world, for this to progress. So thank you again for everybody's interest in Pakistan. I thought I'd take the opportunity to explain to the judges. We have some questions. I will be here. I can take those questions. Thank you. I'd now like to invite Mr. Justice Junaid Ghaffar of the High Court of Sindh. Everybody who thinks of Mr. Justice Junaid Ghaffar always has an image of his iPad while he's on the bench, and perhaps he's the only one. And therefore we thought it would be a fitting tribute to have him address us today. Judge Supreme Court of Pakistan, Mr. Asfalia, Mr. Umar Suro, Secretary of the Bar Association, Mr. Shahab Saki, President of the Bar Association. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. First, I would like to clarify that though I am here as a judge of the High Court, but not, I would say that officially being nominated by the High Court as I am leader in the IT committee of the High Court, or no member of any such other committees. So I will be giving you my input, whatever I have using of technology at my practice days and then at the bench. And perhaps this is why Mr. Omar Furo has asked me to come. In our days at the bar, we didn't have smartphones or iPads. So normally we used to take our research on the notebooks or the diaries, what you call, or registers. So it was always difficult to trace out the research we have already recorded. So one of my friends was a very expert at that point of time in Microsoft Word and Excel. So he advised me to take all that research onto Excel program. So I started there, and then when for the first time Nokia introduced Microsoft Word and Excel on those gadgets, I started doing that. And since then, now at the bench, I have this iPad and use it for like taking notes in the court. Also for my dictation, I do not have the stenographer with me. Now coming to what Sindh High Court has done in the IT related field and its website, many of you must be aware of that. But briefly, I would explain that the entire system at the High Court started from filing till completion of the case is now computerized and it is on real time. As soon as you file the case, it's on the website. You can always search it with your numbers. You can also have a search on name or word search, and then you can trace out your case. And then it can show you the entire date history, the names of the advocates, the type of the case, and so on and so forth. And that is easily accessible even without, to a certain extent, using any ID or password system. Anybody can access from the website, from your gadgets, whatever you use. And that software has been developed by the IT department of the High Court, and it is named as Management Case Flow Management System, and abbreviated as CFMS. Then there is the introduction of the
adjudication branch, where when you come to the court and file your cases, so you go through a biometric identification, which is linked with NASA, and this has reduced a lot of forged and fabricated cases being filed. Like people were having IDs and come with their copies of the identity cards, and manually they would file a case on your behalf, and when you learn about it, your properties and your things are gone. Similarly, it is also linked with now the departments of the provincial government. As and when you will come and surrender or give any surety, you will be linked to that system, and first your identification would be noted down, the property you are giving or any vehicle you are surrendering for submitting for surety, you will have to first get it verified through the system. Then this website is available in 3 languages, English, Urdu and Sindhi. So anybody can access it. At present, the fixation of cases is automated through this system, and no involvement of any office staff or human work is done. It is all auto-generated, and later on I will explain that why there is difficulty in early dispensation and fixation of cases, though it is on computer. Then there is a system, as you must be aware, lawyers must be aware, that SMS alert and email alerts. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलजार साहिबा के साथ। जिस तरह आपने लाहौर में, आपको पता है कि हमारे विशाल शाकिर जो है वो नहीं पकड़े जाते, जितना उन्होंने इसको ज़बरदस्त इस्तेमाल किया है वकील ऑनलाइन को, जिस तरह उन्होंने वहाँ पर केसेस दिए हैं, उसी तरह गुलजार जो है वो कराची में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और मज़ा आएगा जब वो हमें खुद बताएंगी कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को इन्होंने इस्तेमाल किया और उससे आपको फ़ायदा हुआ। You know, I got interacted with Vishal, फिर सर फंडी हैं, उनसे मेरा जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट हुआ। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक यू नो क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन हम जैसे यंग लॉयर्स के लिए भी, और जितनी भी क्वेरीज आती हैं बिफोर आंसरिंग दैट you know we research, so this actually enhances our knowledge as well. और मैं I really appreciate, और मैं जितने भी मेरे colleagues हैं, young lawyers हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी and I'll ask them to join this community and serve the justice as much as they can. ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे आपके लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली आई है? क्या आप रातों को उठ के नोटिफिकेशन देख रही होती हैं, किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, मेरी बात ठीक साबित हुई, नहीं हुई, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे? क्या इस तरह की चीजें ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हुई हैं? बिल्कुल, मतलब रात में अगर मेरी 3 बजे भी आँख खुलती है और बेटी अगर मुझे मम्मा खाना, एंड यू नो व्हेन आई वेक अप, और जब मेरा पहला जो यू नो आई स्क्रॉल डाउन फेसबुक और उसमें जब नोटिफिकेशंस आ रही होती हैं, वन आई रिमेंबर कि जब एक एप्रिसिएशन पोस्ट आई थी मेरे लिए, एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ लॉट ऑफ लाइक यू नो कमेंट्स, और जो मेरे कोलीग्स थे वो मुझे इस तरीके से कि आप तो बड़ा एक्टिव हैं और आपके तो बड़े लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन एप्रिसिएशन पोस्ट से मुझे बहुत सारे केसेस भी मिले, और इस तरह के कमेंट भी थे कि जो केसेस मतलब हमारे 3-4 सालों से चल रहे थे, गुलजार को हमने हैंड ओवर किया, और इसके बाद यू नो ऑब्वियसली बात है वो एंड स्टेज पे थे, तो वो 2-3 वीक्स में वो खत्म भी हो गए। तो इस तरह की जब पोस्ट आई तो इट एक्चुअली एडेड फीदर इन माय कैप, और इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया, और यू नो नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ माय रूटीन लाइफ। आई रेगुलरली मेरी रूटीन है सुबह कोर्ट जाने से पहले, ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स, इन ऑफिसेज में मेरा ये काम है दैट यू नो आई रिप्लाई ऑन डिफरेंट क्वेरीज जो वहाँ पे आती हैं, एंड आई रियली फील प्लेजर दैट पीपल रियली अप्रिशिएट, और जब मेरे कमेंट्स को
लाइक्स मिलते हैं तो आई लाइक सीरियसली कि मैं जो है वो ग्रूम कर रही हूँ, और बाय दिस मेरे सीनियर्स भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू वकील ऑनलाइन कम्युनिटी. अभी आपका चैम्बर है या आपका घर ही आपका चैम्बर है? मैं एक लॉ फर्म के साथ काम कर रही हूँ. इट्स उजैर एकी गौरी एंड मियां शहबाज लॉ फर्म. सो मतलब दे डू नॉट रिस्ट्रिक्ट मी. मैं अपने प्राइवेट केसेस भी ले रही हूँ, उनके केसेस भी देख रही हूँ. प्लस दे रियली अप्रिशिएट कि जब इस तरह की मेरी पोस्ट आती हैं, एप्रिसिएशन पोस्ट, सो दे रियली अप्रिशिएट मी. तो घर पे भी फिर मोबाइल फ़ोन, इट्स लाइक दी मुझे इतना जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है क्लाइंट्स का आपके साथ, तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं मेरे जो मुझसे मिले भी नहीं आज तक, बट दे हैव ट्रांसफर्ड मी द फी और मैं उनका काम कर रही हूँ. तो दिस इज समथिंग द ट्रस्ट डेवलपमेंट जो मुझे इस कम्युनिटी से मिला है. थैंक यू सो मच. आपके सीनियर्स की भी यहाँ पर तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीनियर्स वही अच्छे होते हैं जो इनकरेज करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी डालते हैं, क्योंकि ये वाहिद तरीका है जिससे सीखा जा सकता है. आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. अगले इवेंट पे दोबारा मुलाकात होगी. आप भी यहीं रहिएगा. इसके बहुत जल्दी बाद हम एक और इंटरव्यू करेंगे. थैंक यू. Yesterday I had a case before me requesting a transfer at Sakha. So when I was looking at it, there were some printouts. I thought these are WhatsApp printouts. So I said to the lawyer that, what is this? He said, sir, I just downloaded this from the website of the High Court and this is the case diary. So the format was like that, but the case diary was there with him of the entire proceedings. So this is all now digitized and available on the website. Now coming to what legal tech can do and assist and rebuild the institution, and so also how this technology can be used more effectively in timely dispensation of justice. So first, I would say that a lot of work has already been done at the High Court level, and now just what we have been seeing that the lawyers are now too advanced with the system, and naturally this is going to improve. The first and foremost, I think, is the record keeping, as Mr. Altaf Qureshi was saying. Now this is a must as well. In our High Court, we are very facing a difficult situation in the space management, and we have started this process of digitizing the records. But there is very strong resistance within the system as well as the litigants, because we are retaining records, especially this High Court. In civil matters, we are retaining records of the people when civil matters they have filed their original documents. So, and the mindset also has to change as discussed here, and not only amongst the litigants but also amongst the bench and the members. वेलकम बैक. अब मैं हूँ डॉक्टर हुमा सोदर के साथ. बैरिस्टर हैं, इंग्लैंड में प्रैक्टिस करती हैं. एक मिनट, अगर हम इसको ये लाइव है. लाइव है? हाँ जी. अच्छा जी. हाँ, लेकिन आप बता दीजिए, बहुत इनफॉर्मल है. जी जी जी. एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू बिकॉज द थिंग इज आपसे इससे पहले कन्वर्सेशन नहीं हुई, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव आवर ऑडियंस, आई मीन इफ इट इज लाइव, a bit of background, which is my background, because the kind of comments I would like to make. Before that, I think the audience must know, for instance, like I am a qualified chartered accountant, as well as I am a qualified barrister, and I have been associated with Harvard Law School as a research fellow, and I was also a research fellow at ISRA, Malaysia, and I have worked in a couple of countries. So I mean, this today's theme, I have to say that I'm really, really impressed, and particularly the initiatives which are being introduced through this forum. I am indeed impressed. However, the only thing which I think the question which I also raised here, that yes, now we can see the initiatives which will be enabling our lawyers, right, to perform better, enabling our law firms, and also we have like initiatives like Parkline, right, and also Vakil Online, which will be enabling and supporting our lawyers in their business development. But my question to the policymakers and also to the judiciary, right, and definitely the government, right, and the lawyers, we ourselves, this is, what about how can we use technology to reform or to bring about reform in our legal system, in our justice system? So for instance, one of the reform in our land records, right, digitization of land records, right, you talk about patwaris
and in sin you talk about pyar kar, you talk about tapedars, right? Any of these officials, right? So like there's a huge, I have to say, that bundle of complaints, and these complaints eventually, right, they turn into civil disputes, civil cases होते हैं, उसके बाद वो खानदानी दुश्मनियां होती हैं, और उसके बाद फिर वो मर्डर्स में चेंज हो जाते हैं, and then अगर उसका एक, because it actually is the root cause of socio-economic problems. A Pakistani citizen, right, either based in Pakistan and even overseas Pakistanis, right? पंजाब में अब एक ओवरसीज पाकिस्तानीज के इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए पंजाब में एक फोरम बनाया गया है, राइट? लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए वेदर वो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ हो, वो सिविल केसेस दाखिल करता है, बाद में दुश्मनियां होती हैं, मर्डर्स केसेस में, क्रिमिनल केसेस में हो जाता है, और उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी है. अब हम एक मॉर्गेज मार्केट डेवलप करने की बात करें, हम फिनटेक की बात करें, ठीक है? सो इन तमाम चीज़ों के लिए अगर हम इवन अपने नेबरिंग कंट्रीज में देख लें, अगर हम यूरोपियन जुरिस्डिक्शंस की नहीं बात करें, तो नेबरिंग कंट्रीज में भी देख लें, तो वहाँ पे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं कि थ्रू यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो जो ब्लॉक होगा वो टेम्पर नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो वो जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जिससे हमें उन चीज़ों में भी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए और ऐसे इनिशिएटिव्स लाने चाहिए. आई एम फ्लोटिंग दिस आइडिया थ्रू दिस फोरम to the and addressing to policy makers, maybe government, maybe our honorable judiciary, lawyers, and definitely young programmers, and we need to join hands and do something कि ये जो इतनी सारी litigation हो रही है, pending litigation का अंबार लगा हुआ है, इसकी जो रूट कॉज जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं, वी नीड टू एड्रेस दोज. और वो जब बेनिफिट, वेदर वो मॉर्गेज मार्केट की सूरत में, बैंकिंग के जो केसेस हैं वो कम होंगे, आवाम को जब फायदा होगा, वो जो बेनिफिट ट्रिकल डाउन होगा आवाम को, ठीक है? वेदर वो सिविल सूट्स आपके कम हो गए, ठीक है, क्रिमिनल जो केसेस हैं वो कम हो गए आपके, या बैंकिंग आपकी इंडस्ट्री या फिनटेक इंडस्ट्री फैसिलिटेट हो गई, वो बेनिफिट आवाम का फील करना और आवाम का महसूस करना लाजमी है. तो उसके लिए आई वुड से कि हम सबको वी नीड टू जॉइन आवर हैंड्स एंड वी नीड टू डू समथिंग दैट वी कैन यूज टेक्नोलॉजी टू रिफॉर्म आवर सिस्टम. And it will be looks like as if, जैसे अभी बात हो रही थी कि सक्सेशन सर्टिफिकेट अब डिजिटाइज हो गए और आप नादरा से ले लें एज अपोज टू एक कोर्ट में जाके एक लंबी प्रोसीजर में जाएं आप, तो लगता है ऐसा है कुछ लॉयर्स के लिए कि जी ये आपकी अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, बट ट्रस्ट मी इट विल एनहांस योर अपॉर्चुनिटीज. आपकी अपॉर्चुनिटीज इससे ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी, बल्कि जो आवाम है अगर वो इस तरह का बेनिफिट आप रिसीव करेगी जब, तो हमारी जो जुडिशल, हम जो जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर हम लॉयर्स हैं, वेदर हम जजेस हैं, वेदर हम पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है? सो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा अपने सिस्टम के लिए भी, और इन इटसेल्फ इट विल बेनिफिट अस एज वेल. बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर हुमा, जिनका प्रोफाइल इतना बड़ा है, जो इतने मुल्कों में सर्व कर चुकी है, उनका भी यही ख्याल है कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे फॉरवर्ड, और इसके अगर कोई नुकसानात या मनफी असरात होंगे भी तो वो बहुत ही कम वक्त के लिए होंगे. इवेंचुअली इसका फायदा ही फायदा है. थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, आपके टाइम का, और यहीं रहिएगा. हम अभी इसके बाद एक और शख्सियत से आपसे मुलाकात करेंगे. Our mindset to litigation. I have come across so many cases at the bench, and my observation is that at least 30% to 40% or maybe 35% are frivolous. And frivolous in the sense that majority of them are for the ego of one person against the other. We have taken this because over here, I don't think the cost factor, insofar as imposition of cost is concerned, is not that as compared to other countries. So we need to look into it that as lawyers also, like for example, in the circuit benches at Sakha and Narthana and Hyderabad, there was a growing tendency of filing of petitions seeking employments on plot donations. There used to be, in older days, a donation of some space by somebody to education purpose or to hospital purpose or whatever. And in lieu of that, the government used to give employment to that person or the owner, like a chowkidar or a guard or something like that. Now that has been abolished by the Supreme Court in 2012. But as of today, still the petitions are filed, the lawyers take it up, they come
and they say, yes, sir, this has been decided, you can dismiss it on the very first day. So this mindset of the lawyers also and the litigation of this nature has to be curtailed, because one case entering into the docket blocks the space of the other. You need to realize it. One application for restoration of a case blocks the computer system with one case. And that one case could be more important for somebody else as compared to your restoration application, which has no basis to be taken up. So this needs to be seen into it. Now, I was talking about the auto fixation system. We have an understanding, or what I call it, like in the days when there were less judges working in the court, there's an understanding with the bar as well that 60-80 cases are to be fixed before a judge. And that is also a very high number. But we have accepted that 50 in the main list and maybe 20-30 in the additional list. Now, out of these 50, 80, whatever number you call it, more than 50% cases are those cases which are not ripe for hearing. But they are being fixed at the insistence of the lawyers from one side, and because of the reason that some urgent application has been moved, and that cases do not proceed, they take up our time in dictating the order. What are we doing? Like 20-30% cases we are doing that the has filed a counter effort, copy has been supplied, this and that. This is wasting our time and the court's time and the time of the litigant. So now, my opinion is that lawyers as association and the bench have to come to some settlement in this system that cases which are not right should not be fixed in court, but before the registrars or the additional registrars or some other place to exchange documents and get them ready for hearing. And this could only be done when we agree to a system. Those of you who know accounting, FIFO system, we call it first in, first out. So what we are doing is last in, first out, and first in, first out. We are not doing anything like that. It's like a discretion of the bench who allows the urgency application or the insistence of the lawyer to take up his case. So on this, we have to look into it, and our mindset, the computers won't help, technology won't help in this. Because what the computer does, it divides the number of days with the number of judges and the total number of cases. So you will get if you go to the website of the High Court and put in your case number, you will get a date of 6 months ahead, or 8 months, or maybe 1 year. This used to be a month or two earlier, now it is up to 6 months to 8 months. And now what happens is, when the 8th month is there, your case is not listed. Why? Because there was no urgent application, the other cases came up in the list, and the 50 number was full, so your case is discharged. So, but we need to understand this mechanism and to agree on this. Then technology, we are talking about technology assisting us in this system. I've just seen that there is some mobile application. I've been using one from India. Luckily, I was subscribed earlier when the credit card was being accepted. These days, it is difficult to subscribe to any Indian website or mobile application. There's Bar and Bench. There is one mobile app. Must have seen it. It's very informative, and we need to have one on that pattern over here that on daily basis gives brief about the orders passed all over India in the high courts and supreme courts, and then there are next copies also with that, and a lot of information for lawyers, for employment, and for interviews and articles and research papers. So this kind of this one is good, but this is like looks like it is benefiting only the lawyers and the new ones. Then lastly, coming to what Pakistan law side is doing. I don't know, many of you must be using it, and the experts have devised mechanism how to copy judgments from that website. If you go normally as a layman, as a new man to that website, you can't copy that. I asked my personal secretary to do it. He said, sir, आपको Google Chrome में जाना पड़ेगा, फिर JavaScript को undo करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर आप copy करेंगे, फिर copy paste होगी. I said, yeah, this is my judgment, and he says the copyright protected. My own judgment, I am the copyright holder, I can't copy it. So you need to come out of this, please. In this world, Pakistan law side is the biggest law side, or perhaps the only law side which is helping people, and in this manner. So I don't think this technology would work anymore.
we need to do something, lawyers and judges as well. As to the government, Mr. Murtaza Wahab has gone, and he said that the laws have been digitized on that. I have not come across that. If that is so, it is very good, because recently I was deciding a case in Sakkar, and there for 1 year, so I've taken up old cases. So a 40-year-old case before me. It had a land dispute, so we have this West Pakistan Land Revenue Act when Pakistan was one province and then East Pakistan was the other, and then Sindh province introduced its own laws. It was so complicated, I can tell you I couldn't get the actual law in my hand. It took me 10 days, but I was not able to lay my hands on the actual law prevailing at that time 40 years back. One case came before me. The publishers over here, they are publishing books which are, I should not say, but they are rubbish. They have published the bills introduced in the parliament before becoming acts, and they say that these are the acts. A lawyer came before me with a company petition when I was sitting on the original side, a winding up petition. So I said, what is your ground for winding up? He said, section 439 or whatever, clause E. I took out the book. I said, read it. When he started reading, E was something else before me, and before him it was something else. I said, this is not the law. He said, no, this is the law, this is my book. He showed me the book. It was written in Companies Act 2017, and it had a clause which he was reading. So when I reconciled from the library, it transpired that that book was a book from the bill which was introduced, but was never passed as an act. Now lawyers are being assisted with published books in this manner, and they are assisting us with these books, and God forbid when we pass judgments on that, what will happen? So we need to look into it. This publishing industry perhaps needs to be revamped or whatever you call. So one lady asked a question about some property things. Yes, it is very necessary. We need to have some title companies over here or some departments from where you can search that what is the status and ownership of the property. Every person coming to court has 2 documents leased by the same government department. And then we are asked to decide cases on the basis of evidence. There was one case, a person had leased in his favor, the other one, the defendant and the plaintiff, both by KMC. So I called the registrar who had leased that document or registered the document. So he said, sir, this one is the genuine one, and this one was on the gunpoint. This was his answer to me off the record. So this is a state of affairs, and then courts are being burdened with this litigation. So these property records, these departments of the government, they need to like centralized. Even federal government as well as provincial government, they need to centralize these and use this digital age and this technology. So the burden would be lessened on the courts. No disputes would be coming in this manner. Something for like new lawyers over here. Don't spend your time in the bar rooms, please. Go to vote for Mr. Sumro, but don't waste your time over there. Go to library, use your gadgets, study. That's a very important thing, because now you are equipped with these things. You don't have to carry books. So start studying from day one, and don't go to the bar room to have tea and gupshup. Keep your research, keep your things with you. They will always help you in your entire life. And then there is one very important thing. Care for your reputation. Don't mislead the court with distorted facts. Client could say a lot of things. You can argue on law as much as you want for and against, but you can't do that on facts. And once you are caught with this, there are many lawyers I can tell you who have seen lying on facts, and I have always got a very strong eye on them whenever they come with a new case. So you develop your reputation. We trust them. We don't read the entire file when we are hearing you. We trust a lot, and if you start going into these distortion of facts and misleading the case and then telling lies, so that will not add to you. That will not add to your reputation. You will always find difficulty in your future. So with these words, I once again say thanks to all of you. And lawyers, please treat this as a profession, not as a business or trade. This is looking like a trade, but don't go into it.
Thank you, Justice Junaid Ghaffar Saab, for an insightful address. I will now invite keynote address from Mr. Justice Mansoor Ali Shah. The last time he addressed us at the Sindh High Court Bar dinner, the annual dinner, people were raptured and they still speak of him, and I am grateful for him for taking time out and coming here straight from the airport. Kindly, can you have him? Thank you, Shah Sahab. मेरी किस्मत कुछ ऐसी है कि एवरी टाइम आई कम अप टू द रोस्टर वो खाने की तैयारी हो गई होती है एंड एक अजीब सी कैफियत मुझे चेहरों पे नजर आ रही होती है कि इसको सुनना है या खाने के लिए चले. So once again I'm landed in the same situation, but you have to bear with me for just a short while. Just want to share a few ideas with you. Justice Junaid Ghaffar साहब की तो मुझे बातें बहुत अच्छी लगी. I am so impressed. He has such a good handle on the system. I'm very impressed. I work with a number of judges, but the way जो उनकी depth है, उनकी जो understanding है, मुझे बहुत खुशी हुई है. And I'm sure Sindh High Court is in a very good hands. Let me just settle down here. So you see, let me start off by saying that nothing is more powerful than an idea whose time has come, says Victor Hugo. और मेरा ख्याल टाइम आ गया है टेक्नोलॉजी को जस्टिस सिस्टम को ड्राइव करने के. I mean, there is no backing out. Just technology is already there, and technology को हम इससे पीछे नहीं हट सकते. हमें आगे ही ले जाना है. Justice system, to my mind, cannot function anymore without technology. इसके बगैर आगे चारा ही नहीं है और हमें इसको समझना है और इसको आगे लेके चलना है और बढ़ाना है. I'm actually so impressed with the young crowd here. I feel so refreshed, frankly, after seeing those 3 presentations. So rejuvenated कि मेरी तो भूख ही चली गई है. तो I'm sure आपकी भी चली गई होगी और आप मेरी बातें सुनेंगे कुछ देर. I'm genuinely very impressed with all this that's happening here, and this forum, T4JF, which is bringing everybody together. I'm very happy. हमारे टाइम्स में ऐसी बातें नहीं थी और मुझे बहुत खुशी है कि ये हो रहा है और ये होना चाहिए. इसमें और टेक्नोलॉजी आनी चाहिए और सोच आनी चाहिए और आइडियाज आने चाहिए. मुझे I got the chance to look at some of the apps that are there now, which this forum is also promoted earlier. For example, quoting the law, Qanun Dan. Let me name these because I'm very impressed with them. Insaf Camp, Muhtasib PK, then Vakil Online, which you just heard, Benchbook PK, GatherSense.com, Lawher.pk, which is about women and the lawyers, Law Practice, which you just saw, PakSign.pk, और इसकी तारीफ में मैं नहीं जाता. Everybody is doing and putting in a contribution, which is very good, and this is absolutely encouraging. लेकिन मैं जिस एंगल से इस चीज को देख रहा हूँ, the Supreme Court or as judges and having looked at the system and having looked at reforms for some time now, मुझे लगता है कि these are appetizers, you see, and we've missed out on the main course. Main course बड़ा जरूरी है. ये सारे जो apps आप देख रहे हैं and all these things that we're talking about are actually going to bring people to the courthouse. Dispute resolution system हम चलाते हैं ना, justice system is dispute resolution system, and you're bringing people to the courthouse. ये सारी चीजें वकील आपको मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स होंगे, उनको पता चलेगा, नेटवर्किंग हुई है, अवेयरनेस हो रही है, people are finding about their rights. So what will happen? This will generate litigation. Has to. People will find out about their rights, so they will go to the courthouse. The whole story is how to make the courthouse more efficient, more smart, more intelligent, you see. So that's the story. To me, courthouse/justice system is the same thing. Courthouse को कैसे effective करें? वो जो 20-20 साल से मुकदमे पड़े हुए हैं, चलते नहीं, और it's a cliche now, the generations are lost, कि मुकदमा शुरू हुआ और खत्म नहीं हो रहा. ये सारी जो एप्स की हम बातें आज कर रहे हैं, ये लोगों को कोर्ट हाउस में लाएंगी. कोर्ट हाउस का क्या करना?
And that's what I want to request all these young brains here, innovators बैठे हुए हैं, venture capitalists बैठे हुए हैं, technologists बैठे हुए हैं. The next generation is here, full of ideas, beaming with ideas. हम लोग I mean, we've had our years, but आप लोगों को देखते हैं तो बहुत energy नजर आ रही है. And this energy needs to be harnessed. And my request today is, let's start looking at this courthouse, which deals with the life of an ordinary person. वो आम आदमी जो जाता है वो कोर्ट हाउस में जाता है और उसको कैसी सहूलत दे सकते हैं उसके बारे में मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ. हम ये भी क्लीशे सुन के तंग आ गए, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, but बहुत टाइम हो गया है. We need to move on and try to sort of reconfigure this and remodel the way courthouse has to function. And I want to share some ideas on that with you. So what's the ultimate purpose? हम इस सारी एक्सरसाइज क्या करने निकले हुए हैं, किसके लिए करने निकले हुए हैं? एक हम चाहते हैं कि the justice system, yeah, I keep repeating the courthouse as a term, इसको हम efficient, affordable, intelligent और smart बना सकें, efficient बना सकें, जल्द से जल्द फैसले लोगों के हों. इससे ये one single objective मेरी नजर में है. As far as my time on the bench is concerned, I have one agenda, and that is that a case that starts off at a trial court must end at the Supreme Court maximum 6 months. But chale, abhi initial phase mein 1 year. You do this and the country is going to change. It will revolutionize Pakistan. If you start off at a trial and you finish with the Supreme Court, you're out of the justice system. Do whatever you want to do then, but you're out of the justice system in 1 year. Take this as one agenda reform and life will change. Country will change. Because जब justice होने लग जाएगा ना, जब हर इदारे को पता है कि accountability होगी, हर एक को फैसला मिलेगा, within a week, 10 days, 2 months, फैसला हो जाएगा, सारी चीजें अपनी जगह पे आ जाएंगी. Every institution will start functioning in accordance with law. We have the wonderful constitution here. We have wonderful laws here. We just need to put them to practice. And if there is proper accountability, and the only place you have accountability is the courthouse. So courthouse has to function. और आपको फैसले मिलने चाहिए जल्द से जल्द. जब ये शुरू हो जाएगा, सारा मुल्क ठीक हो जाता है. मेरी नजर में कोई फिक्र ही नहीं है. So that being the objective, and the second objective is that we're trying to do this not for a commercial reason. I mean, I'm sure there's money attached to all this, which is very good for you. But I'm more into the social impact. You see, that's where I come from. My background is not about money, and I'm not about talking about money. Money will come to you if you come up with these softwares and applications and all that. What matters to me is, are we changing the life of the person, a Pakistani? कि जिंदगी चेंज हो रही है सारी, वरना तो सब अंग्रेजी है. अगर ये T4JF and all these applications are not changing the life of an ordinary Pakistani who wants to come seek justice, we failed, obviously. We failed. So हमारा objective ना भूलिएगा. Whenever you sit down to draw up or design or go to the drawing board and try to design whatever app you want to do, please think that you're doing this to make sure that an ordinary person gets relief. An ordinary person who does not understand all this is not probably here. We're doing all this for a person who's not here. जिसके लिए हम ये सारा सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए उसकी जिंदगी में चेंज आनी चाहिए. So whenever you're measuring this system that you're coming up with, when you're evaluating the system that you're coming up with, make sure that it actually changes the life of a person. वरना उसका कोई फायदा नहीं. I am the last one to talk about profiteering out of all this. I am into it because I think it will change the life of people. That is important. Having said that, you see, let me just take you कि करना क्या चाहिए. एक assumptions 2-3 दिमाग में रखें. I'm talking about to all these young innovators who are going to be designing things, and you know, all these successful lawyers are sitting here and their minds are required. जो senior lawyers भी बैठे हैं, इनके ideas चाहिए, इनका experience आपको लेना है. But I'm addressing the young, you know, techies as the word goes. आपको ये समझना है कि when I talk about the courthouse and I'm presenting a problem to you, I'm doing this to all the startups who are sitting here, to all the venture capitalists who are sitting here. कि ideas क्या है, change क्या करना है, देखना किसके लिए, अगर उसके लिए कुछ ऐप बना सकते हैं, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो बनाइए. और वो क्या है, वो कोर्ट हाउस है. लेकिन कोर्ट हाउस की कुछ assumptions और problems मैं आपसे बयान कर दूं जो हमारे सामने हैं. Litigation all over the world is sluggish. This is a given fact. We need to change that, but we have that assumption in mind. It is sluggish. Lawyers and judges and the system itself is
very conventional. They're not open to change. I felt that in the Lahore High Court when I was the Chief Justice. I had a big problem making a change management. Change management is an area you need to be very careful of. Change doesn't come so easily in the legal sector because vested interests पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा vested interest हैं. We wanted to bring in an enterprise system at the Lahore High Court, and we faced problems from the bar. We were bringing a system which was far more transparent and efficient. The bar said no, there was a problem, whatever they opposed it. Whatever could be the reasons, but there were vested interests को दिमाग में रखिए होंगे. There are mafias here or there operating who want the system to go on the way it is going on. You have to break that. Keep that in mind also. These are some of the assumptions or the factual positions on ground which you must keep in mind before you set out to design a new software or system for this new courthouse that we're talking about. Confidentiality and security issues are very important. How would a private sector company come forward and start talking to us? There are confidentiality and security issues. We need to sort of look at that. But overall, it is the transparency and openness which affects a number of people, and that you must keep in mind. You must keep in mind that we're talking about 2.2 million cases. अब जब courthouse का मैं आपको ज़रा area और quantum बता दूँ. We're talking about 2.2 million cases in this country. We're talking about 200,000 lawyers in this country. We're talking about 5,000 judges. And if you just say 2.2 million cases हैं, अगर एक party भी है दोनों में, the 5 million people are accessing the courthouse, because अगर एक party भी है, then you're talking about government, then you're talking about statutory organizations. You can imagine millions of people, not to mention the staff and the court people who are working behind the court. So thousands and millions of people, in a way, are accessing this courthouse. And how could it function manually? It has to move on to some technology, some very smart technology. Otherwise, that ordinary person who's accessing this system is not going to get any relief. So this background is important. So now when we start off, we see what are the areas. The first of all, सबसे पहला जो चीज है, वो court room तो कभी देखें जाके आप. Have you seen a court room? Is that here? क्या उसका furniture, उसका हालात देखें. Is that a courtroom equipped for the modern technology, for the modern world? Does it have internet access? Does it have monitors? Does it have video linking system in it? Does it have the state-of-the-art technology embedded in the courtroom? We don't design courtrooms like that. Our courtroom is a कमरा बना दो, 4 कुर्सियां रख दो, ये courtroom है. So पहले तो infrastructural design को जरा देखें. And if anybody could propose things, I'm all ears. Because we need to get ideas and share ideas amongst ourselves. I think the courtroom, first of all, needs to change. Go have a look at courtrooms outside, how tech they are. You see how deeply the technology is embedded in the courts. So our court structures, and I'm not talking about the Supreme Court or the High Court. Will there be problems there? I'm talking about the trial court, the civil court. जिधर सारे मुकदमात हैं हमारे. So first of all, जो भी यहाँ लोग बैठे हैं सोचें कि how do we change, redesign, refashion, remodel our courtroom. पहले तो वो देखने वाली बात. Second चीज, let's get into this e-justice system की हम बात करते हैं. What do we mean by it? We need to start thinking that every time a case is filed, we start capturing as much as we can from out of that file. We need that data. बिल्कुल सलाउद्दीन ने सही कहा. Data का अभी हम उस phase में हैं पाकिस्तान में. We do not have data. I cannot sit down and make a strategic decision in my court. What is the reform that I want? I don't have data. I have data which is dependent on this manual information that is sent to me from here or there, and I can't check its veracity either. So हमें पहले तो ये देखना है कि आप data capture क्या करते हैं. You need to start capturing things like age, ये औरतों के केस हैं, बच्चों के केसेस हैं, कंपनी का कौन सा केस है, उसके अंदर फाइन ट्यूनिंग करते जाए. You need that data tomorrow to understand what kind of cases do you get, how many cases do we get in a particular district on maintenance, why are we getting these many cases in Sindh, why are we getting so many cases on this particular area, and then we can sort of talk about reforms and say कि Sindh में ये problem क्यों आ रहा है, पंजाब में ये problem क्यों है. That will only come out of the data. So data कहाँ से आएगा? The minute you start filing cases, which is we talk about e-filing now or e-justice system, whatever you may call it,
let's start capturing more data. We have a very basic linear data capturing at the moment. As soon as the case is filed, we need to expand on that. Once we have that data, then we can start playing with it. We can start looking at what categories to make, and then we go into the area of case management, which I'll talk about. वो statistics हमारे पास आएंगे और हम आगे चीजें कर सकते हैं. एक और चीज हो सकती है कि what is the question of law this case is raising? I'm talking about High Court and I'm talking about Supreme Court. AI का आना बहुत जरूरी. It hasn't come to our courts yet. Artificial intelligence must look at this case before the judge does. And the court and the AI could tell us, actually can tell us that sir इसमें ये text reference का case है, ये question है, ये case law है, 4 दफा decide हो चुका है पहले इन फैसलों में, ये सारी जज साहब के सामने आ सकती है. I don't think it's rocket science, but that system has to be developed. So before I get to the file, the AI has told me what's the question. This has been decided, sir, 10 years ago. This is the judgment. This is the question he's raised. Beyond that, I will apply my mind, of course, but this work is done. I'm just on the ball as far as the case is concerned, rather than getting to this point after hearing arguments for 1 hour. See, so I think AI could start reading files, start giving us a sense of our jurisprudence, कि क्या-क्या हो चुका है, कैसे क्या उसका आंसर होता है, उनके मुताबिक क्या बन रहा है, अभी तक existing jurisprudence इसको कैसे आंसर कर रही है. I don't think it's rocket science, but I'm quite sure these young innovators sitting here, who are probably waiting for dinner, but can do this, and they can easily come up with something this exciting if they can. उसके बाद अगली चीज क्या जरूरी, हमें बहुत जरूरी न्यूट्रल फिक्सेशन ऑफ केसेस की तरफ भी जाना है, और इस पर भी इस्लाउद्दीन also touched upon it. I'm happy that he did. कैसे केसेस लगने हैं, कैसे फ्लो होना है केसेस के, किस जज के कौन सा केस जाना है. Come on, we're talking about a transparent system. We're talking about openness. हमारे सिस्टम में कोई चालाकी नहीं हो सकती, और कहीं किसी सेक्टर में होगी. The first sector that has to start without, which has no चालाकी in it. It has to be straight according to law. हमने openness लानी है, transparency लानी है. हमारा टेक्नोलॉजी से बेहतर और क्या ट्रांसपेरेंसी का तरीका हो सकता है. किसी का ओवरराइड नहीं है, किसी के बीच में पर्सनल डिस्कशन नहीं है. The computer generates the list, looks at the strengths of the judges, marks the cases automatically. किसी को कुछ पता नहीं कहाँ केस जाएगा, because we've already fed that in the system. We know who does criminal, who does tax. The cases will go automatically. कोई सिफारिश नहीं, कोई किसी के पीछे दौड़ना नहीं. That breeds corruption. So the minute the technology इससे अच्छी और क्या advantage technology का हो सकता है. I think we need to start bringing in that neutrality in fixation of cases, in making your benches, in constituting things. सब कुछ ये सारा टेक्नोलॉजी ले सकता है. हमारा सर दर्द ही खत्म हो जाता है. We just don't get into it anymore because we just fed it into a system, and the system looks at it. सब कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये कैसे बैठ गए, इनको क्यों चला गया केस. सारा सिस्टम चल रहा है. ये सिस्टम हमने बनाया हुआ. Cases are being marked. Of course, the Chief Justice in any court would have the override available for any particular matter, but generally we need to look into that. ये जरूरी है. उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड आना चाहिए. लोग परेशान हो जाते हैं, हमारा केस उधर लगा, खारिज हो गया, उधर मिल गया तो उसको बेनिफिट मिल गया. ये सारी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको सिस्टम में लानी है, तभी ये फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तभी पब्लिक कॉन्फिडेंस आपका जस्टिस सिस्टम में आएगा. पीपल नीड टू ट्रस्ट यू, एंड दे कैन ओनली ट्रस्ट यू इफ देयर इज fairness in the system throughout, and that can be achieved through technology. We don't have to worry about it. अगला जो इशू बहुत इंपॉर्टेंट है वो सर्विस ऑफ नोटिस है. आपको पता है कि जो सिविल कोर्ट में केसेस हैं, सर्विस ही नहीं हो पाती. एंड आई थिंक Gafar also touched upon bailiff law. The question is, how do we, what technology? हमने कोशिश की, हमने कहा मोबाइल फोन दे देते हैं bailiff को, और वो हम GPS पे उसको मॉनिटर करते हैं, गया कि नहीं गया साइट पे, did he go down to that village and did he serve the notice or not, did he take. हमने ये भी कहा कि आप फोटो ले लें उस आदमी का, वो फोटो भेजें. आप कभी देखें सर्विस रिपोर्ट जो अदालत में आती है सुप्रीम कोर्ट तक, इतना लंबा कुछ लिखा होता है, हमें वो मिला आदमी, वो पता नहीं उसका बेटा था, वो नहीं था, वो पढ़ते रहते हैं थोड़ी देर हम. Why can't it be a digitalized proper format as to what happened at that place, a checklist, and off we go, you see.
We need to know that the bailiff actually moves out of the court. आपको पता है कि bailiff does not move out of the court. He just sits there and does this exercise. He has to move. Technology can move him. So please think of a technology which helps us achieve service of notice. Because दिमाग में रखें, we want to finish this case in 6 months from trial court to the Supreme Court. We need to finish, attend to all the gaps in between. ये सारे छोटे-छोटे gaps हैं, मुझे आपके सामने बयान कर रहा हूँ. ये छोटी-छोटी चीजें बीच में ठीक करेंगे, then you make it speedier, the whole system. फिर आप आए जी evidence की बात हुई, इस पे भी this was echoed earlier. अब evidence की recording बहुत देर लगती है. But where is the speech writing software? Why hasn't it reached the courts? Everybody's talking about it. I personally have known about it, but why isn't it getting to the court? Why can't the witness just speak and it gets recorded, it gets transcribed into whatever text that you want? Why can't we have a speech writing recording system which is in Urdu also, which is in any other dialect that is being, practiced in our country? That is another huge contribution. Innovators sitting here and all the technology sitting here, this would be a huge, huge benefit to the justice system if we were to start recording everything. The guy speaks and it gets transcribed. It will save so much court time that is unbelievable. और गलती भी खत्म. वो जो अपनी अंग्रेजी उसकी बनाते, so we need to have a standardized software for translation, and that will look after a lot of problems. इसी तरह judgment writing. A judge could just start talk. We dictate judgments. Why can't they just be immediately uploaded? एकदम वो speech writer से हो जाए और उसके साथ ही मसला खत्म हो सकता है. I'm talking about हमारा जितना मसला नहीं होता जितना हम ट्रायल कोर्ट की बात कर रहे हैं, because of the poor human resource support that they get. उनके और बड़े मसाइल हैं, तो उनको ये क्यों नहीं मिलता? Why can't they sit and do that? So I'll be very, I'm just asking you that if we can't come up with a speech writing process which could be given to judges who could improve this. While judgment writing also, Grammarly का आपने नाम सुना होगा. Why can't we have something like this for legalese के context में? Why can't our judgments be checked by a software? There are mistakes, there are terrible mistakes, and that's embarrassing for the system. So आप सोचिए, why can't we have a Grammarly PK or whatever, which is looking after Pakistan, which is looking after legalese, you see, which is very important. I think we need to have perfectly, proper judgments that come out of the system. Then, of course, the age-old, हम बड़ी दफा इस पे बात कर चुके हैं, is the case management system. वो बहुत जरूरी है. हमें इस पे जुनैद साहब ने भी बड़ा जिक्र किया. Case management एक बहुत बड़ा area है, and it will be hugely beneficial for the system अगर आप में से कोई केस मैनेजमेंट को देखें. केस मैनेजमेंट का ये मतलब है कि एक अदालत में 50 केस लगे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, 5 केस उसमें से हुए हैं, लिस्ट इतनी लंबी है, ये ठीक नहीं है. There has to be a mechanism which looks at what is the capacity of the judge, what is the weightage attached to that particular case. कुछ बेलें होती हैं, कुछ अपीलें होती हैं, कुछ सिविल के अपीलें होती हैं, सब एक लेवल के केस नहीं. It requires more time, so you need to add weightage to cases and see a basket not to be prepared every day intelligently, which the judge has to be given, so that he can walk through it or go through this cause list with some sort of more clarity and speed, and he achieves something. इन चीजों पे काम होने वाला है. अभी रैंडम केस लग रहे हैं, इतने ये लगा दे, इतने लगा दे, ये नहीं. उसके अलावा क्वेश्चन ऑफ लॉ सिमिलर होते हैं. You can make batches, bundles, which happens, but it happens once in a while. The system must generate that. It should not be that the additional registrar, the deputy registrar of the court sits down and starts searching for those cases because the chief justice got interested in that matter. No, the system must provide it. The system must generate cases like this. कि केसेस लगने कैसे हैं, वेटेज के मुताबिक, कैटेगरी वाइज कैसे लगने, जल्द चलेगा सारा सिलसिला. इसको सोचना जरूरी है. If there is a nice software, there is a nice application, that will be wonderful, which will start making the court more efficient. Then we're talking about research. There can be no judiciary in any country which has no, a platform for research that supports its jurisprudence. Research is so critical. Because ये जो हमारा पेशा है, justice sector जो है, it's all about ideas, mind you. That's how I've understood. It's all about new ideas, fresh ideas. You can't go in circles. मैं PhD पढ़ता रहूँ, सारा दिन PhD पढ़ता रहूँगा, तो मैं उधर ही खड़ा रहूँगा. अगर आपने flight लेनी है, you have to look at the world. You have to see what are the new things happening. How will that come to you?
You're working on 100 cases a day. When will the judge going to read anything new? When does he get time to do that? So research center important. We need to start developing. We've done that at the Supreme Court, but we need to expand it. We need to have it at every tier. I think Sindh High Court also has it, but we need to expand this. For that, we also require, हमारा LexisNexis चलो एक search engine हमने ले लिया, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ सोचना है कि how could we put together research? You see, I think the bench book which I think one of the innovators like Justice Project Pakistan ने बनाया है, उसमें भी human rights के cases का उन्होंने resource इकट्ठी की है. इसी तरह we need to think about our own culture and see what can we do which helps our trial courts and others. Another idea which is very important, अगर आप बना सकते हैं, हमारा ट्रायल कोर्ट कहीं बलीर में बैठा हुआ जज है, कहीं चिन्योट में बैठा हुआ है, कहीं फैसलाबाद में बैठा हुआ है. We can't give him libraries and he can't be reading what's happening at the Supreme Court in US or Supreme Court in UK or South Africa or dignity rights पे क्या development हो रही है उसको नहीं पता चलेगा. He doesn't get the time. He probably is connected to the internet, but not. He doesn't have any system or a platform through which he can get there. So one suggestion could be that why can't we come up with tablets which किसी का tablet iPad दे दे, आप उनको iPad दे दें. There is a big research center in the back which is giving them all sorts of information. एक judgment लिखा है बैठा कहीं, वो कहते हैं जी मुझे information चाहिए, murder के ऊपर मुझे ये चीजें चाहिए. 1 minute से उसको सारा research center feed कर देता है. He also through that tablet has access to the world through internet. He doesn't need libraries anymore. We need to start thinking of that. ये districts में आपको पता है कि जो law journals आते हैं, ये 4 महीने बाद पहुंचते हैं जिलों में. क्या फायदा उस वक्त तक कितने फैसले हो गए होते हैं. So it's about time that we move on to tablets, move on to e-libraries in the hands of the judges. जिस तरह ये वकील ऑनलाइन हाथ में कानून है, उनको भी हाथ में कानून दीजिए ना, जजेस को भी, कि वो आराम से फैसले कर सके और बेहतरीन फैसले कर सके. So इस तरफ सोचना है कि how do we bring research to the courtrooms? It's important. And what kind of an app do we develop? What kind of a tablet we can give to judges who are not dependent on any other source? जैसी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है, उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, उसी दिन एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट में, एंड ही रीड्स द जजमेंट. ये कहना कि सर अभी आपकी जजमेंट आई है, रिसाले में छपेगी, तो 6 महीने बाद मेरे तक पहुंचेगी, तब तक पता नहीं कितने वो फैसले कर देगा. So and the minute he has a tablet, you can start, he's bound to then read it because he'll get a notification of the judgment, he'll get it. उसके साथ साथ ट्रेनिंग बहुत important. So the technology will help train judges sitting where they are. These academies, these are physical structures in a post-COVID also. Physical structures are gone. And we don't need judicial academies where people are brought in from all over Sindh or all over Punjab and आप लाके 15 आदमी बिठा देते. कुछ जरूरत नहीं. You can lecture, you can train the whole Sindh through an app. You see, by using internet. इंटरनेट का इस्तेमाल करें. It should be deeply embedded in the system. आप उसको इस्तेमाल करें और उनके इसी टैबलेट के ऊपर कोर्सेज कराएं, लेक्चर्स दें आप जजेस के लिए. मैं जजेस की बात कर रहा हूँ. This can happen to the lawyers. उसमें तो फर्क नहीं पड़ता. आप जजेस के लिए प्रोग्राम बनाएं, उनका स्कोर कार्ड बने. They go through training program on the web, tablet. Every evening that they're free, they can listen to lectures. They can, groom themselves, quality padhaye apni. Why do they have to get selected and come to the Sindh Academy 6 months for 10 days? When they come to Sindh, वो कराची देखने लग जाते हैं बेचारे. वो बड़े अरसे बाद निकले होते हैं, उनको वक्त ही नहीं मिलता. So I don't blame them. वो बेचारे अगर कहीं से उठ के आए हैं तो छुट्टी मनाने लग जाते हैं. So it should not be like this कि आपने ट्रेनिंग एक दिन आके करनी है. Training must be daily. You see, it just becomes part of your life. You see, you're getting trained, you're getting educated, you dedicate an hour every day. That's what the theory is. You must read 1 hour, something which you don't do every day. You should do that. That's how you are fertile, and that's how your brain sort of develops. आपको वैसे भी 1 घंटा बस अकेले बैठ के कुछ और पढ़ना चाहिए. हमेशा ऑडिबल लगा लें, कोई और चीज लगा लें, कुछ पढ़ें, कुछ नई चीज देखें. That's how growth takes place. So research is another area. Connected with this is the forensic science library, forensic science. हमारा criminal justice system is still stuck on वो 2 बंदे ने देखा हो कत्ल होते हुए और एक बस हमने देखना है कि जी उधर कोई ब्लड मिल गया है और ये चीजें, उससे आगे हम नहीं जाते. अब हम Supreme Court has advanced that and moved on to DNA being the gold standard, and we are saying that the forensic science needs to come into the courtroom.
We need to understand this technology. We need to have fingerprinting, genome editing. We need to talk about, all sorts of other technologies that are there. वो उसकी मदद करें कि forensic science को कैसे develop करें. You will see there will be a revolution in the criminal justice system जो अभी तक बिल्कुल किस सहारे पे चल रहा है, बयानात पे लोगों के, जबकि दुनिया में science पे criminal cases की decisions हो रही हैं. So we need to move on that. So I think technology, criminal law and forensic science needs to merge, and I think this forum is ideal and people need to bring that idea into it. उसके बाद आप ये देखते हैं कोर्ट फी जमा हो रही है या बेल बॉन्ड जमा हो रहे हैं या कोई और सिक्योरिटी, इसका भी सोचा जाए. आई एम श्योर ये फिनटेक का जो लफ्ज है, जो भी दुनिया है, आप इसको सोचें कि रोजाना अदालत में पैसे जमा होते हैं मुख्तलिफ तरीके से, खत्म करें स्टैंडर्ड चीजों को. Why can't we do it through an app which is actual banking transaction, which is actually more secure rather than things which are fake and presented to the court. तो इसकी तरफ भी ख्याल जाना चाहिए. अब हमारा जो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे पास डेटा नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा. एक चीज जो I think once again somebody touched upon it earlier, technology can help collect data on lawyers. I should have an application. Suppose हमने elevation करनी है हाई कोर्ट में, तो एक तो ये है ना कि इसका पता है, इसको देखा है, इसको जानते हैं, चलेगी, हमने हमारे सामने पेश हो. But I think why can't we make it more transparent? अब बरतानिया जब people apply, they say we could be a judge of the high court, their application is made and they look at the application. So why can't there be an app which has data of lawyers, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी क्या judgments हैं, क्या है, and we can just, the system could look at them, you see, and that would help us elevate perhaps one of the best judges, one of the best lawyers who could be, doing work elsewhere. So data collection is important, और मेरे ख्याल में ऐसी भी कोई ऐप हो सकती है जिसमें lawyers के बारे में डिटेल्स हो, जो हम देख सकें कि उसने कितनी जजमेंट्स उनकी रिपोर्ट हुई हैं, कितना उन्होंने काम किया, किस एरिया में काम करते हैं. This is helpful. If not, that would not be the solitary factor, perhaps for elevation, but would be very useful. So technology comes in handy in doing that. Similarly, you could do that for judges also. I mean, judges need to, you could have data on judges, what judgments they're coming up with. That's access. You see, people get to know what the judges are doing, what kind of judgments they deliver. That is another data system that can be developed. But what I'm coming to is, देखिए एक बांग्लादेश ने शुरू किया कि सिविल सोसाइटी में उन्होंने देखा कि कैसे कोर्ट में केसेस अगर स्लगिश है, बड़े केस नहीं चल रहे तो उसको मॉनिटर करना शुरू करें. तो उन्होंने ये कहा कि ये केस लगा था, अखबार में लिखने लग गए कॉलम, ये लगा था, ये फिर नहीं लग रहा, ये क्यों लेट हो गया है, बस सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं. And everybody started watching why things are slow, and then that sends a message to the judiciary also कि इस तरह नहीं होना चाहिए. So अगर हमारा सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर बने, सिविल सोसाइटी starts monitoring important cases or all cases कि एडजमेंट्स कितनी हो रही हैं, क्यों ये डिले हो रहे हैं केस, ये लगा था, ये क्यों नहीं आगे चल रहा, आज फिर डेट हो गई है. There has to be some sort of a reaction कि किस तरह आपका जस्टिस सेक्टर डिलीवर कर रहा है. अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं है तो everything becomes, you become very complacent and things get, they don't work. So active civil society through technology can start monitoring us, and I'm saying that monitor us. Look at what we decide, how long it takes us to decide, how long is my decision pending. Yes, I think you have the right to ask me, कितने अरसे से ये pending पड़ी हुई है, क्यों नहीं decide हो रहा? Not in so many words, but through technology, you can start raising these things, which would be important, a good check on the judiciary also. Uske saath saath, for the lawyers, I think there has to be an app called adjournment.com or something. Adjournment is 80% of the problem in our justice system. अगर World Bank की जो report है, उसमें 80% adjournments का एक sluggishness को जो add करता है, तो इसके बारे में कुछ करें. आपस में करें इस बार, but there should be some technological answer to this. Why can't we start tracking the case and see why is these adjournments going on? Why can't we start flagging cases जिसमें adjournments 10 से ज़्यादा हो जाती है? Why can't there be a portal showing this? जितनी आप openness करेंगे ना, तो ये चीजें नजर आएंगी, ये पता चलेगा, क्योंकि किसी को कहने से तो adjournments खत्म नहीं हो रहे. बाहर से भी बात कर ली तो हर एक के अपने मसाइल हैं, नहीं खत्म हो पाते. लेकिन पब्लिक जब तक ओनरशिप पब्लिक में नहीं जाएगी, पब्लिक इसके बारे में बात नहीं करेगी, ये चीजें कर्टेल नहीं होंगी. So one idea could be that there's an app about adjournments that sort of tells people what's happening,
वो होना चाहिए। और इसी तरह जिस तरह नोटिस हम भेजते हैं, अखबारों में भेजते हैं, पब्लिकेशन देर लगती है, वो नोटिस के पॉइंट पे में से रह गया था, उसमें आप एक पोर्टल भी बन सकता है, ऑनलाइन पोर्टल विच इज वेरी इनएक्सपेंसिव, लाइक zameen.com ऑफ जस्टिस सिस्टम, जिसमें आप अपना पोस्ट करें कि जी ये अखबार इश्तिहार दिया, मतलब अखबार इश्तिहार की जगह वो हो जाएगा कि पब्लिकेशन हो गई है, the person must come and attend to what's happening. So I think that portal could also, you know, be very useful in getting people together. उसके बाद हम सारे केस फैसले नहीं कर सकते. 2.2 million cases cannot be decided. Please remember that. It's not possible with the current system. So हमें please move करना है towards ADR. It has to be so. We have to move towards mediation. ये नहीं हो सकते फैसले सारे अदालत में बैठ के. मीडिएशन जरूरी नहीं है जज का है, मीडिएशन आपका पोर्टल भी कर सकता है. मीडिएशन आपकी ये वकील ऑनलाइन को आप मीडिएशन ऑनलाइन कर दें तो ये भी तो हो सकता है ना. अच्छे क्रेडिबल वकील साहब बैठे हैं, लोगों की सुलह कर रहे हैं, इससे अच्छा और वैसे क्या सेटिस्फैक्शन हो सकती है कि लोगों के मसले हल हो जाए. So think of this also. It could be a private sector mediation also. We've tried that in the court as a court annexed mediation, which we're working on. But think of technology. लोगों के मसाइल हल करें टेक्नोलॉजी से. कैसे कर सकते हैं? That is our challenge, which I leave to you. और आप इसको सोचें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं और क्या चीजें ला सकते हैं. उसके अलावा प्रिज्म की बात हुई है, बिल्कुल सही बात है. हमें टेक्नोलॉजी से we do not. Video linking is the biggest thing that's happened to the system, as I think. Supreme Court ने video link शुरू किया है. I'm sure the high courts are also doing it. We need to take it down to the district level. आप घर बैठे जहाँ भी बैठे आप आर्ग्यू कर सकते हैं. नो एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट उधर भी खत्म हो जाता है. If you have this video linking system, video conferencing system across the board, बहुत जरूरी है. और यही आपको लाने की जरूरत ही नहीं है कि उसको प्रिजन से वो उधर ही बैठा रहे, वो उधर पेश हो जाए वीडियो लिंकिंग पे आपके साथ. उधर लाना ले जाना है. बिल्कुल सही कह रहे थे जो प्रिजन से आए हुए थे कि लाना ले जाना केस नहीं होता है, एडजर्नमेंट हो जाती है. वीडियो लिंकिंग नीड्स टू गेट मोर डीप इनटू आवर सिस्टम एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डू दैट. सो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी जो मैं चाहता हूं कि आप अपने सिस्टम में प्लीज लाएं और टेक्नोलॉजी के तहत कोर्ट हाउस को ठीक करें. जो अभी चीजें हमने सारी देखी हैं, जिस तरह मैंने कहा है, वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग, बट मेरी स्टोरी में वो एपेटाइजर्स का दर्जा रखती हैं. मेन कोर्स पे आप नहीं आए. मेन कोर्स पे चलेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन मेन कोर्स जो है ना वो उसको डील करें. मेन कोर्स कोर्ट हाउस है, लिटिगेशन है. और आई एंड विद द वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर, जूलियस सीजर, माय फेवरेट लाइंस को जरा सुन लें. देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मेन व्हिच टेकन एट द फ्लड leads on to fortune. Omitted all the voyage of their life is bound in shallows and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves or lose our ventures. Go for it. Thank you. Mr. Justice Rasooli Shah, I think I speak for everybody when I say that your message resonates with us all. And once again, you've left us enraptured by the clear and clarion call. And what we always like about your addresses is that the solutions you posit give us so much more food for thought. खाने की बात आई है, मैं माजरत करता हूँ. पिछली बार भी जब आपने एड्रेस किया था सिंध हाई कोर्ट बार को, so the meal had started, but I can promise you अब तक खाना लगा नहीं है. So kindly join us for dinner. Thank you all for coming and joining us. Assalamu alaikum.
تو جج صاحب کا بھی کریں نا جب of course, he's right. السلام علیکم. ہم واپس آ گئے ہیں آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ. سر بہت زیادہ شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر یہ ہمارا دوسرا انوگرل ایونٹ تھا. پہلا لاہور میں ہوا, اس میں ہم نے کھانا پہلے دیا, ایونٹ بعد میں ہوا. آج الٹا تجربہ ہوا ہے, اور میرے خیال میں اسلام آباد میں ہم لاہور کی روایت کو برقرار رکھیں تو بہتر ہوگا. کیونکہ لوگ چلے گئے, آپ کا خیال تھا؟ نہیں سر, لوگ نہیں گئے لیکن ہم رکے ہیں. نہیں اچھا ہے, مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹائل لیتے ہیں, لیکن انتظار کرنا چاہیے جب تک ختم نہ ہو جائے سارا کچھ. بالکل ٹھیک. ایسے ہم ادھر بہت زیادہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے لیے کیا وکلا تیار ہیں یا نہیں ہے اس انٹیگریشن کے لیے, لیکن سر آپ کے خیال میں کیا ججز تیار ہیں؟ میرے خیال ججز تیار ہیں جی. جس طرح پہلے میرے جج صاحب نے بھی کہا اور ہم لوگوں نے بھی ایئر کی یہ بات کہ ذرا سا کنونشنل سسٹم ہے ہمارا, بڑا کنزرویٹو ماحول ہے جس میں دیر لگتی ہے تھوڑی سی. دوسرا یہ ہے کہ ینگ ججز آ رہے ہیں جو اس ساری چیز سے واقف ہیں, اور وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ایفیشینٹ ہوں, اسمارٹ ہوں, ان کی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور وکلا حضرات کی بھی ہوتی ہے. ایک پرانی جنریشن ہے جو اتنا ایزی فیل نہیں کرتے چیزیں چلانے سے, جس طرح آپ بھی فیل کرتے ہوں گے, گھر میں بھی ہمارے ہیں بزرگ جو اتنا ایزی ٹیکنالوجی پہ نہیں آتے. تو وہ اتنا سا صرف ایک ہے جو میرے اکراس دا سیکٹرز, باقی سیکٹرز میں یہ پرابلم ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ, اور ججز بالکل دے آر اوپن ٹو دس آئیڈیا پرووائڈیڈ وی گیٹ گڈ آئیڈیاز اور نئی چیزیں. ہم نے بیٹھ کے تو سافٹ ویئر نہیں بنانا, لیکن اگر ہمارے ساتھ پرائیویٹ پارٹنر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو یا اور لوگ آئیں اور ہم سے بات کریں اور نئی آئیڈیاز لے کے آئیں تو وائی ناٹ. سر ویسے تو یہ بالکل غلط ہے, لیکن بہرحال یہ پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز سائل کے حق میں ہے تو یقیناً وکلا کے خلاف ہوگی, یا وکلا کے حق میں ہے تو سائل کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس پرسیپشن سے کیسے جان چھڑوایا؟ نہیں, وہ دیکھیں پہلے میڈیشن میں اس طرح کی کوئی بات آئی تھی کہ میڈیشن جب ہم نے کی تو وکلا حضرات نے کہا کہ پھر ہمیں تو اب فارغ کر دیں گے کیونکہ وہ خود جا کے میڈیشن کر لیں گے, یا میڈیشن ہم جانا نہیں چاہتے, ہم مقدمے لڑنا چاہتے ہیں, ہمیں اس میں فیسیں زیادہ ملتی. پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس میں بھی فیس لے سکتے ہیں, اور آپ اگر ایک کیس آپ کا میڈیشن میں 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے تو آپ اگلا کیس میڈیشن میں لے لیں. تو یہ بات پھر اکنامک ماڈل ان کو سمجھ آ گیا, اور آئی تھنک لاہور میں تو بڑا سکسیزفل چلا ہے میڈیشن کا. اس وجہ سے دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے کمیونیکیشن میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے بیفور یو لانچ اینی آئیڈیا. بیکاز ایک آئیڈیا آپ اور میں اس کمرے میں بیٹھ کے بناتے ہیں تو اس کو نہیں پتہ, از ناٹ پریوی ٹو دس آئیڈیا. تو ایک دم جا کے آپ اناؤنس کر دیں تو وہ سمجھ نہیں پاتا. تو آئی تھنک any new idea, any change has to go slowly by taking everybody along. سر آخری سوال, آپ کے خیال میں وکلا زیادہ خوش لباس ہوتے ہیں یا ججز؟ دیکھیے میں تو جج ہوں تو میں ججز کا ہی کہوں گا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. اب ہم ہیں جسٹس جنید غفیری صاحب کے ساتھ, اور سر تھینک یو سو مچ, آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. اور وہ آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی ججز کی اور وکلا کی خوش لباسی پہ, تو یہ بھی ایک ضرب المثل ہے کہ اگر کوئی وکیل شلوار قمیض پہننا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وزن بڑھ رہا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ وکلا خوش لباس ہیں کیونکہ بعد میں جج وہی بن رہے ہیں. they are well dressed and they are becoming judges as well. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر, آپ کے خیال میں کیا مطلب, ظاہر ہے ان دا لانگ رن تو ہمیشہ ٹیک کے فائدے ہی ہوں گے, لیکن امیجیٹلی
क्या बुरे असरात हैं जो पड़ सकते हैं और उनको काउंटर करने का क्या तरीका है? नहीं, as सच बुरे असरात तो कोई ऐसे नज़र नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो कोई अगर हम इसमें कोई नेगेटिव इसमें देखना चाहें तो कुछ लोग कर सकते हैं, सिस्टम में डिस्टॉर्शन के, हैकिंग के हो सकते हैं असरात। अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल। इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल। इसमें ना किसी की कोई ये बात आ रही है कि किसी की जॉब चली जाएगी, जब किसी का काम कम हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इट्स बेनिफिशियल टू ऑल। बिल्कुल, लेकिन Must सर be done. बिल्कुल वो होता है ना कि जब भी हम बात करते हैं इसकी डेमोक्रेटाइजेशन की, कि वो एक खास किस्म की एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, सबके हाथ में है, तो वो उसमें कुछ तो ऐसे लोग जरूर होंगे जिनको ये महसूस होगा, चाहे वो गलती हो, कि शायद हमारे रोजगार इससे नहीं, ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। है। देखें, ये हम जो है ना वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आजकल स्मार्टफोन की यूजेज जो है वो इतनी इजीली अवेलेबल है। मैंने देखा है 80-80 साल के लोगों को फेसबुक चलाते हुए। तो अगर 70 साल का लॉयर है और अगर उसको किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो जब फेसबुक कर सकता है, इंस्टाग्राम कर सकता है, तो हाई कोर्ट की चीज़ों को भी, अपने क्लाइंट की चीज़ों को भी कर सकता है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू है। अगर कोई ये कहे तो फिर वो ये है कि वो जस्ट डोंट वांट टू डू इट। बिल्कुल, दैट्स व्हाट माय आइडिया इज। अच्छा सर, ये अब हम देख रहे हैं कि वुकला के इवेंट्स में टेक इन्वॉल्व हो गई है, बड़ा ग्लैमर आ गया है, तो यहाँ पर तो जब भी कुछ अच्छी कोई महफिल का इनकाद हो तो एकदम से ये शक पड़ जाता है कि कम्युनिटी कहीं बेरा रवि का शिकार तो नहीं हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए आए हैं, तो आई डोंट थिंक ऑफ दैट साइड प्लीज। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर। सेल को भी ले जाओ। इसको बंद कर जाओ। हाँ